place in the big final is up for grabs. It's Karachi Whites versus Rawalpindi taking on in the second semi-final. Well, both the teams will be looking to be at their very best. Big stars in both the teams. But like I said, the price is pretty big. Tomorrow night's final is on the line, and Rawalpindi and Karachi will be looking to get that place. Welcome to the National Bank Stadium. We had a wonderful game earlier, a huge upset. The favorite team, Peshawar, lost out to Abbottabad. And now these two teams, Karachi and Rawalpindi, are vying for that place in the final to go join them for tomorrow night's big final. Without further ado, let me introduce my guest. It's Pakistan International, Marina, alongside me. A very good evening, Marina. Thank you, Faisal. Huge upset earlier on. How did you see that? Well, I wasn't shocked, actually. I thought before toss that the body language was different. Abbottabad was way relaxed and confident. There was a lot of pressure on Peshawar. And I think it was just one of the days that nothing went in favor of Peshawar. And it's not the first time that we've seen a team that is unbeaten through and through. Yeah. And the first knockout game, and they're out of the tournament. Yeah, you have to give credit to Abbottabad. Obviously, I think they kept their A games for this clash. The fast bowlers, I think that was the difference. And again, the pressure to post a big total. Peshawar looked very clueless when they came out to bat, and Abbottabad capitalized the opportunities they got. And looking ahead to this game, Rawalpindi, they finished fourth in the table, and they have been struggling lately. Two big defeats on the back of this semi-final. The bowling has really struggled. How do you see them getting up for this big battle? I think they need to forget everything that has ever happened till today. They've got another chance. They've got bowlers and as well as batters who can stand up to the occasion. All they need to do is just have clarity and back themselves. They got decent spinners. Yes, Jandad is bowling well. I think in terms of batting, they've got Umar Amin, Nasir Nawaz. These are the people who need to stand up now. It's now or never. Yeah, and they surely are missing Shadab, who got injured halfway through the tournament, not available tonight. How is it affecting them? Immensely. I think for Umar Amin, things get more difficult because you need someone who has played at the international level, who has captained franchises, and obviously they add an extra bit of thinking when you talk about strategically planning out against the other teams, and obviously it's semi-final, so you need a lot of help. I think Umar Amin needs to bring the best captaincy out of him. And their opponents, Karachi, they're on a high. They're coming in with momentum. They've got so many performers in their 11, and they're on a high. So this is contrasting spirits and morals between the two teams. I think they will be very content the way the middle order have started to click when we talk about Umair bin Yusuf. Danish, yesterday we saw that he did work with bowling as well as the batting. That was the missing link. But I think, again, when it comes to power play, they are still struggling a little bit. So if they can get that sorted, the bowling is not to worry about. But the batting, the momentum that they can take deeper, I think the power play, that's where they need to fix things. Okay, and you talk about their batting. We'll talk about it later in detail as well with the likes of Ahmad Alam and stuff. But their bowling has been impressive. Experienced Sohail Khan, but one guy that stood out and no one had heard about him, that's Arif Yaqub. What an amazing find he is. Oh, he's amazing. He's brilliant when it comes to leg spinners, because all we talk about, especially in shorter format, is that how accurate you can be. With all those variations that he has, I think the length he balls, it's quite nagging, and it creates so many problems off these surfaces which are now actually getting slower and are aiding spinners. I think he is one to watch, and he can be the trump card for Karachi. And it's always intriguing to talk to someone who's emerged right from the bottom, and here he is talking with us. It'll be interesting to see what Arif Yaqub has to say. Let's hear that. I've got the joint leading wicket taker of this entire national T20 here with me from the team Karachi, Arif Yaqub. Arif, आप मुझे बताएं कि आपने इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट्स भी लिए हैं और आप अपनी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी आपने प्ले की है. आपकी बॉल के साथ परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतरीन रह चुकी है, तो अपनी राय थोड़ी सी दें उसके बारे में. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैं फ़र्स्ट टाइम खेला हूँ, लेकिन मेरी खुशनसीबी ये है कि मैं अच्छे एक्सपीरियंस लड़कों के साथ खेला हूँ, प्लेयरों के साथ खेला हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे लिए आसानी ये रहा कि ड्रेसिंग रूम में मुझे थोड़ा सा काफ़ी कॉन्फिडेंस देते रहे, तो इसकी वजह से मैं काफ़ी इजी फील किया इसमें खेलते हुए.
बिल्कुल, आपने बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बॉल के साथ दी है। एक मैच में आपने 4 विकेट्स भी लिए हैं, तो अब ऑब्वियसली नॉकआउट स्टेज है, बड़ा मैच है, सेमीफाइनल मैच है, तो उसमें आपकी अप्रोच आज क्या होगी? बस बेस्ट करने की कोशिश होगी कि टीम को मेरी वजह से कोई फतवात अच्छे मिले और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह मैं। अच्छा, तो थोड़ा सा बताएं आपका एक्सपीरियंस इस पूरे नेशनल T20 टूर्नामेंट में सो फार कैसा रह चुका है? पूरे टूर्नामेंट में मैंने ये चीज़ नोट किया, यहाँ पे सिर्फ प्रेशर गेम है। अगर आपने प्रेशर हैंडल कर लिया उसके बाद फिर थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाता है। तो फिर जब प्रेशर मैंने हैंडल किया तो फिर मैंने एंजॉय किया। तो आपको किसी ने मशवरा दिया था कि प्रेशर कैसे हैंडल करें, आप उसको कैसे हैंडल तो हमारे करें? पास माशाल्लाह से हमारी पूरी टीम में स्टार प्लेयर हैं, तो उन लोगों ने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया है। हमारे कोच थे और मैनेजमेंट थे, सब ने माशाल्लाह से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया, इसके लिए मुझे ईजी हुआ बहुत। चलिए, वेरी वेल बोथ सो फार एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुडे। थैंक यू। Amazing story, Marina, and the guy talks with sense. Oh, definitely. It's really good to hear that he picked up the right thing. It's a pressure game. Obviously, it's going to be pressure, but how you handle it will determine how you perform, and he's exactly done it. And I love the way he said that once I started to absorb the pressure, I enjoyed it. Yes. Well, talking about pressure and talking about doing the right thing, what would be the right thing at the coin toss? Let's join Sikandar, who was in the middle just a while ago. Welcome to the toss. It's semi-final 2, and it's like deja vu, as if we were here with the same guys last night. And it is all about action. Is it going to be the same result? Only time will tell. I have Rawalpindi captain Umar Amin, next to him Asad Shafiq, Karachi Whites captain, and Mr. Ali Naqvi, the match referee. Asad, you have the coin. Tails. Tails is the call. He's gone far away. And it is tails. Well, टॉस ऑन योर साइड। सबसे पहले उमर करेंगे क्या? बैटिंग करेंगे। बैटिंग करेंगे। कल बात हुई थी पोस्ट मैच में भी, टर्न अराउंड टाइम कम होता है, लेकिन अब जब नॉकआउट स्टेज में आ जाए तो पुरानी सारी चीजें आई थिंक यू पुट इट बिहाइंड। एग्जैक्टली, न्यू डे, न्यू पिच, न्यू कंडीशंस, अगेन नए कॉम्बिनेशन के साथ भी जा रहे हैं, अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जा रहे हैं, तो आई थिंक इट शुड बी अ गुड मैच। ये पिच कल के मुकाबले में ज़रा डिफरेंट है और हमने पिछले मैच में भी देखा किस तरह से यहाँ पे चेज भी हुआ, तो पहले बैटिंग में ट्रिकी है क्या? टोटल जो है वो सेफ होगा? वेल, एटलीस्ट 170 हम लोग टारगेट करेंगे, 170 करना चाहिए हमें। पिछले मैच में काफ़ी 4 चेंजेस थे, आज चेंजेस हैं? जी, आज भी हमारे 3 चेंजेस हैं। उमैर की जगह रज़ा आए हैं विकेट कीपर, अवैस अनवर की जगह काशिफ अली वापस आए हैं, और कोई बात नहीं, बाकी पेपर में। गुड लक टू यू। थैंक यू। असद, टॉस नहीं गया आपकी तरफ, लेकिन कल के मैच के साथ कॉन्फिडेंस होगा टीम में चेस करने के लिए? ओके। जी जी बिल्कुल, क्योंकि इस टूर्नामेंट में ऐसे मैचेस हुए हैं कि हमने अराउंड 185 भी चेस किया है, तो वी आर कंफर्टेबल इन बोथ बैटिंग फर्स्ट और बॉलिंग फर्स्ट। कितना टफ है किसी भी टीम के लिए? आप अकेले नहीं है, ओवरनाइट कल रात को एक टफ मैच खेल के वापस आना और फिर नॉकआउट में। जी ऑब्वियसली टफ तो है, क्योंकि बैक टू बैक मैचेस खेल रहे हैं, स्पेशली फास्ट बॉलर्स के लिए हैं, बहुत टफ है, लेकिन दैट्स व्हाट वी डू एज अ प्रोफेशनल, कि हमें सब चीज़ें साइड पे रखनी पड़ेंगी, स्पेशली आज के दिन में जो कि नॉकआउट गेम है, सेमीफाइनल है, तो ठीक है, मुश्किल है, लेकिन वी हैव टू गिव 100% टुडे। क्या चेंजेस लाए टीम? हम सिर्फ एक चेंज है, गुलाम मुदस्सिर का शाहनवाज दानी खेल रहे हैं। इनका प्लान है 170, एक अच्छा ऐसा सेफ जोन होगा। आपको क्या लगता है कि कितना कम से कम ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन कितना रीजनेबली आप कहते हैं कि चेजेबल है यहाँ? देखें, ऑब्वियसली हम पहले ट्राई करेंगे कि हमारा पावर प्ले अच्छा जाए, क्योंकि अगर वहाँ पे हमें जल्दी विकेट्स मिलती हैं तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है मैच में, तो हम कोशिश करेंगे अराउंड 140 रोकने की और यहाँ पे चेस करने की। चलिए, गुड लक टू यू। थैंक यू। तो सेंटर से न्यूज़ ये है कि रावलपिंडी ने टॉस जीता है सेमीफाइनल 2 में, और उन्होंने कहा है कि वो पहले बैटिंग करेंगे। Change of plan for Rawalpindi. Hopefully they will have a change of fortune. This is their playing 11, Marina. Well, when you look at the top 4, I think they have a lot of potential. Yasir Khan, Dishan Malik, obviously Haider Ali, big innings is much required. Umar Amin, Mubassir Khan, Mohammad Nawaz. I don't know why they're not clicking. They need more clarity. And in terms of, I think, pace bowler Jahan Dad has done well. Kashif joins him now. They've got Bilawal and the pacers as well. Seam is there, but they need spin as well. When you talk about Karachi, they are all sorted. Middle order is clicking with Azam Khan, the powerhouse. They've got Danish in form now, Umair bin Yusuf. Up front, yes, Khurram Manzoor, he needs to take responsibility with Ahmad Alam. But when you look at their bowling, that's where the trouble starts, because any opposition against this lineup, Sohail, now they've got Dhani back in, and obviously Arif Yaqub, the one to talk about. It's not going to be easy to score runs off them.
Well, it's a big game, all in readiness. Thank you very much, Marina, for your valuable input. Just about a wrap from downstairs here. Comms are ready. Everybody is getting into position for the start of this second semi-final. We hope it's going to be a great game. Let's head over to the comms. Over to you guys. Semi-final 2, and it's the time where you got to bring in your A game if you want to get to that final step. That's the final tomorrow. And who will meet Abbottabad? The next 3 hours will tell us. As we know that Rawalpindi won the toss, sigh of relief. They wanted to bat first straight away. No doubts in Omar Amin's mind. One change for Karachi Whites. As expected, Shahnawaz Dani comes back and leaving behind Ghulam Mudassir. And like yesterday, 4 changes were there in Rawalpindi. Today they made 3 changes and brought in their best. Another surprise, or maybe a good call. Haider Ali has been pushed up in the order to open and use the power play along with Yasir Khan. And here the opening pair along with me is Salman Butt. It's a good game for the two sides, keeping in mind that the pitch is different from yesterday. So this is one of those rare places where I open and I don't face the first ball. And coming back to the game, I think it's a decent call, and maybe the results could be different because Haider Ali has struggled against spinners, especially whenever he's come in, he's faced spinners. So at times he has looked out of sorts, and this power play against fast bowling just may be something that he needs to kick on. And on the other hand, Yasir Khan is already a centurion in this tournament, and his strike rate is very impressive, 147, and at an average of 38. If he can repeat that today, his side will be off to a flyer. Only thing is that yesterday Ghulam Mudassir left arm over bothered him a little bit. But Sohail Khan's swing, away swing, will surely test any batter. His in-swing has been testing batters in this tournament, and to face, I think it is Haider Ali. We shall know. It's Haider, the striker, and if Sohail Khan can swing the ball either in or away, might test both ways. So Haider Ali needs to be careful. He's chosen to bowl from that far and misfield. He's taken his eyes off the ball, and first runs for Rawalpindi. Anwar Ali there, rare misfield from him. He's always bowled and started from the pavilion end, Sohail Khan. He's seen something. Can't be the breeze, there's not any. He's not been that 100% since his calf injury. He's just been having some problem. Yesterday also, he's looking at his left leg boot. Oh, came in. Nicely done. Sharp in-swing, in the air end of the pitch, both. And this is what we were just mentioning, why he has been so good in this tournament up with the new ball, because he's swinging it. And both ways, that's a long in-swing. Something the batters are not easy with. Doesn't matter who you are with the bat in hand, if the ball is doing this much, you have to be careful. Yeah, this time he moves it away. He bowls those at will. Yeah, they say, there's a term when they say he's making the ball talk, and that is what he's showing us. Sohail Khan, this time, what a wonderful line and length and good carry today. Full marks to the groundsman. I think they had saved this pace and bounce for this time in the tournament. And both the head curators and all the ground staff, I think they've done a wonderful job to keep this pitch the way it has played today. Some extra bounce, some pace, and Sohail Khan will definitely enjoy that. Let's have a look at the pitch. You're talking about the pitch. This is pitch number 7.
you see the cracks are not as much visible as they were in the previous pitches. You could see the straw-colored, slow look of the pitch, but this one looks more whiter and has compact cracks. You can't see those lines very evident on this pitch, which tells you that this is more compact, more firm, and as a result, you can see the carry and the bounce. Oh, wow, that is a good shout. Has it got some bat onto it? That could be the only reason to save Yasir. Well, that was some shout. Ball swinging in, and from the first look, it was as if it had hit the back leg. And if that was the case, I don't know how this batter was saved. Oh, well, that surely would have gone for a review had the review been available. That's what they refer to as a howler. These test bowlers, when they're on song, they are different. You can't match the quality of a test specialist. Now that's created a doubt because Yasir has received 2 balls have come in, and then from one non-striker, he's seen one going out to Haider. Over completed, 4 for no loss. Sohail Khan made the ball talk in the first over, and here we go. See that first one was just a touch short, and then came the big in swinger. No clue to the batter, and then going away. Beautifully bowled and well left, and once again shot, and then once again inside, and lucky batter, he was saved over there. They're not sure, and full marks to Sohail Khan, exhibiting his skill to the fullest. Yeah, he saw all 6 of them on the big screen. He will offer pace, and probably the quickest of the lot. He's the only change Karachi Whites have made in this semi-final, leaving out Ghulam Mudassir. 50th game for him, 4 for 5 is best. And he comes right arm over. So for Sohail Khan's and Karachi's sake, if Dhani can keep this over quiet, with the ball not going in the outfield and it's swinging, Sohail maybe is effective in the next one. Effective in a sense that he takes a wicket or a 2, because the whole point of bowling well is picking up wickets, and that's the only way you can stop teams in a T20 game. And he might be feeling not very fortunate with that decision not going his way. It's gone high in the air. Should be a chance. There is a chance, and it's taken. Straight away, Shahnawaz Dhani strikes, and Ahmad takes the catch, and it's the end of Haider Ali. Yeah, once again, from wide outside the off stump. Why not play a cut or a punch on this stroke on the offside, trying to drag it towards mid-wicket. He goes again. So batting up or down makes no difference with Haider Ali. Once again, he fails and gives Pindi a shock. Front foot check, and it's perfect. So the first wicket for Karachi, and a good one. That was a good running catch because it was high, and Ahmad Alam, the youngster, was running backwards, and they're never easy when you run backwards. So great start for Karachi. Pindi lose their first wicket for 5. Zishan Malik comes out at number 3. The change, he was missing yesterday in the 11. They rested him because
already Pindi had qualified. It's only about which number they finish on. So this 100 that you see in his record is scored in this tournament a few games back. So he should be in reasonable touch, and he will be required to play well in order for Pindi to have a good start, because they've already lost 1 wicket, and that too of Hyder Ali, whom they sent to open the innings in place of Zishan, who himself is an opener, but that move didn't fire. So now it's up to Zishan and Yasser. Oh, just poking at it very tentatively, pushing that bat away from the body. You see, Skandar, this technique of a batter against a new ball is always tested when it is doing a bit. When it's doing nothing, every technique looks all right. Now you see, if the feet going nowhere, they are together, neither forward, neither back. You cannot respond to any swing, whether in or out, if your feet don't move. So this is something which we have seen in abundance in this tournament, where the feet just stay together. He's getting some zip off the surface as well. Look at where Azam Khan collects the ball. So I wonder the neighbours make so much of a difference, because there's Australian soil just next to the pitches, and the change of the neighbours has brought bounce in this pitch as well. And we have still not seen a game on the Australian soil, but this one has bounced like we are playing in Australia. So good pace, good bounce once again, and a lot to thank to the groundsmen for making such a pitch where bowlers can create a difference. Let's get back to Hyder Ali's wicket. It's outside the off stump, shorter ball, as you said. He's trying to pull it and drag it onto the onside. Yes, Hyder Ali obviously in no position to play that stroke. Look at the feet. Any stroke in cricket, you need the feet to create a position where you are in good balance and can play the shot according to your will. But his feet were just stand and deliver sort of a thing, and that often brings the downfall of batters. Once again, this one is high again, and it is Captain Asad Shafiq under it. And he spills it. Wow, that was an easy chance, and let go by Asad Shafiq, and the bowler will be dejected. He created this opportunity, and the captain not able to take that. 2 overs gone, 6 for 1. He was in a good position, right underneath it. He didn't have to move a lot, but it went very, very high. Second, third attempt maybe. Stuck in, off the chest, and then down. You always say for high catches, get underneath as quick as possible, stable yourself, and he was there. Is it the nerves of the semi-final, is it? Well, ideally, he shouldn't have gone down to the ground himself with his knees. That is where second chances become difficult. So if you keep standing with a broad base, you have a second or a third chance. But if you sit down in the process, the second and the third chances become difficult. So if Sohail Khan can bowl it swinging and full, he will have a good chance of picking up another wicket. And they should have had 2. But unfortunate, Team Karachi and Dhani would feel. Asad Shafiq normally is a very safe fielder, but tonight he has let, by his standard, an easy catch go by. Just look at it. As it comes down, Asad Shafiq's knees, look at him. He's collapsing to the ground, and that is what shouldn't be the case. Again swing, and again beaten. Both these faster men are bowling well. One hitting good lengths and the other one swinging it all around. And the batters, they don't have a clue at the moment. This front leg is far more underused in this tournament of all the opening batters. And this is something which needs to get them closer to the ball to execute the strokes that they are missing.
Wow. How did he get bat on that? Strike now. Recently announced his retirement and available for leagues. You know, Sikandar, anybody with the class of Sohail Khan, why he is important to any domestic system is not that he will play for the country again, but he will make those new ball facing batters skillful. With this kind of a skill, they will be facing somebody who's very highly skilled. Look at this, ball moving the other way this time. And as a batter, it's a stern test. So if youngsters face Sohail Khan with the new ball and then they go on to score a big score, mentally they grow. They grow as skillfully. And that is why their importance becomes of huge magnitude. Well-built, tall, fast bowler, putting in the effort. Yeah, better let that go. Wait for that swing to go away. Two things are consistent tonight. Swing from Sohail Khan and the bounce and carry to the keeper. It's wonderful to see. The whole vision of the cricket, the visuals become more attractive when the ball starts to do a bit and it also bounces. And when the keeper takes it to his waist height, look at that. In fact, above waist high. That is wonderful. We are seeing all this without a drop in. Change in field. Shahnawaz Dani was in a flying slip position rather than short third, and now they're putting in a proper fielder. Danish Aziz, well, good catcher, yes, 2 slips. Yeah, but then you see on third man it is Umair bin Yusuf, and in the covers it is Dhani. So this is strange captaincy once again. Another great over comes to an end. 1 run off it. 7 for 1 after 3. Without a doubt, these first 3 overs are the first 3 overs of the tournament. No matter that they've just taken 1 wicket, 1 catch has gone down, but the highest quality of swing bowling we have seen and good areas. Sohail Khan, exceptional tonight. And even Dhani bowled a very good first over. He was unlucky, he did not pick up a wicket. It's so simple. If Sohail Khan is giving just 1 over, then the batters will try to score against him, and that will create chances. And we saw that. Both shots were trying to clear that inner field. One was caught, one was dropped. Will they try against him again? Because it's just 1 run that came from Sohail's over. Back to 1 slip. Zishan on strike. And that's down the leg side. Beats everybody for a boundary. Well, that shouldn't be the case when Dhani or any player who has represented Pakistan bowling with such good lines and length, and suddenly he fires one down the leg side and no chance for the keeper even. And that is a relief for the batting side. 5 runs and he will have to re-bowl it again. You just get a feeling he was trying to target Zishan's rib cage, and the radar has gone wrong, and it pitches and also further deviates. I would agree to that if he had that fielder on the fine leg, stand in 45 waiting for the catch and then going for the ribs is understood, but not without informing anyone. This is well bowled. Short ball coming back in, and this bounce is definitely testing the batters. Look at that. The batter has been hit on his top hand, bottom hand actually, because the ball has climbed onto him, and we haven't seen this kind of bounce in any of the previous days, any of the previous pitches. Just look at this extra bounce. Hit on the hand, and that hurts. And it's from that almost good length. It's just come up.
Whip of the wrist. Right now, Rawalpindi is just living dangerously. They are not trying any boundaries. They're trying to survive the swing. And they know it, that it's just around the power play's time. Once it goes away, then things will become different. It's more like we were playing one days in the Rawalpindi few days back, and we saw this kind of swing and bounce and pace. And Rawalpindi will be thinking that they were traveling to Karachi, but they've got Rawalpindi here. Ball is swinging. Two good bowlers operating. One swinging the ball, one getting the extra bounce. Trouble for the batters. Let's talk about during the break, the gap between the two games. You were walking, you and I were walking around the ground, and we did feel that the surface of the grass was a bit moist. Not dew, but yes, a little bit. If it comes down, winning the toss and batting first might just backfire. And did we see that much swing? Of course, different kind of bowlers. But when Peshawar and Abbottabad were batting. Sikandar, if we had the luxury, look at this extra bounce. If we had the luxury to make this screen into two and show Sohail Khan on one side and Imran Khan Senior on the other side, the very visible difference would be the length. Sohail Khan is pitching the ball up, allowing it to swing. Whereas Imran Khan Jr. bowling to Fakhar Zaman did not even bowl one ball up for drive or yorker, not allowing the ball to swing. And under light, definitely wide ball does a bit more. But Imran Khan Senior never allowed the ball to swing. He was just pitching constantly back of a length, and from there, the ball doesn't do much. Spectators and children, it's good to see families coming out, supporting their national cricketers over here, watching good contests between the teams. And also, it's that time of the year when the nights get very pleasant. Yeah, the shot of desperation, really. Nothing else. He's dropped once, and he's having a go again. Well, that doesn't show much mental strength. That is a give-up kind of a stroke. That is my way or highway. You can't play cricket like this if you're an opener. Just watch the ball. Just get through these good overs. They won't bowl many overs. You can only bowl 4 in this. But if you lose your wicket, then further trouble for the Pindi side. Again, bounce and carry. Would you bring Sohail Khan for another one? I would, but I don't know whether Asif Shafiq would. Because if I was there, I'll have probably a test match like field for Sohail Khan, because I need wickets over here. And you just cannot, if it's doing so much, then why not Sohail Khan with one more over? And especially when we have seen the ground and it's a bit moist, who knows, it might increase and then nothing happens with the old ball. Yeah, he wanted to do that. He'll get a 6 and probably will ease a little bit as a batter. Well, this one was in his zone, and rightly so, he went after it, just helping it over his shoulder for a huge 6. Zishan using the pace of Dhani, but this time the direction wasn't ideal and Dhani paid for it. Look at this ball. And the batter was already opening up, looking for this length, and that's what Dhani provided, and Zishan would have said thank you very much. You could sense that Zishan is looking for that length, the way he was opening up. But Dhani did not realize what the batter was getting ready for. That's better. Just squeezing any room for the batter to free his arms. So 5 wides in this over and a 6 makes it 11.
And had you taken away those 5 wides, it would have been 13 runs so far at the end of 4 overs. And also the catch that has been dropped. So Pindi have got lucky breaks. Now it's up to these two batters to get through this initial period and build up a partnership. Driven straight to the captain. And, oh, he was going for a single. 18 for 1. हफ्ते की शाम जहां पर टेम्परेचर अभी भी हाई टीन्स में है, लेकिन मैच में गर्मा गर्मी होना बाकी है। कैच ड्रॉप हुआ है असद शफीक से और उसके बाद ज़िशान मलिक जो कि ऑलरेडी सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में फैसलाबाद के खिलाफ, वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। जब तक मौजूद रहेंगे तब तक भारी पड़ेगा कराची और असद शफीक पे। वो एक बाउंड्री लगी है अब तक रावलपिंडी के इस इनिंग्स में, वो मैक्सिमम है जो कि ज़िशान मलिक नहीं लगाया। और दूसरी तरफ से आ गए हैं कल रफ पैच का भरपूर फायदा उठाने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर दानिश अजीज, जिन्होंने एक नई जान हासिल की। ऊंचा खेल दिया, जोरदार अंदाज की आवाज और नतीजा 6 रन। बन्नू के यासिर का बैट, पिंडे के लिए पहला छक्का। दानिश अजीज को कोई खास वेलकम नहीं किया है यासिर ने टैकिंग मोड में, और ये देखिए स्टॉक स्वीप कनेक्ट किया अच्छा। जो पहले 4 ओवर गुजरे बहुत ही शानदार कराची ने बॉलिंग की है अब तक। जो 35 हैदर अली को भेज के पिंडी ने खेला था उसको नलिफाई किया है कराची ने। और ज़िशान मलिक जो कि उनकी इनकंसिस्टेंसी है, उनकी लैक ऑफ टेक्निक की वजह से वो भी एक्सपोज हो गई थी। अगर कप्तान जो है वो कैच पकड़ लेते, देखना ये कि वो कितना महंगा पड़ने वाला है कराची को। अब तक सुहेल खान और शाहनवाज अली दहानी ने लाजवाब बॉलिंग की है। पेस, स्विंग, इनवर्ड, आउटवर्ड मूवमेंट सब डिस्प्ले पेश किया। शाहनवाज अली दहानी ने छक्का कंसीड भी किया है, लेकिन इसको दानिश अजीज कितना बैकअप कर पाएंगे इस सिक्सर के बाद। स्टैंड के अंदर फेंकी थी, लगता है कि ताला खोलने के लिए वहां पर चाबी वाले को ढूंढ के लाना पड़ा है और अब गेंद वापस आ गई है। लेकिन ये तातुल यासिर खान को अपने हौसले दोबारा से इकट्ठे करने का मौका देगा। टूर्नामेंट इनका लाजवाब गुजरा है, कल की शाम ये नाकाम रहे थे, आज उसका अब तक अजाला कर रहे हैं, मुश्किल वक्त गुजारा है। ये तमाम रावलपिंडी के बैटर जो ऊपर तले आते हैं उमर अमीन तक, वो ऑन साइड के बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर और हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर रिलाई करने वाले हैं। लेकिन आज अपने गेम को उनको मुख्तलिफ अंदाज से ढालना पड़ा है। जो शानदार स्विंग थी उसको उन्होंने एहतराम के साथ खेला है। और चले जाएंगे, कश्तियां जला दी थी यासिर ने। दानिश ने छक्का कंसीड करने के एक गेंद के बाद अपना बदला पूरा किया। शानदार टर्न, बहुत आगे निकल गए थे खेलते खेलते। अल्फाज नहीं है मेरे पास बयान करने को इसको। पोजीशन आप देखिए 24 पे 1 विकेट आपकी गिरी हुई है। पावर प्ले जो है वो अच्छा नहीं आपका गया, जिम्मेदारी की जरूरत है। इन फॉर्म बैट्समैन है और ये शॉट सिलेक्शन जो है ये मेरी समझ से बाहर है। निकल के बाहर मारना चाहते थे और स्पिन हुआ बॉल, इजी स्टंपिंग और आजम। एंटी क्लाइमैक्स रावलपिंडी के लिए पहले से कमिट कर चुके थे इस गेंद के लिए। टर्न भी था और साथ साथ ये सरासर गलती भी। यासिर खान एक छक्के के मेहमान साबित हुए। 24 पे 2 रावलपिंडी। ज़िशान मलिक दूसरी जानिब अभी भी मौजूद हैं और रावलपिंडी को जिस अंदाज की कल की मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, अब तक ऑलमोस्ट ये डिटो सूरत हाल चल रही है। ये एक बड़ा गैम्बल लिया था दानिश को पावर प्ले के अंदर इंट्रोड्यूस करके, जो कि असद शफीक के हक में काम कर गया।
एक छक्का कंसीड किया जो कि क्वेश्चन मार्क डाल गया होगा सर शफीक की उस स्ट्रेटजी पे, लेकिन ये ऑन द कार्ड्स था। जिस अंदाज से स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अब लेफ्ट और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन, तजर्बाकार सबसे पुराने खिलाड़ी रावलपिंडी के कप्तान उमर अमीन आ गए हैं बैटिंग करने के लिए। 149 मैचेस, 1 कम 150, 22 50s बना रखी हैं, स्ट्राइक रेट भी बेहतर। सुहेल खान का अगर आप ओपनिंग स्पेल देखें, 12 बॉलें उन्होंने कराई, 2 ओवर, एक बॉल भी ऐसी नहीं थी जो स्विंग न हुई है, इन या आउट। मुझे लग रहा था कि शायद उनको एक ओवर और दे देना चाहिए था, लेकिन दानिश अजीज को लाने का उनका फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ इस गैर जिम्मेदाराना शॉट की वजह से। उमर अमीन हल्के फुल्के हैं, क्रीज का भी पूरा इस्तेमाल करते हैं और अब तक उन्होंने इस बात का इंदिया भी दिया है कि वो अपने टारगेट को रिवाइज कर चुके होंगे। 170 बने और आसानी के साथ चेज किए एबटाबाद के फ़खर जमान ने, लेकिन जितना स्विंग कराची के पास मौजूद है उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्प्ले पेश करना तो पड़ेगा, लेकिन उससे पहले वो टारगेट शायद अब 150 को अपने जहन से निकाल चुके हों। एक रिस्पेक्टेबल टोटल देने के लिए सफ़र जारी रखना पड़ेगा। दानिश का पहला ओवर छक्के के बाद रिमार्केबल कमबैक। कामयाब ओवर मुकम्मल, 25 पे 2। कई बार टेक्निक पर हम बात कर चुके हैं, कितना अहम है टेक्निक का करेक्ट होना, स्पेशली टॉप ऑर्डर के लिए। 4 डे क्रिकेट खेलने की अहमियत इसीलिए बार बार दोहराई जाती है कि वहाँ पे ये टेक्निक्स डेवलप होती हैं, और जब इस तरह के शुरू के ओवर हो जाएं 4 और 5, जहाँ पे बॉल स्विंग हो रहा हो, तकरीबन तमाम बॉलें जो ओपनिंग बॉलर्स ने की हैं, तमाम बॉलें स्विंग हुई हैं, तो इस तरह से एक्सपोज होती है टेक्निक। बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी ओपनिंग बैटर्स के कि किस तरह से खेलना चाहिए, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए उस पर। मेरा ख्याल से इस तरह की बॉलिंग अगर हो रही हो, बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। T20 मैच में 2 स्लिप्स लगाई हुई थी एक वक्त में, कप्तानी की भी तारीफ करनी पड़ेगी असद शफीक के, लेकिन बहुत ही मायूस कुन बैटिंग अब तक रावलपिंडी की। अनवर अली मुख्तसर रनअप के साथ गेंद करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इनका तजुर्बा भी 200 तक पहुंच रहा है। 8.5 की इकॉनमी के साथ उन्होंने बॉलिंग की। अनवर अली 2014 बमुकाबला अनवर अली 2023, एक्सपीरियंस इस बीच में तकरीबन 200 T20s का, लेकिन इसके साथ साथ बेशुमार मैचेस का अपनी सिंध, कराची और रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए खेलते आए हैं, और इन्होंने एक क्लियर स्ट्रेटजी के तहत अपने रनअप को कम किया है, जो कि पिछले 3 मैचेस से मंजर आम पर आए। लेकिन वो पेस ना तो ऑफर करते हैं बैटर को और ना विकेट टू विकेट बॉलिंग हमेशा से अच्छी किया करते थे, लेकिन लंबे रनअप के साथ पेस लामहला ज़्यादा होता था। 5 यार्ड शायद कम तो हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खुल के खेलने का वो मौका नहीं दिया। पावर प्ले का आखिरी ओवर है। उमर अमीन ने आके क्या बात किया है, क्या जहन से निकाल चुके हैं पावर प्ले के रिस्ट्रिक्शंस को, या अभी भी कवर्स की जाने फ़ायदा उठाना चाहेंगे? इंटरेस्टिंग फील्ड है, दोनों फील्डर्स बाउंड्री लाइन पर स्क्वेयर को मिड विकेट की एक छक्का लगा चुके हैं ज़ीशान मलिक, लेकिन नतीजा वही, ज़ीशान भी बेताब है बड़ी शॉट्स के लिए। अनवर का एक्सपीरियंस बहुत साबित हुआ इनके लिए। फाइट करने को तैयार नहीं है बैट्समैन, जो आप रवैया उनका देख रहे हैं। पोजीशन आप देखिए टीम की क्या है, और एक्सपीरियंस देखें आप ज़ीशान का, और ये शॉट देखिए, मेल नहीं खाते आपस में। इस रन लेन बनाने की कोशिश है, शाहनवाज अली दहानी ने पलट के थ्रो की गिरते पड़ते, लेकिन ना तो ये विकेट्स पे लग सकी और शायद अपना रन भी मुकम्मल कर लेते। डेंजर एंड पे भागना था, लेकिन आगे आ चुके थे उमर अमीन। अनवर अली पेस जरूर कम हुई है, लेकिन एक्सपीरियंस उनका बहुत ज़्यादा। अनवर अली को देख के हमेशा अंडर 19 का वो फाइनल याद आता है हिंदुस्तान के खिलाफ, जब इन्होंने लंबी लंबी इंडिपर्स करके तमाम उनके टॉप ऑर्डर को तबाह और बर्बाद कर दिया था। बहुत ही शानदार उस वक्त स्विंग इंडिपर इनका हुआ करता था, लेकिन अब बैटिंग पे ज़्यादा तवज्जो और इम्पैक्ट वैसा ही है इनका अभी भी। लेकिन यस, 2 तजर्बेकार खिलाड़ियों का एक दूसरे से मुकाबला है। अनवर अली ने इस बात को तो प्रूव किया है कि वो अपने कम पेस के साथ भी उतने ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब तक जितने बॉलर्स को खेलना पड़ा है रावलपिंडी को, तमाम जुदा जुदा तरीके के हैं। शाहनवाज अली दहानी
और सुहेल में पेस तकरीबन शायद एक जितना हो, लेकिन मुकम्मल तौर पर मूवमेंट थी, स्विंग थी। दूसरी जाने बाउंस मिला शाहनवाज अली धानी को, टर्न मिला, गेंद करने के लिए आए थे दूसरे एंड से स्पिनर दानिश अजीज और अब अनवर अली, जो कि अपने इन लो एंड स्लो गेंदों के साथ मुतासर कर रहे हैं और पावर प्ले समझिए हाथ से निकल चुका रावलपिंडी के। एक बहुत बड़ी वजह खेल ये नज़र आती है कि अब क्लब क्रिकेट बहुत कम हो गई है। क्लब क्रिकेट के कम होने से ये है कि जब आप एक हफ्ते में 2 से 3 मैच नहीं खेलते, वो गेम अवेयरनेस जो क्लब क्रिकेट में एक ज़माने में हासिल हो जाया करती थी, वो यहाँ पे आके लोग सीखते हैं। जबकि ये जगह सीखने की नहीं है, बल्कि अपने शोकेस करने की है टैलेंट को। ऐसे कॉल लूपी स्लो वन, लेकिन जिशान मलिक के आमतौर पे पावर प्ले के अख्ताम पे कोई डिफरेंस क्रिएट कर देता है। क्या वो अब अपने एंकर्स को ड्रॉप कर चुके हैं? गार्ड लोअर करने का टाइम इनके पास है। मोहम्मद नवाज, मुबस्सिर, रज़ाल मुस्तफ़ा, वो इनकी बैटिंग लाइनअप है जो कि उतनी एक्शन पैक नहीं जितनी पेशावर, कराची या फिर कुछ ऐसी टीम्स के पास थी जो कि बाद में जाके भी सूरत को संभालते थे। एक और क्विक सिंगल, बल्कि पलट के दूसरे रन के लिए भी वापस आए हैं। स्लॉपी वर्क अपने पीछे के जाने भाग कर हासिल करने का मौका तो मिला, लेकिन पावर प्ले नाम रहा कराची वाइट्स के 31 पे 2। उमर अमीन पे बहुत भारी जिम्मेदारी, अगर चाहते हैं कि रावलपिंडी किसी एक ऐसे टोटल तक पहुंच जाए जिससे वो कराची के बैटिंग लाइन के लिए कुछ मुश्किलात पैदा कर सकें, तो बड़ा अहम है कि वो तमाम ओवर्स विकेट पे खड़े रहें। आदिल गए पीछे की जानिब। इब्तिदा में पहले आप की ये कन्फ्यूजन थी, लेकिन बाद में एक रन पे ही इक्तफा करना पड़ा दूसरे के लिए पलट के जब आए। तो जो जीतेगा वो मुकाबला करेगा एबटाबाद से, जिसने आधा ख्वाब पूरा कर लिया है पहुंचने का फाइनल तक। पावर प्ले के 6 ओवर तो नाम रहे, लेकिन अब तक कितना बेहतर है कि 5 रन पर ओवर की औसत के साथ स्कोरिंग हो चुकी है और 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। गो के दोनों इनकी बैटिंग के पावर हाउस थे। विड्थ मिल गई और बैकफुट पे जाके जोरदार अंदाज से कट किया है। लंबा चेज है वहां पर माद के लिए, स्लाइड करके अच्छी टेक्निक के साथ गेंद को रोका, अपनी बॉडी को पीछे की जानिब थ्रो करते हुए गेंद के। बहुत ही उम्दा फील्डिंग अम्माद आलम, न सिर्फ एक बहुत ही बासलाहियत बैटर हैं, लेकिन फील्डिंग में भी लाइव वायर। और ये एक टीम के लिए बहुत अहम होता है कि फील्डिंग जो है वो अपनी बॉलिंग को बैक करे, खास तौर पे लिमिटेड ओवर क्रिकेट में। चेक करना चाह रहे हैं कि बैटिंग एंड पे कहीं शॉर्ट रन लेके तो नहीं वापस भागे थे। दूसरे एंड पे मौजूद जिशान, ये एक और इनके लिए मुसीबत हो सकती है। गो के इनको 1 को 2 में बदलने का एक चांस निकालना पड़ेगा। मुनासिब साइज की बाउंड्रीज हैं, एक तरफ 68 यार्ड है, इस तरफ जहां से अम्माद ने गेंद को फील्ड किया था वहां पर ये मुख्तसर बाउंड्री है, लेकिन 1 को 2 में बदलने का आर्ट देखना पड़ेगा। पलट के भागे थे जिशान और बल्ला वो ऑलमोस्ट लाइन पे दे मारे हैं, और वो जो फेमसली कहते हैं कि लाइन है भला किसकी अंपायर, और वो इस एक रन को भी मिन्हा कर लेंगे। कुछ ठीक नहीं हो रहा रावलपिंडी के लिए आज की शाम। अब तक मोमेंट्स को पिक करना पड़ेगा अगर आप यहां से वापस आना चाहते हैं इस गेम में, तो वो बॉलर जिनको टारगेट कर सकें। जोरदार अपील कर रहे हैं, लेकिन गेंद का पॉइंट ऑफ इंपैक्ट अभी भी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा। काफी स्पिन हो रहा था ये बॉल, एक अच्छा फैसला मेरा ख्याल से अंपायर का, आसान फैसला। स्पिन हो रहा था बॉल, काफी हद तक लेग स्टंप को मिस करता है। ये देखिए स्पिन हो रहा है बॉल। हमेशा जो है वो इस तरह का जब डाउट क्रिएट होता है तो बैट्समैन को एडवांटेज दिया जाता है। हिकमत अमली इनकी भी सिंपल है। जिशान मलिक भी स्क्वायर के मजबूत लेकिन ऑन साइड के एक ऐसे प्लेयर समझे जाते हैं जो कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर रिलाई करते हैं, और उनके लिए भी ऑफ स्टंप की बाहर की टर्न होती हुई दूर जाती हुई गेंद को इनवाइट किया गया और ऑलमोस्ट पकड़े भी गए थे, कुछ देर हवा में गई गेंद।
जीशान की टेक्निक पे काफ़ी कुछ बात हो सकती है। फास्ट बॉलिंग पे अब आपने देख लिया, जब बॉल स्विंग हो रहा था तो काफ़ी प्रॉब्लम्स उनको हो रही थी, उनका जिस्म जो है खुल रहा था और जिसकी वजह से आउट स्विंग खेलने में मुश्किल होती है। और स्पिन पे भी जो है वो बॉल के ऊपर जा रहे हैं, रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि बॉल को अपने पास आने दें, खास तौर पे ऐसी विकेट पे जहां बॉल थोड़ा सा स्पिन हो रहा। जोरदार स्वीप है, कुछ देर रवा भी रही थी, लेकिन अनवर अली अपनी जगह पे कायम गेंद को हासिल करने के लिए। और अगर आप बॉलर को पिक करने की बात करते हैं तो इस टूर्नामेंट के जॉइंट विकेट टेकर आरिफ याकूब ने गेंद करने के लिए आना है। गो के अनवर अली ने दूसरे एंड से बेहतरीन शुरुआत की है, वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन 10 ओवर के आसपास अब तक आरिफ को इंट्रोड्यूस किया है कराची ने। छह गेंदों पर 6 रन हासिल किए रावलपिंडी ने इस ओवर में, 37 पे 2। आज ऊपर भेजा हैदर अली को यासिर खान के साथ सेमीफाइनल में इनिंग्स की शुरुआत करने के लिए, लेकिन ये पावर प्ले मुकम्मल तौर पर नाम रहा। एक तरफ से सोहेल खान और दूसरी तरफ से शाहनवाज अली दहानी के ऊंचा खेलने के लिए चले गए थे, लेकिन अपने जिस्म से दूर खेले। असद शफीक ने कैच ड्रॉप किया, जिशान मलिक का वो अब तक क्रीज पर मौजूद हैं, लेकिन हाथ खोलने का जैसे मौका मिला था यासिर को, उसे एक गेंद के बाद वो चकमा खा गए, बहुत आगे निकल गए थे गैर ज़रूरी तौर पर। और यूं एक बड़ा खिंचा खिंचा मुसीबत ज़्यादा पावर प्ले रहा है रावलपिंडी के लिए, जिसके बाद उनको कम बैक करने की ज़रूरत है। अब ये दिलचस्प है कि वो मुसलसल अपने बॉलर्स को शफल कर रहे हैं। सोहेल और शाहनवाज अली दहानी के इस 2 ओवर्स के स्पेल के बाद एक तरफ से अनवर अली ने बॉलिंग की शुरुआत की थी और लगता है कि वही कंटिन्यू करेंगे। बॉलिंग ऑप्शन इनके पास ओपन हो गए हैं दानिश अजीज़ की कामयाबी के बाद। आदिल नाज भी हैं इनके पास और इसके साथ साथ आरिफ याकूब भी, और दोनों मुख्तलिफ तरह के बॉलर्स हैं, दोनों अमंग द विकेट्स हैं, और जहाँ पर टर्न इनको मिल रहा हो वहाँ पर मज़ीद लीथल साबित हो सकते हैं। अगर इस तरह चलते रहे तो बमुश्किल वो शायद रन बॉल का टारगेट दें, जो कि बड़ा मसला नहीं होगा कराची के लिए। एक बार फिर लैक ऑफ पेस के साथ ऑफर किया उमर अमीन को। 170 रन की बात की थी उमर अमीन ने टॉस पे कि वो चाहते हैं कि 170 रन का टारगेट कम से कम दें टीम को, लेकिन अब उसको रीथिंक करना पड़ेगा उनको। विकेट भी उन्होंने अब देख ली है, स्पिन भी बॉल थोड़ा सा हो रहा है, स्विंग भी इन दी एयर मिली है। जो दीगर बॉलिंग ऑप्शंस की इनफैक्ट मैं बात कर रहा था, इनके साथ आफ्ताब इब्राहिम भी हैं जो कि अंडर 21 कैटेगरी से टीम में शामिल हुए हैं। शाहनवाज अली दहानी को आज खिलाने का फैसला किया, जो कि अब तक ऐन दुरुस्त साबित हुआ है। गुलाम मुदस्सिर, अशर कुरैशी, मोहम्मद हसन वो खिलाड़ी थे जो कि जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सके रमीज़ अजीज़ के साथ, लेकिन अचानक से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड कायम कर लिया है रावलपिंडी के ख़िलाफ़ कराची वाइट्स की टीम ने। असद शफीक की क़यादत में ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सफ़र नहीं था जो कि यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहे। स्लो लूपी डिलीवरीज कर रहे हैं। जिशान को ख़ास तौर पर इंडे पर की भी कोशिश किया, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर प्रोटेक्शन रखी है सुपर कवर की सूरत में। 3 फील्डर मौजूद हैं स्क्वायर के आगे ऑन साइड पे। अगर इनकी बैटिंग देखें आप पिंडी की, तो मोहम्मद नवाज ने भी बैटिंग करने आना है, मुबस्सिर खान इनके पास मौजूद हैं, तो बैट्समैन इनके पास हैं, लेकिन एक बेस चाहिए जहां से वो लॉन्च कर सकें, कोई अटैक कर सकें। जैसा कि बारहा जिक्र किया जा चुका है कि इन विकेटों पर अगर आपने एंड में कोई लॉन्च करना है अटैक, तो आपके पास विकेटें ज़रूर होनी चाहिए हाथ में। सैटरडे नाइट कराची में और जगह बहुत है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पर ये सेमीफाइनल्स की रात है। डबल हेडर्स। एबटाबाद की टीम इससे पहले पेशावर की बड़ी टीम को शिकस्त देकर कल के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, और अगर आप कराची में हैं या पहुंचना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए इस मेस्मराइजिंग सेटिंग में, जहां पर कल रात 8 बजे फाइनल खेला जाएगा। एबटाबाद के खिलाफ कौन खेलेगा आज पता चलेगा। 20 गेंद हो चुकी हैं बाउंड्री लगे, और लगता है कि जमूद को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा के रन ही पहुंचेंगे। दहानी पहुंचे उठाने के लिए। ऑकवर्ड बाउंस मेरे ख्याल से आजम के सामने बॉल जो है वो बाउंस की, जिसकी वजह से
क्लीन कलेक्शन नहीं कर सके वो। थोड़ी सी जगह बनाने की कोशिश की थी, फॉलो किया उन्होंने उसको, लेकिन काफी ज्यादा लेग स्टंप पे बॉल हो गई। थ्रू द थाई पैड्स निकालने की कोशिश की और फाइनली इस जमूद को तोड़ दिया। बड़ी दौड़ लगाई थी आफ्ताब ने, लेकिन गेंद इनसे ज्यादा तेज निकली। इस जमूद को तोड़ा जो कि 21 गेंदों से तारी था। ऐसे कई शॉट चाहिए रावलपिंडी को जागने के लिए। विथ को कम करने के लिए जो है वो दोनों तरफ बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त अनवर अली, जो कि उनसे तवक्को नहीं की जाती उनके तजुर्बे और जिस तरह की वो बॉलिंग करते थे। ये देखिए, ये बॉल भी इनके भी पैड्स पे थी, लेफ्ट हैंडर के। बहुत आसानी से उन्होंने फ्लिक किया और 4 रन हासिल किए। पहले भी एक लेग स्टंप के नीचे वाइड कर चुके हैं वो राइट हैंडर को। सीधा खेले बॉलर के सर के ऊपर से, मजीद रन हासिल होंगे। लंबा चेज है दाएं दाएं भागते हुए उमर बिन यूसुफ के लिए, लेकिन गेंद के साथ ही वो भी बाउंड्री स्कटिंग से टकरा गए। 2 चौकों के साथ 50 मुकम्मल किया रावलपिंडी ने। अच्छा शॉट, ये बॉल आगे थी और ऑन दी अप ड्राइव किया, टाइम किया, ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं की और उसका सिला 4 रन हासिल किए। Arif Yaqub, the man in the limelight, leading wicket taker. He loved the surface. We've seen a lot of turn, a lot of purchase for the spinners. And he's been really decent. 12 matches, 21 wickets already. Economy under check. Look at the average. Nightmare for the batters tonight. This will be an interesting and fun phase of the innings because Arif Yaqub, as you said, highest wicket take in the tournament. If Danish is getting that much turn, he will surely create trouble. He'll test you. This is too full. Hit hard and gone for 4. Danish would never get there. He's not the quickest and he's got the wee to protect. Yeah, just the comfortable zone for Umar Amin. He's experienced enough to understand that if you want to target a spinner, go down the track. It was pitched up, easy picking for him. Doesn't really had to do a lot of effort in it. We saw him in the warm-ups trying to bowl with different pace. Googly flippers as well. Did you notice that? He's wiping the ball already into the first innings. Down the wicket, big hit. That's gone for a maximum. That's a good ploy. The highest wicket taker of the tournament. Go ahead and attack him. Positive intent from Zishan. Very good use of the feet, getting to the pitch of the delivery. I'm not sure if Arif picked it up or not, but you could hear Azim screaming that he got out of the blocks very early. I think it was just fine. The moment it left the hand, Zishan went after it. That was a sharp turn, and that's because that's a good stop. We'll talk about that turn, but that's a good effort from Umair bin Yusuf. They may have a second look, but I think it's good enough. But that spun. The batter thought he had it covered, got at the bottom part of the bat because of that exaggerated turn.
Yeah, that will be encouraging for Arif, but again, you need to be landing in the right areas. If they can take Arif out of the equation, Rawalpindi, then probably will send a bit of a message to Karachi. 9 gone, 65 for 2. They've come in numbers early on. It was Peshawar facing Abbottabad. Young ones here watching their superstars, enjoying the time. Yeah, it's weekend here, so this was expected. Some quality cricket right in front of your eyes. Oh, cotton ball chance, just drops short. Little too much of bottom hand on that. And a bit of in-dip swing from Anwar Ali. You almost have to reboot yourself, because against Anwar Ali, he already doesn't allow you a lot of pace, but with his cutters and the surface, you have to recheck your shots. That's his experience. Now with his limited run-up, he's trying to work more on the variations. Got an in-swinging one first up, then a bumper, slower one. He's all set and ready to represent the flag, the star. He's got all the gear, gloves, pads, helmet. No, the pads are missing, but he's got the helmet. Wow. Don't push him off that stair. Oh, again a chance. Is that ball stopping on him? The variation is definitely there, but Deshan, I don't think he's picking it up. You need to delay your shot, let the ball come close to you. You can see where he's connecting the ball. The face of the bat is quite open and far away. So that will always pop up off the bat. 2 chances created in this over. Anwar Ali, with his variations, he's teasing the Rawalpindi batters. Shout for catch it. Oh no, the fielder comes around it, rather rushing at it. Asad Shafiq, the captain. I don't know why he did that. And some time to enjoy. Lovely evening here, weekend, and obviously Tapalti moment. You can have that any time. With certain limitations in his run-up and everything, I think he's bowling very well. The variations that Anwar Ali is providing is keeping the batters in check. And that is, of course, coming with the experience that he has in this shortest format. He's played the PSL. He was the first bowler of the first ever edition of PSL. First ball for PSL was him. Four of the over, 69 for 2. I just wonder if Asad has thought about it. Anwar from one end, and then you bring Sohail Khan Rodhani from the other. That would be a nightmare for batters, because you have to reset against those two. One with some serious pace, Anwar not offering any pace. It's good to see the young ones coming in, enjoying the cricket. Future cricket stars.
8 and over will take them just to the brink of 150. If can manage to hit that 150, 155 mark. They've got decent spinners, but they need to put the hard work in. And just to challenge Karachi. What Umar Amini is doing better against the leg spinner is he's coming down the wicket and he's meeting the ball early. There's the most wickets in the tournament. Shahab Khan is leading with 21. Joint second is Arif Yaqub with more number of games. Early on we had an interview with him and he spoke very maturely. He said that the seniors actually guided me and they told me that it is all about absorbing pressure, and once I did that, I managed to do that, I started to enjoy my game. Haven't seen him bowling that wrong on. Especially when they're trying to make room, exposing their stumps. He's drying his hands because it was a bit damp, a little bit, at the start of the game. He's got bat onto that front foot to the pitch of the ball and swing. That's what Umar Amin can do. Out of nowhere, he can play such shots which will unsettle the bowlers. Down on one knee, pick the length beautifully and the line as well. Good path of the bat, never intended to keep it down. Good connection all the way for a maximum. Well, loud shout from Azam and bowler, umpire not interested. That'll be the end of the over. 78 for 2. Just trying to repeat that shot, forward press, and again it was fuller this occasion. That's why he didn't really get the connection. He did hit him on the back leg. Not impressed the umpires. 2 down on 78. .09 is the current run rate. They need to push it to some extent. Wow, did that keep low or what? But he still managed to get a boundary. Well done. You can see the smile on Anwar Ali. Yeah, you don't expect that. It actually took him by surprise, the lack of bounce. But still he had enough on it to get it through the boundary line. Some more difficulties for the batters out in the middle. Out of all the people coming behind the bowler's arm, it's the fourth umpire. Why not him? He's the one who's supposed to stop them from crossing while the ball is being bowled. He might be chasing someone.
Yeah, Zishan especially is not reading him. The change-ups that Anwar Ali is offering. Yeah, the problem is that with no pace on offer by Anwar Ali, the batters have to put a lot of effort in playing those shots, and if you're not reading it early, you're not in a decent stance, you don't have a solid base, it's hard to put them away. Bat onto it. That'll be a boundary. Well, you notice that the boundaries are coming in the previous over also. This over, this is the second boundary, so Asad Shafiq will have to keep an eye on that scoreboard. Apart from a few dots, there are boundaries also coming in. And you don't want them to get more than 150 in a knockout game. Yeah, the partnership is brewing. 63 of 43 deliveries. They've done well. Zishan and Umar both have understood the role. Last ball of the 12th. It's been a good over, 10 off it. Needs to finish well. This pair is doing a good job. Nicely played in the wee. Partnership now 65 or 45. It is 89 for 2. रियर गार्ड एक्शन रावलपिंडी का, जो कि उनको एक मरतबा फिर गेम में वापस ले आया है 89 तक पहुंचाने के लिए। पार्टनरशिप 65 रन्स की हो चली है, लेकिन रावलपिंडी के फैंस को एक ड्रीम फिनिश भी चाहिए और उसके लिए ज़िशान मलिक के लिए पोल पोजीशन है। वो सेंचुरी बना चुके हैं इस टूर्नामेंट में फैसलाबाद की एक अच्छी बॉलिंग यूनिट के खिलाफ, लेकिन सबको एंटरटेन करने के लिए, कुछ बड़ी हिट्स लगाने के लिए अब सामने उनको मुकाबला करना पड़ेगा तूफान का। सुहेल खान गेंद करने के लिए आए हैं। पुरानी गेंद से वो कितनी मूवमेंट हासिल कर पाएंगे, इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जो उनकी नई बॉल की एबिलिटी उसका आज उन्होंने भरपूर डिस्प्ले पेश किया। इनवर्ड आउटवर्ड दोनों तरफ से बांध के रखा था बैटर को। उमर अमीन फिलहाल सामना करेंगे, उठाकर खेलने के लिए गए और खुर्रम मंसूर के सर के ऊपर से निकाल दिया है। उमर अमीन की शाहकार इनिंग्स जारी और सारी। सुहेल का इस्तकबाल किया चौके से। कैच इट की आवाज जरूर थी सोहेल खान की जानिब से, लेकिन खुरम की पहुंच से दूर। 45 पे फील्डर दायरे के अंदर था, इसलिए ये फ्री हिट थी। सोहेल खान स्ट्रे किया लाइन और लेंथ दोनों में, और इजी पिकिंग्स थी उमर अमीन के लिए। आसानी से इसे बाउंड्री की राह दिखाई। रावलपिंडी की इनिंग्स रिबिल्ड होते हुए 24 पर 2 आउट थे, 69 रन की पार्टनरशिप हो गई है और सिर्फ 46 गेंदों पर। इन स्विंगिंग डिलीवरी जो कि उमर अमीन ने गाइड की है, और एक मरतबा फिर एक्शन वहां पर, कभी दाएं कभी बाएं, गेंद को उछाल उछाल के अपने लहू को गरमा रहे हैं, लेकिन उमर अमीन अपनी जगह पर मुंजमद। सोहेल खान के हवाले से एक ख्याल ये भी था कि वो तीसरे ओवर के लिए आते और एक और ब्रेक थ्रू दिला के अपनी टीम को पोल पोजीशन में ले जाते, लेकिन यहाँ पर वो तीसरे ओवर के लिए जब आए तो गेंद पुरानी हो चुकी है। और क्या असद शफीक ने उनको देर से ला के उस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया तो नहीं कर दिया? एक सब प्लॉट रहेगा शाह फैसल। सोहेल का रोल रहा है ये कि ये एक ओवर मिडल ऑफ द इनिंग्स अब करेंगे और शायद एक टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसी महारत रखते हैं नई और पुरानी बॉल से। और आप उनका ओपनिंग स्पेल देखिए तो 2 ओवर्स में उन्होंने 4 रन दिए, और जिस तरह उन्होंने बॉल को हवा में लहराया, ऑफ द पिच स्विंग किया, लाजवाब बॉलिंग की उन्होंने। खूबसूरत मूवमेंट एक मरतबा फिर। आज कुछ मौसम बदला है शाह फैसल, इससे पहले मुकम्मल तौर पर खुश्क था कराची का ये आउटलुक, लेकिन आज लग रहा है कि खिलाड़ियों के चेहरों पर पसीना भी है, ह्यूमिडिटी लेवल बढ़े हैं
और उसकी वजह से कुछ हिंट ऑफ ड्यू है। तो देखते हैं इस हाथ में क्या रिएक्शन आता है। कुछ जो घास चिपक रही है, ऐसे लग रहा है कि हिंट मौजूद है। बिल्कुल मामूली सी डैम्पनेस कह सकते हैं, ड्यू नहीं है। थोड़ी ठंडक का एहसास होता है जब आप घास पर हाथ फेरते हैं। और अभी हम फिल वक्त शायद कंडीशंस दोनों टीमों के लिए बराबर है, इस पे नजर रखनी होगी। जैसे आपने कहा मौसम में तब्दीली हुई है, शायद अगले आधा घंटे या घंटे में इस पे देखेंगे। एक मरतबा पे कोई सिंगल है, डेंजर एंड में भागना था उमर अमीन को, लेकिन ये इस पार्टनरशिप का हॉलमार्क रहा है। जब पीएसएल के मैचेस यहाँ पर होते हैं शाह फैसल, उस वक्त सर्दियाँ जा रही होती हैं जितनी भी कराची में होती हैं, और गर्मियों की आमद होती है या फिर बाहर का मौसम शुरू हो रहा होता है, और उस वक्त तो इतनी ड्यू होती है कि आपको ये जिस शीशे के पीछे बैठ के बात करनी पड़े वो धुंधला जाता है कई मरतबा, और गेंद क्लियरली एडवांटेज देती है सेकंड नंबर पे बैटिंग करने वाली टीम्स को। लेकिन रावलपिंडी के लिए कम से कम अच्छी पोजीशन ये है कि उनको उस एडवांटेज का अब तक सामना नहीं करना पड़ेगा कंसीड करते हुए। लेकिन ये जो रन रेट उनकी इब्तिदा में लग रहा था कि बमुश्किल 120 तक लेके जाएगी, अब दोबारा से 150 का मौका दे रही है। इम्प्रोवाइज किया है ज़िशान ने और आउट हो गए। शाहनवाज अली धानी, रॉकस्टार, सुहेल तूफान, नतीजा ज़िशान मलिक की अहम विकेट। यही सुहेल खान का खासा है। कप्तान असद शफीक उन्हें लेके आए पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए, और अपने कप्तान को मायूस नहीं किया। ज़िशान मलिक जो आज थोड़ा रुक के ठहर के खेले, नए बॉल का सॉल्ट झेला, लेकिन अब वक्त की ज़रूरत थी कि रन बनाने की रफ्तार में इजाफा होता। सुहेल खान का हुनर, उनका तजर्बा और उनकी एक्सिक्यूशन ने काम तमाम किया। ज़िशान मलिक की इनिंग्स का हमेशा की तरह एंजॉय करते हैं अपनी सक्सेस को सुहेल खान। ज़िशान वापस हुए 32 रन बनाकर, रावलपिंडी 94 पे 3। मोहम्मद नवाज आ गए हैं। अभी भी 7 ओवर और 1 गेंद का खेल बचा है। रावलपिंडी की इनिंग्स को इम्पेटस की बहुत सख्त जरूरत है। 2 तजर्बेकार खिलाड़ी रावलपिंडी के, 2 इंटरनेशनल प्लेयर्स नवाज और उमर अमीन। देखते हैं कि वो इस इनिंग्स को किस जानिब लेकर जाते हैं। नवाज इस टूर्नामेंट में एक बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स खेल चुके हैं अर्लियर ऑन। तेज रफ्तार ने सेंचुरी बनाई थी। रावलपिंडी चाहेगा कि आज भी वो ऐसा ही करें। 2700 रन है, 237 मैचों का तजर्बा, बहुत ही तजर्बाकार। स्ट्राइक रेट 123, और इनकी बॉलिंग देखें तो एक जबरदस्त ऑलराउंड क्रिकेटर हैं। एक और कामयाब ओवर मुकम्मल जोशीले सुहेल का। कराची वंस अगेन ऑन द टॉप, 94 पे 3 रावलपिंडी। गो के सुहेल खान की विकेट थी, लेकिन ज़िशान मलिक भी ज़रूरत से ज़्यादा इम्प्रोवाइज करने के लिए चले गए थे। कम से कम सुहेल को रिस्पेक्ट देनी बनती थी। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को उन्होंने निकालने की कोशिश की, और ऐसे ट्रैप के लिए तैयार थे दहानी। दान जाने जाते उस आसान कैच को हासिल किया। असद शफीक भी सुक्का सांस ले रहे होंगे, सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो कराची के कप्तान है, बल्कि ज़िशान मलिक की इनिंग्स इब्तदाई मरहलात में थी जब उनसे कैच ड्रॉप हुआ। गो के उसके बाद वो एक अच्छी इनिंग्स खेल के गए हैं जो कि अभी भी फ़र्क डाल सकती है, लेकिन अहम मौके पे विकेट हासिल हुई है। वो बिग बूमिंग सिक्सेस के लिए नहीं जा सके थे जो उनके खास है। 2 छक्के और 1 चौका लगा के आउट हुए। यहाँ पे ये मुकाबला बहुत सख्त है। दूसरे स्पेल में आप देखिए 7 से लेके 15 तक 9 ओवरों में सिर्फ 63 रन आए, लेकिन पावर प्ले ने ज़्यादा काम ख़राब किया इस मरतबा, क्योंकि सुहेल जब बॉलिंग कर रहे थे और शाहनवाज धानी, तो ऐसा लगता था कि बैटर्स बैटिंग भूल गए हैं। इतना स्विंग और मूवमेंट था कि बॉल खाल खाल ही टकराई बल्ले को। आफ्ताब इब्राहिम आ गए, नौजवान क्रिकेटर, 6 खिलाड़ियों को आउट किया अभी तक इन्होंने। स्ट्राइक रेट ज़्यादा और एवरेज भी, लेकिन अर्ली टाइम है इनके करियर का और ये यकीनन इम्प्रूव करेंगे। क्रूशल स्टेज है इनिंग्स की। ऑफ साइड पे 1 स्वीपर है कवर में और 1 थर्ड मैन पे, 3 स्वीपर्स ऑन साइड पर।
शानदार डिलीवरी के साथ शुरुआत की है आफ्ताब ने। अच्छे एक्शन के साथ गेंद करने के लिए आते हैं, इनकी टांग भी सीधी रहती है और पूरे मुकम्मल रिदम के साथ और प्रॉपर फॉलो थ्रू के साथ ये गेंद को मुकम्मल करते हैं। पाकिस्तान के लिए अंडर 19 टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं और पेस भी एक तमाम अज्जा जो कि ज़रूरी होते हैं फास्ट बॉलर के लिए अच्छे हासिल करते हैं। एंगल बनाते हुए उमर अमीन को बीट किया। उमर अमीन के पास जो बाउंड्री ऑप्शंस हैं, अब फील्ड तब्दील हुई है, थर्ड मैन ऊपर आ गए हैं और मिड ऑफ ऊपर चले गए, बाउंड्री पे चले गए। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से है ऑप्शन उमर के पास। उमर अमीन को अब कुछ वक्त गुजारना पड़ेगा। गो के जिस अंदाज का बाउट शाहनवाज अली दहानी और जिस अंदाज की स्विंग की थी सुहेल ने, उसके लिए शायद तवक्को करना भी बहुत ज़्यादा होगा आफ्ताब से। लेकिन विकेट टू विकेट बॉलिंग करके उन्होंने जितनी कामयाबी हासिल की, और कराची के इस यूनिट में जिसमें गुलाम मुदस्सिर भी मौजूद हैं जो कि नई गेंद के साथ आते थे गेंद करने के लिए, तजर्बा उनका लामहला ज़्यादा है आफ्ताब से, उनके आगे इनको मौका मिला है। और ये सोच भी हो सकती थी कि आरिफ याकूब अपने 2 ओवर मुकम्मल करते हैं, लेकिन उनके ऊपर गेंद करने के लिए आए हैं तो इमोशंस इनके दिल में और दिमाग में मुअज्जन होंगे। दूसरी जानिब अभी भी रावलपिंडी को एक और पार्टनरशिप चाहिए, वो लाइसेंस लेकर नहीं आए हैं शायद आने वाले 3-4 ओवर तक बड़ी हिट्स के लिए। विकेट मिल गई है और गैप भी तलाश करने में कामयाब हो गए नवाज अपने पहले चौके के लिए। खूबसूरत गैप में खेला गया सेफ शॉट। ही वो गैप था जो नवाज के लिए भी मौजूद था इस मरतबा, हालांकि एरियल नहीं था, लेकिन फील्ड को अबूर करने में कामयाब हुए। एक्स्ट्रा कवर के दाएं जानिब और स्वीपर कवर के बाएं जानिब से निकल गई। अच्छा टाइम किया, जोरदार शॉट। बाउंड्री की जरूरत थी रावलपिंडी को विकेट गिरने के बाद। नवाज का अच्छा आगाज है ये। एक मरतबा फिर ट्रिगर मूवमेंट थी, एकदम आगे आ गए थे सम्स को एक्सपोज करते हुए, लेकिन गेंद तक पहुंचे आफ्ताब और कराची का प्लान नवाज को आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद करने का काम नहीं कर रहा और 2 चौकों के साथ रावलपिंडी के अहम 100 भी मुकम्मल। इस मरतबा डीप कवर फील्डर के दाएं जानिब से गैप हासिल किया नवाज ने। थोड़ा सा ज्यादा आगे गिरा हुआ गेंद था, ज्यादा बाहर था। नवाज विकेटों के बिल्कुल सामने है, कलाइयों का इस्तेमाल किया आखिरी लम्हे पर, बल्ले का रुख उन्होंने मोड़ा और वहीं से टाइमिंग और प्लेसमेंट हासिल की। बहुत लंबा गैप था यहाँ, पहले पॉइंट को बीट किया और एक्स्ट्रा कवर को। अब थर्ड मैन का फील्डर दायरे में आ गया है और मिड ऑफ वापस चले गए बाउंड्री पर। वंस अगेन बिग बूमिंग शॉट, थिक एज, और एक चप्पे के बाद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगी। दाग गया रावलपिंडी, धड़क रहा है कराची में 3 मुसलसल चौके, हैट्रिक। इस बॉल से पहले ये फील्डर थर्ड मैन पे बिल्कुल वही मौजूद था जहां ये बॉल गया। 2 चौके लगे और कप्तान ने फील्डिंग तब्दील की और गेंद वहीं पर चला गया। 3 चौके। नवाज बिल्कुल भी शिकायत नहीं करेंगे। नवाज आन की आन में डबल फिगर्स पे पहुंच गए हैं, 4 पे 12 बना के, और आफ्ताब को लाने का खास तौर पर इस वक्त इंट्रोड्यूस करने का तजर्बा ठीक साबित नहीं हो सका। कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इस वक्त एहतियात का दामन नहीं छोड़े। गेंद क्लियरली बाउंड्री लाइन के अंदर गिरी थी, लेकिन हैट्रिक मुकम्मल हो गई है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्ताब को अपने हौसले को जमा करने का मौका मिलेगा, ये कराची के लिए अहम है और ये वो गेम चेंजिंग ओवर बन सकता है। आफ्ताब पूरे अगर लेट जाएं तो उतना फासला है बाउंड्री लाइन और टिप्पा खाने वाली जगह में, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट के तकाजे के तहत सब कुछ चेक किया और अब अगली गेंद करने के लिए तैयार। पहले ओवर के आखिरी जो कि हो सकता है आफ्ताब का इनिंग्स का वाहिद ओवर हो। ऑन साइड का इंतखाब किया है, लेकिन मौजूद हैं इस मरतबा वहां पर अमाद। एक्शन पैक ओवर अमाद के खिलाफ जो गेंद को फील्ड किया, 14 रन का था आफ्ताब का। 108 पे 3 रावलपिंडी। रावलपिंडी ने इब्तिदा में मुश्किल वक्त गुजारा है। अगर उनकी डॉट बॉल की परसेंटेज देखें तो सेमीफाइनल का ये प्रेशर सामने आया है, लेकिन इसके साथ साथ 4 छक्के भी लगाए हैं, जो कि 2 लगाने वाले दिशान मलिक वापस जा चुके हैं। उमर अमीन ने एक मैक्सिमम का तजर्बा हासिल किया, अब तक मौजूद हैं। यासिर खान इनिंग्स की शुरुआत में एक लगाया था, वो भी वापस जा चुके हैं। लेकिन जैसे आपने कहा शाह फैसल, ये सबसे तजर्बेकार जोड़ी है, खासतौर पर शादाब की अदम मौजूदगी में रावलपिंडी की, और एक अहम इनिंग्स पनप रही है यहाँ पर इस पार्टनरशिप की सूरत में। 7 पे 14 बन गए। ये बिल्कुल एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं दोनों पिंडी के। उमर अमीन
काफ़ी अरसे से पिंडी के लिए बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मर रहे हैं, रिलायबल प्लेयर हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव और स्टाइलिश स्ट्रोक प्लेयर हैं। 4 डे क्रिकेट में जब आप इनको खेलता देखें तो इनकी इनिंग्स बहुत ही लाजवाब होती हैं। दोनों लेफ्ट हैंडर्स को देखकर असद शफीक आ गए हैं गेंद करने, और स्टंप पे ऑलमोस्ट स्क्वायर और बिहाइंड स्क्वायर 3 फील्डर हैं। वहीं पे बॉल शॉट की और बॉल बिल्कुल निकला नहीं विकेट से, थोड़ा लो रहा, टर्न भी हुआ। शायद ये पिंडी के लिए भी एक अच्छे साइन है, आप रन्स ऑन द बोर्ड करें और बॉलिंग अच्छी करें, टाइट करें। नवाज हैं, मुबस्सिर है, तो आप कराची को फंसा सकते हैं यहाँ। गो के अभी जब हमने चेक किया था ड्यू को तो इतना कोई बड़ा हिंट नहीं मिला था, लेकिन अब टॉवल्स एक मरतबा फिर आउट हैं। और इससे पहले गेंद कर रहे थे जब आरिफ याकूब, वो भी हर 2-3 गेंदों के बाद मुसलसल गेंद को अपनी शर्ट के साथ सुखाने की कोशिश कर रहे थे। बड़ा लंबा चेज है दोनों फील्डर के लिए, लेकिन दरमियान से जाते चली जाएगी। असद शफीक का भी इस्तकबाल किया है उमर अमीर ने एक और कीमती चौके के साथ। एफर्टलेस ईज है, जब आप उमर अमीन को ऐसे स्ट्रोक खेलते देखते हैं तो आप ये सोचते हैं कि उनका करियर, इंटरनेशनल करियर क्यों नहीं ग्रो किया ज्यादा। देखिए बिल्कुल रिस्क फ्री, सीधे बल्ले के साथ स्टैंडिंग टॉल और खूबसूरत शॉट, टाइमिंग प्लेसमेंट का जवाब नहीं। शॉट गेंद सीधा खेले, लेकिन असद शफीक उछल के हासिल करने के लिए गए तो थे, गेंद जाती चली गई और स्टाइल के साथ उमर अमीन कप्तान ने अपनी फाइटिंग 50 मुकम्मल की है। रावलपिंडी के लोन वॉरियर बने हैं, इनके जंगजू हैं उमर अमीन। कप्तान ने 33 गेंदों पे यादगार 50 मुकम्मल किए सेमीफाइनल में। बड़ा मैच और बड़े खिलाड़ी उस स्टेज को पसंद करते हैं। उमर अमीन ने भी आज का दिन चुना इस लाजवाब इनिंग्स के लिए। सिर्फ 33 गेंदें, अच्छा स्ट्राइक रेट है, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ उमर अमीन का। असद शफीक को साथ ये भी सोचना होगा कि अगले ओवर को फेंकने के लिए किसको आना है, और शायद वो खुद हिम्मत हार देंगे। उनके पास उनके खुद के आने की वजह से ऑप्शन वाइड ओपन तो हो गए हैं। एक मरतबा फिर विकेट मिली और एक मरतबा फिर बड़ी खूब गैप तलाश किया है और एक मरतबा फिर चौकों की हैट्रिक। उमर अमीन ऑन अ रोल। अच्छी खबर रावलपिंडी के लिए, अचानक से 5 पलटते हैं उस इनिंग्स में। बड़ी खूबसूरती से जो खाली पॉकेट्स हैं वहां पे गेंद को फेंक रहे हैं उमर अमीन, और तेज आउटफील्ड ने पूरा रिवॉर्ड मिल रहा है। थोड़ी सी अपने आप को जगह दी और वही एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को दोबारा बीट किया। रावलपिंडी की इनिंग्स मोमेंटम पकड़ते हुए। तो अब तक सरासर गलत साबित हुआ है उमर अमीन के खिलाफ, और नवाज के अगेंस्ट असद शफीक का गेंद करने के लिए आने का फैसला। और अब देखना पड़ेगा उनको एक मरतबा फिर आरिफ याकूब की जानिब, जो कि अनकैरेक्टरिस्टिकली इस टूर्नामेंट के अपने फिगर्स के बरक्स 2 ओवर में 23 रन दिए हैं। नौजवान आफ्ताब गेंद करने के लिए आए थे, उन्होंने अपने वाहिद ओवर में 14 दिए हैं। दानिश अजीज अच्छे चल रहे हैं, 2 में 12 दिए हैं। हो सकता है आपके लीडिंग विकेट टेकर हैं पूरे टूर्नामेंट के, सिर्फ आपके नहीं बल्कि पूरे टूर्नामेंट के। 1-2 ओवर अगर आप अच्छे नहीं गए तो आप उनको कॉन्फिडेंस दें मजीद, लेकिन अब जो बॉलर उनकी जगह आजमाया असद ने, उनकी भी पिटाई हुई, तो अब शायद वापस जाना पड़ेगा आरिफ याकूब के पास। ऑफ द बैक फुट वंस अगेन, हवा में पूरी कुव्वत। नवाज का पहला छक्का। असद शफीक कप्तान पे घड़ों पानी पड़ गया। 20 रन दे दिए अपने ओवर में। रावलपिंडी ने काया पलट दिया कराची में। 2 ओवर्स में 34 और एक आन की आन में ये स्कोर बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। बैकफुट पर इस एरिया पे छक्का लगाना बड़ा ही इनक्रेडिबल स्ट्रोक है। इतनी पावर यहां से जनरेट करना आसान नहीं होता, लेकिन नवाज की ये खासियत है। और हम नीचे चलते हैं ग्राउंड में और जानते हैं कि महक किससे बात कर रही हैं। कंपनीज जो इस नेशनल T20 का बहुत बड़ा स्पॉन्सर है और पार्टनर भी है, उसके जो 128 तक पहुंचा है रावलपिंडी। और चलते हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एज ग्रुप ऑफ कंपनीज जो इस नेशनल T20 का बहुत बड़ा स्पॉन्सर और पार्टनर भी है, और वो जनरली क्रिकेट और जो बाकी स्पोर्ट्स हैं पाकिस्तान में उसको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्रमोट करते हैं। उनके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर रमज़ान अली। रमज़ान साहब, हमें ज़रा डिटेल में बताएं कि एज ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है उसकी पार्टनरशिप स्पोर्ट्स के बारे में।
थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, एज ग्रुप ये है कि इससे पहले भी हम स्पॉन्सर करते हैं, ख़ासतौर पर हमारा एक प्लेटफॉर्म है महारत के नाम से। इसमें जितने भी टैलेंटेड पाकिस्तान के होते हैं, ख़ासतौर पर हमने जो है ना उसमें बॉक्सिंग में और हॉकी में, बाकी स्पोर्ट्स में हम जो है ना लोगों को सपोर्ट करते हैं, उसमें स्पॉन्सर वगैरह करते हैं। और क्रिकेट में द फर्स्ट टाइम वी हेयर इंशाल्लाह ताला हमारी आगे भी इसी तरह प्लान है कि फ्यूचर में अभी डोमेस्टिक क्रिकेट को सपोर्ट करें, इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे भी हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा, हमें थोड़ा सा बताएं कि जो क्रिकेट को मिला के भी और क्रिकेट के अलावा भी जो बाकी स्पोर्ट्स हैं, वो आपकी अपकमिंग कौन सी कोलैबोरेशंस हैं स्पोर्ट्स में जो एज ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ होंगी? अभी हमारे कोलैबोरेशन टू बी ऑनेस्ट बाकी इनके साथ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हमारे स्पोर्ट्स के साथ है, क्रिकेट के साथ, PCB के साथ है। अभी आगे इंशाल्लाह डोमेस्टिक बाद इंटरनेशनल का भी हमारा प्लान है, इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे भी हम स्पॉन्सर करेंगे। अच्छा, जनरली हमें थोड़ा सा फिल इन करें एज ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में और उनके जो जनरली प्रोजेक्ट्स होते हैं। एज ग्रुप ऑफ कंपनी बेसिकली हमारी 4 कंपनीज है, जिसमें स्ट्रेस मार्केटिंग है, realtyspeaker.com है, देन एज कॉन्ट्रैक्टर एंड चिनार स्टूडियो। बेसिकली वी आर बेसिकली वर्किंग इन KP। हमारे KP मतलब मुख्तलिफ मॉल है, 091 मॉल है, फ्लोरेंजा, एज टावर जो कि KP का फर्स्ट हाई राइज है, और इसके अलावा मॉल ऑफ हंग जो कहाड़ के पास है, वहाँ पर हम बना रहे हैं। हमारा मरी में प्रोजेक्ट्स है। दैन वी हैव अ वेरी बिग सोसाइटी इन AACT, यहाँ पर उनके भी स्पॉन्सर है वो, इस इन DA खान। इसके अलावा हमारा भी अपकमिंग एक सोसाइटी आ रही है जो कि AH रेजिडेंशियल के नाम पे इस्लामाबाद में। Okay, very nice. And lastly, कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं? Well, we are supporting every team because all of you. Well, thank you so much for speaking to us and enjoy the game. Okay, thank you so much. It's back to the comms box now. अपने 3 गेंदों को खामोशी से गुजरवाए, लेकिन इससे पिछले 2 ओवर में 34 रन बन चुके हैं। रावलपिंडी के फैंस दोबारा से उम्मीदें जगा गए होंगे, जिस दौरान 6 चौके और 1 छक्का लगा। लेकिन ये इंटरेस्टिंग डिसीजन है आफ्ताब के साथ कंटिन्यू करने का। इनके पास अभी भी दहानी और सोहेल के ऑप्शन है, मजमूई तौर पर 3 ओवर ऑफर कर सकते हैं। इनटू द पिच, और ये अच्छा कमबैक है नौजवान आफ्ताब का। बॉलिंग ऑप्शंस की बात कर रहे थे तो धानी का 1 ओवर बचा है और धानी के 2 ओवर बचे हैं। सोहेल खान का 1 ओवर बचा है। आरिफ याकूब, दानिश अजीज के 2-2 ओवर बचे हैं, लेकिन क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं तो दानिश को तो ना आजमाया जा सके, लेकिन क्योंकि आरिफ के पास गूगली का ऑप्शन है, अगर ज़रूरत पड़े तो कप्तान उनकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन रावलपिंडी ने अच्छा कमबैक किया, लगता है ये मुकाबला अच्छा होगा। 4 ओवर्स और 2 गेंदें बची हैं। बेहतरीन ओवर, खूबसूरत कमबैक आफ्ताब का। और करोड़ों का सवाल है शाह फैसल, जवाब में आपको अगर सही भी देंगे तो मैं करोड़ ऑफर तो नहीं कर सकूंगा, लेकिन अगर आप कप्तान हो तो किसको इनवाइट करेंगे अगले ओवर के लिए? मुझे तो विकेट अगर चाहिए तो मैं आरिफ याकूब को यहाँ बॉल दूंगा और उनके लिए फील्ड सेट करूंगा जैसे कि किसी ऑफ स्पिनर के लिए करते हैं, और क्योंकि उनकी गुगली अच्छा टर्न होती है और वहां से वो अगर लेग ब्रेक करके बैट्समैन को ब्लफ करने में कामयाब हो सकते हैं, एक ऑप्शन उनके पास मौजूद रहेगा। तो ये ज़रूर है, लेग स्पिनर कप्तान का बहुत दारोमदार होता है लेग स्पिनर से अच्छी परफॉर्मेंस लेने का। लेकिन इस बीचों बीच बेहतरीन ओवर कर दिया है अपने बाउंस के साथ। आफ्ताब ने बांध के रखा नवाज को, 3 रन दिए, 4 ओवर बाकी, 131 पे 3। रावलपिंडी के ये तनहा जंगजू बने हैं उमर अम्मी, जो कि जब आए थे वो सब मुश्किलात आन पड़ी थी। 24 पे 2 खिलाड़ी आउट हुए थे, लेकिन उन्होंने पहले स्पिनर्स के खिलाफ जान फिशानी के साथ मुकाबला किया, सुहेल के खिलाफ गेंद को डिस्पैच किया और फिर ये आया मैजिकल ओवर असद शफीक का। 3 चौकों के साथ उनका इस्तकबाल किया, बैकफुट से खूबसूरत अंदाज से गैप तलाश करते रहे और अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। 131 तक 3 तक पहुंचाने के लिए उमर अमीन क्रीज पर मौजूद एंड स्टेज सेट आखिरी 4 ओवर्स के लिए। Yeah, that's the story so far. 31 for 2 in the first 6 overs and then 97 for 1. And they lost just 1 wicket. Karachi seems like missing the ploy here. Umar Amin has been brilliant, playing a captain's knock, pushing for 2, easily done. I'm not sure what Asad Shafiq has been thinking, because right now this partnership is 39 of 20.
They're taking away all the momentum Karachi had early on. They kept the batters under check, but now the momentum has shifted towards Rawalpindi. Dhani just gave away 15. No worries there. You can question some tactical decisions from Asad Shafiq. We've got former Test captain Salman Butt. Is that so? Thank you, Marina. Yes, Karachi have themselves to blame, particularly the captain, because when the ball was swinging in the power play, Sohail Khan and both Dhani were bowling magnificently, troubling the batters, swinging the ball, pace and bounce there. Why would you change him and bring a spinner on when both the batters were having trouble? Then drop catch, unfortunately, that too by the captain. And then icing on the cake, he himself bowls himself over in front of a batter who is set, and they take him to the cleaners, giving away around 19 runs. Creating some room, slashed it. It will be a hard task for the fielder. Another boundary. Nawaz is playing a very handy innings. 24, 25 actually now of just 12 deliveries. He's putting a foot down, Umar, in the anchor role. Yes, Nawaz doing what Nawaz should be doing, because Umar Amin has laid the platform and allowed him this freedom to come in and take the game head on, because wickets are in hand, only 4 overs to go after this, and Nawaz can be himself, and he's doing that, 25 of 12. On the other hand, Umar 60 of 39, also in good time, keeping in mind the fact that when he came in they were in early trouble. 2 were down quickly and the ball was swinging all over the place, and came in, weathered the storm, and then come out with the goods. Goes aerial, sliced it, but it'll be safe. And push for the second one. No worries there. Some misfield. Yeah, I think again, when we talk about the tactical decisions, obviously when 2 left-handers are on the crease, you do feel a bit reluctant with your leg spinners of the left armers, but when you have genuine spinners who are getting perches out of the surface, you do need to realize. It's easy pickings. Nawaz doing the ball watching, and then he ran so far across that there could have been an opportunity of third. Umar Amin was looking for the third, but Nawaz had no clue because he was looking somewhere else. Yeah, I was thinking to go, just ramping it towards the shot fine, but adjusted his shot. Good from Dhani. He kept his eyes on it in the last moment, changed the line of the delivery. Karachi might think that they are leaking way too many runs, because in the start they had an iron grip over Rawalpindi batters. Look at that, 19 and Nawaz 28. That's the contribution of this partnership. Good delivery, he got away with it, Dhani. 17 gone, 1 for 1 for 3. The game is on. Got decent crowd here. Second semi-final as well. Earlier on, it was Peshawar and Abbottabad. Weekend is here, so you might come out and enjoy live cricket, watching your favorite stars in front of your eyes. Family time, young ones coming in. That's a really good sign. The troubling thing is that being such an experienced cricketer, taking into account this theory of bowling with the matchups, that is the reason why captain came himself to bowl, because there was left-handers playing and they both took him to the cleaners, and this is not sensible. You bowl a regular bowler. See, Danish is in great form and he's only bowled 2 overs, given away 12 runs, taken 1 wicket, and then Asad Shafiq brings himself on at a time when they required a regular bowler, an in-form bowler to bowl, and who had 2 overs there. Especially when they were turning the ball.
Right now, the man in form, Sohail Khan, starts with a slow one. It's nicely dealt with, but just for a single. It's not going to be easy to put him away for runs. The rhythm with which he bowled the new ball was superb. Yes, Sohail Khan has been special today, and that was a fast bowler's googly behind the hand, deceiving Nawaz. We have seen fielders using towels, so that means there is dew, the ball is getting wet. So this might be good news for Karachi. And definitely dew helps the batters. And it's difficult for the fielders and the bowlers. It's high in the air. Someone needs to get underneath it. I think it's Umair bin Yusuf. Oh, you don't expect that of him. Another one drop down. Karachi, what's happening with you in the field? Well, this one was skied up. Sohail Khan must be furious inside. He's not showing anything. But I know, because having played along with him, he won't be happy. He's bowled his heart out today. Umar Amin, the set better, trying to hit it out of the park, skied it, and Umair bin Yusuf had all the time in the world, and he spilled a regulation chance by his standards. Slow one, but we'll have to bowl that again. It was a wide. How costly that can be, because he's been playing a really magnificent knock, 41 of 62, taking all the responsibility as a captain. And some changes in the batting lineup. Haider Ali was promoted, but he never clicked. Sohail Khan, he knows the art of taking wickets, but the fielders, they need to support him. So Karachi have been missing chances tonight, and they have cost them dearly. And this one, Umar Amin pulls, and this time Anwar Ali, one of the best in the business when you talk about fielding anywhere in the field. He stops a certain boundary and showing the young boys how it should be done. Anwar Ali, he is a wonderful athlete. And had Karachi taken their chances earlier, things would have been different. And it all started when Captain Asad Shafiq, he is the one who was under this catch. Dhani was bowling to Zishan, who skied one, and he was in the circle, and look at that. Straightforward chance going down, and then Umar Amin, after he scores 60, and this time Umair bin Yusuf, and both the fielders making same mistake, falling down, crashing to the ground, not maintaining balance. And this one is over covers and will go for 6. This was a great connection by Nawaz. And he is playing a wonderful hand, a cameo. It's more than a cameo now. He moves to 29. Or 35 rather. He moves to 35 of 16 balls. And 150 up for Pindi team, who were in trouble earlier, and 150 seemed too far away. But now they can climb up to 180 the way things are going. Yeah, clears the front leg. Width given and width accepted. When he does that, he actually opens up, so you need to push the ball further away from him. Slow bouncer. And it's stepped dead. Can you believe it? Soft dismissal. Nawaz, what have you done? It's all credit to Sohail Khan, and this is his new style. When he gets a batter out, he moves to him and he tells him, it's all right, nothing worse has happened. I've had you before. And that is wonderful. That is outstanding from a senior bowler. Credit to him. The slower one deceived Nawaz completely, and who in the end just gave a very simple catch to point. But I love what I saw from Sohail Khan. This is wonderful. He just keeps everybody calm. And firstly, the most disturbed by the disaster, the batter, he goes to him and tells him everything is fine, all is well. Gone on 35. Just when Rawalpindi was starting to accelerate. 4 down now, 152. Yeah, this might hurt Rawalpindi, because he was pushing that gas. Needed that acceleration. They needed Nawaz out
in the middle with Umar. Jandad has got some work to do alongside the captain. But Sohail Khan, as I said, he knows how to take wickets. Disguise that slower delivery beautifully. And I think Nawaz never picked it up because he tried to ramp it. 2 for 20. One more delivery. He went after it. Just a single though. Outstanding spell of fast bowling. Sohail Khan doing it with the new ball, then with the old ball, and that too a wet old ball because there's dew out there. So he has finished a great spell, taking 2 for 21 of his 4 overs and providing his team a very important tempo breaker, I'll say that. And this is the wicket. And Khurram Manzoor takes the easy catch. Well, Sohail Khan, wonderfully bowled. And love to see the way he swung the ball earlier. And now 2 overs remain. And if Karachi can pick up another couple of wickets and slow down the run rate, keep them under 170, I think they would have done a good job. Yeah, 2 paces now available for Asad. Anwar Ali and Dhani. And it's not going to be easy to score off Anwar Ali with his slow ones. Let's see what Dhani can do for Karachi Whites. Low full toss. Trying to slash it. Missed it. Well, Dhani was quick to the ball, but he didn't know where to throw it. And as the dew comes down and the night gets chillier, Tapalti is something that keeps you warm. There are 4 people there and many in the line, I suppose, which we can't see. Third comes in. They've pushed back mid-off. Long on, deep mid-wicket and deep fine. Angling that, trying to bowl Yorkers, cramping him for room. Almost a replay of the first delivery. An absolute copy. Same delivery, same batter. And Dhani runs after the ball. But this time, the only thing that was differing was that he knew where to throw the ball. Look at this, angling the ball in and the batter missing it. Just be careful with the dot balls. Jahandad needs to rotate strike and give it to the skipper on the other end who's on 63. They need to capitalize these overs, remaining ones. That's beautifully bowled and well taken by Azam. What a catch and what a delivery. Everything is working in favor of Karachi now. What a take that from Azam Khan. Diving to his right, showing his athleticism. That's a great take. I tell you, inside edges are the hardest to take off the fast bowlers. Just have a look how mighty Azam goes to his right side. And he reminds us of the great Moin Khan, because he used to take catches like these with his one hand. And I remember one of the catches he took against Australia. I think it was Mark Waugh back in '99. And this catch resembles to that catch. And wonderful to see a son replicating his great father. Yeah, Rawalpindi trembling now. Jahandad gone back, scoring 153 for 5. Dhani, that is some brilliant death bowling. 3 deliveries, right on money, cramping him for room, Yorkers, some good pace. It's hard for anyone, any better. Razaul Mustafa, he walks in and he is up against some serious challenge. Rawalpindi have lost the momentum by losing a couple of wickets, and Karachi have packed them back with some great bowling and good catching. Goes hard, no timing on it. But that brings Umar Amin to strike. 63 or 42 with brilliant death bowling. That's what you expect of Dhani. Repeating those line and length, creating problems. You can see that catch and enjoy it as many times as you want. You'll never get bored of this. Azam Khan diving to his right.
He's not known for his acrobatics, but this was wonderful. And he's very nonchalant. Like, it was not a big deal for him. Yeah, and that is the best thing about his attitude. While he's on a cricket field, whatever he does, it's like, no problem, it's normal. This one could be a no ball. The umpires will inquire about that. Seemed to be an awkward delivery. And Umar Amin hit him on the splice of his bat. And maybe the umpires are going to check it with the third umpire. And this could be a free hit. An awkward height for the batter, because you don't expect such a thing, such a ball. At this point of time, there's nothing wrong with the foot. Then here we see Umar Amin, and it is just borderline. So it all depends. It will be umpire's call. Yeah, it's very close. I think it might be a no ball. Yes, it is. So free hit provided, gifted by Dhani to Umar Amin, who's well settled on 63. Good thing for Karachi, the new man is facing. It's Razaul Mustafa taking strike. He takes up the challenge. It doesn't matter. Pushing for the second. No, it's not available. It's Anwar Ali there, a safe hand and a quick mover with a good arm. So there was no more than one over there, unless something dramatic took place. So Dhani is also bowled well, and he would like to close his spell here, not with a boundary. 2 for 27 so far. Just conceding over 6 till now. Finds a connection. It's sailing away. It's 6. Spoiling a brilliant over. Umar Amin moves to 70. That was a slower one from Dhani, short of length, and Umar Amin, the kind of form he is in, he is well set on 70 now with this wonderful hit over mid-wicket for 6. It was well timed. Look at this. Didn't try to overhit it, just made sure that his body pivoted around and he hit it with a straightish bat. A wonderful cricketing stroke that by Umar Amin. And he has shown his class tonight. Under pressure, he has delivered. 163, just one more over to go. 6 legal deliveries, that is. I think Rawalpindi will be happy. They did mention 170. If only they can cross it. But when you look at Karachi, you see a lot of options delivering every now and then. But again, I think some mediocre bowling in between overs, that has done the trick. I think some not so good decision making by the captain, bringing himself on, not bowling Danish Aziz, who's been taking wickets in the last few games. He hasn't bowled full quota tonight. He's only bowled 2 overs, taken a wicket, given away 12 runs only. And Arif Yaqub, yes, he went for a couple of 6s, but he is the best bowler in the tournament. And he should have been backed, given the confidence to bowl another over. Aftab with the last over, gets away on the first delivery. And try to ramp it, Raza. Umar Amin is there, he's just hit a 6, he's batting on 70. Why not take a single and let the man in charge do the finishing? That is poor by Razaul Mustafa. He needs to rethink his strategy. Captain is there on 70. He needs to give the strike to the captain. I think that's now has been communicated by Umar to Raza. He had a word with him. But no, he's going to play his own cricket. Again, swing and a miss. Marina, this is selfish for the team. This is not ideal. Look, Umar Amin has again walked up to him. What are you doing, young man? Just have a look. When he is beaten, definitely Umar Amin wanted to run, but then he had to go back. Game awareness. It's very important
Deep in the crease, go straight. But finally now Umar is on strike. He's got 2 deliveries to hit big. Yeah, half the over to go. Umar Amin on strike, and if he can get a couple of boundaries here and push the score past 170, then Pindi will have a decent total to bowl at. Although there is dew, although the ball will be wet when Pindi come on to bowl, but they have got a couple of faster men who can be quick off the surface and can move the ball around while it's not very wet, especially when it's new. Yeah, Jahandad has been decent. Kashif Ali walks back in the playing 11. They've got spinners, Nawaz, Mubassir and Mehran. And there is something for the spinners in this surface. Just need to be very clear in terms of tactical decisions, planning against those Karachi batters. 3 more deliveries now. So the fielding now suggests that he will be only bowling on the offside, nothing short and nothing on the legs or the middle stump, because he has his square leg and fine leg up in the circle. So third man on point, go back, deep cover, a short cover and a long off. And definitely this is where he's going to bowl, and he'll have a very narrow margin, because if he pitches it up, it allows the batter to swing his bat freely. And if he goes too closer to the line, then there's always a danger of a wide ball, which just happened. Yeah, it's a tough task. But that is what is needed from Aftab. The captain has asked for it, and that's a good plan. And Umar Amin can do himself a favor, stand on the off stump, because this definitely will be aimed towards this line, the indicator for the wide ball. High up in the air, Azam wants it. Won't get there. And they ran well, picking up a couple. I think Umar Amin can definitely use the pace and try and cut it in the gap, because it will be very hard if he times it well for the fielders to cut it if the ball goes in the gap, rather than creating a new stroke from outside the off stump. The angle will not allow him to take it towards mid-wicket, and there is a deep mid-wicket over there as well. Just the one man patrolling the leg side boundary, and that is right on the cow corner. Even if he wants to do that, he can shuffle towards the offside and try to go over mid-on or straighter. That's a safer option. And he does that, and it picks up nicely. No man patrolling that boundary. Good batting, good presence of mind from Umar. He's exactly done what we spoke about. Went onto the offside and created the stroke from outside off stump, taking the ball on his thigh pad and flicking it over the 2 men in the ring. Just watch that, how far across he goes, leaving the 3 stumps behind for the bowler to see. And then he plays a wonderful stroke. He's beating the bowler by his experience. Last ball now. 171 on board. Where are you going, Umar Amin? And again, that is huge. It sailed over into the stands. Finishing in style, and he took off the challenge of Aftab. Yes, Umar Amin showing his class, showing why he played for Pakistan a few years back and what sort of a player he is. He scores 82, a captain's knock under pressure. Earlier his side was definitely under pressure. The kind of bowling Sohail Khan and Dhani put up earlier. Pindi was struggling, but came in the captain and played a brilliant knock. Now Karachi would require 178 to win this game at 8.9 runs per over, and that will require Karachi batters to do something special. Although there is dew, but definitely runs on the board in a big game are never easy to get. Yeah, Rawalpindi will be very happy with 178. They think they might have a chance to upset Karachi Whites in the semis. But they need to bowl well, they need to field well as well. And we've already seen today earlier a heavyweight beaten in a knockout, and that was Peshawar. And here, Karachi were the team who were looking better when the game started. But now Rawalpindi have a decent total. In a knockout game, 178 is a good total. And on this pitch, we have seen fast bowlers being effective. And Rawalpindi have a couple of young fast bowlers who can be very effective.
So here is the batting card. 82 to Umar Amin, the highlight of the innings. Then Nawaz played a brilliant cameo, 35 of 17. And Zishan earlier playing the supporting act, 32 of 34. Took a lot of time, but maybe that was necessary then. Karachi White started off really well with Suhail Khan with the new ball and Dhani sharing it. 2 for each. Danish and Anwar came in, settled things. Danish getting 1, but Arif and Danish probably underbowled. Aftab and Asad were expensive. Managed to get 5 wickets. Let's go downstairs to Mehak, who has Suhail Khan with her. I've got one of the star bowlers from the Karachi team here with me. It is Suhail Khan. Suhail, हमने देखा कि शुरू में आपने जो पिंडी के बैटर्स थे उनको काफ़ी लिमिट करके रखा हुआ था और यानी कि उनके लिए रन्स बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। हाँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिल्कुल मैं ज़रा मतलब है कि तकरीबन पाकिस्तान के डोमेस्टिक के जितनी भी हमारे प्लेयर हैं उन लोगों को मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करता रहता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी क्रिकेट के लिए पाकिस्तान से अकेला हर जगह, दुनिया की हर जगह मैं खेल चुका हूँ, तो थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है मेरे। और दूसरी बात ये कि क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त क्रिकेट हो रही है, मगर थोड़ी सी मेरे ख्याल से कि थोड़ी एम्पायरिंग अच्छी हो जाए ना तो क्रिकेट बहुत बेहतर हो रही है। मेरे ख्याल से थोड़ी सी उस पर अगर बेहतर हो जाए तो Definitely, we'll take that into account. लेकिन अच्छा आपकी जो बॉल थी वो काफ़ी स्विंग भी कर रही थी, हमने देखा था, and it was really entertaining to watch. तो थोड़ा उसके बारे में भी बताएं। स्विंग के बारे में, जो स्विंग, जो आपकी बॉल स्विंग जी बिल्कुल। देखें मतलब ये मेरे कुछ कोचेज़ है, ठीक है, और मैं बचपन से उन लोगों के साथ अभी तक मैं उससे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि मैंने उन लोगों को छोड़ा है या मैं उन लोगों का नाम लेता हूँ। मैं अपनी बॉलिंग जब भी करता हूं तो बॉलिंग मैं उसकी वीडियो बना के अपने कोचेज़ों के साथ मैं शेयर करता हूं। मैं बार बार उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, तो अच्छा नहीं लगता, मगर ये कि उससे डिस्कस करता हूं। जब तक मैं खेलूंगा मैं उन लोगों से बात करूंगा और काफ़ी चीज़ें मैं उन लोगों से सीखता हूं। इस मैच के ऊपर भी तकरीबन मेरी आज और कल 2 दिन मेरे कोच से बात हुई है, और कोच के अगर नाम मैं लूँ तो मतलब ये कोई बुरा तो नहीं मानेगा, राशिद लतीफ़ की बात कर रहा हूँ, उमर रशीद की बात कर रहा हूँ, सारी रशीद है तो दरअसल मैं उन लोगों से मैं बात करता रहता हूँ, ठीक है। मोइंदर कुमार से मैंने बात की है परसों, एक मेरा पुराना कोच जहाँ मैं पहली बार फर्स्ट क्लास खेल रहा था, तो उससे मेरी बात हुई थी और उसने मुझे बोला कि बेटा अगर तुम थोड़ा सा यूँ करो तो उससे आपकी काफ़ी बेहतरी आई। और आज वो रिज़ल्ट बिल्कुल आप लोगों के सामने है कि मेरा बॉल काफ़ी स्विंग कर रहा था, सीम भी कर रहा था, और दरअसल मैं बस एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, और कोशिश भी करता हूँ कि डोमेस्टिक में जितने मेरे पास बॉलर है हर शहर के हो, तो जो भी आते हैं तो मैं मतलब उसकी जो भी मैं गलतियाँ देखता हूँ उन लोगों को भरपूर अपनी कोशिश करता हूं कि उन लोगों की चीजें सिखाऊं, और काफी बेहतर हो गए लड़के। Chile, very nice. Thank you so much for speaking to us. Well bowled and all the best for the rest of the game. Thank you, thank you. It's back to the comms box now. That was the great Suhail Khan. He started off really well. This was the first one to fall. Haider Ali again out of form, clueless. Easy catch to Ahmad Alam. This one, another one skied but dropped by the skipper himself. Some good bowling, teasing length, but the attack continued with Ishan, and this was brilliant bowling. Yasir had no clue against Arif. Umar Amin took the responsibility, took the front seat, and he speared and anchored this innings. Brilliant batting, good presence of the mind, good use of the slower delivery as well from Karachi. Dhani on this occasion was with the easiest catches. Again Nawaz, he came in with all guns blazing. Umar Amin got to his 50. This partnership was very crucial, set the right momentum for Rawalpindi. But Suhail Khan, with all experience, tried to create chances, but went down a begging. This was a big one. The momentum shifted back towards Karachi with this wicket. Nawaz gone, and then brilliant death bowling from Dhani, trying in the Yorkers. Good take from Azam, but the attack continued. Umar Amin played one great innings when it was actually required. 178 is the target for Karachi. They will have to do some work, but Rawalpindi have their options open. We'll take a break and we will join you with the chase on the other end. It's gone high in the air. Should be a chance. There is a chance, and it's taken. Yeah, he wanted to do that. He'll get a 6 and probably will ease a little bit.
और चले जाएंगे, कश्तियां जला दी थी यासिर ने. Down the wicket, big hit. That's gone for a maximum. Improvise किया है ज़िशान ने और आउट हो गए. Oh, picked up nicely. कप्तान ने 33 गेंदों पे यादगार 50 मुकम्मल किए सेमीफाइनल में. Right then, we are back with the chase from Karachi end. It's Rawalpindi posting a target of 177 for Karachi. And it's over to our commentators, Shah Faisal. Thank you, Rehan. Well, maybe a new career looming for you. Well done. It's easy, right? Yeah, Rawalpindi in a huddle. Will be very happy with the total. They'll be very happy with the total they got. Just one big push needed to get into that big final tomorrow. Send the home team packing. That could be the biggest incentive, the biggest motivation to prolific openers, the experienced Khurram Manzoor and the young and dynamic Ahmad Alam. That is a really, really good opening pair for Karachi. And power play will set the tone for this run chase. Earlier on, we saw wonderful run chase from Abbottabad against the hot favorites Peshawar, where they were chasing a similar total, 170 to be precise. And they had a wonderful power play. They had their wits about themselves. They planned their innings in the second phase. Something similar that would be needed from Karachi. But Rawalpindi might have other ideas. We're in for a cracking evening of T20 cricket here. We've seen some fabulous entertainment, and I'm sure next 20 overs will bring a lot more. .9 runs an over. You bat well, you get there. That's how Abbottabad showed others. Under lights, who's going to swing this ball here like Sohail Khan? We'll have to wait and see. But surely a brilliant job done by the Rawalpindi captain to score those runs, stay till the end, and make sure that the side in the all-important game gets a very competitive total. 178 to win. Can Karachi do that in front of home crowd, whatever it is out here? They've been the more expected side to win in this match, but this performance, after winning the toss and batting first in a knockout, has been good. One slip in position, Kashif Ali will take that ball. He can move it around, he can swing it, and
For Karachi Whites, the usual suspects. It will be Khurram Manzoor on strike, along with him, the young talented Ahmad Alam. Starting from that far end, University Road end. And the umpire says play. 178 to get. Right arm over the wicket. With that shot, make that 174 to get. Good start, positive start from Manzoor. He does make a statement first up. What a shot from Khurram Manzoor. Slightly back of a length, angling in. Khurram picked the length so quickly and absolutely smashed it. There was a sweeper out there just about 15 yards away from that ball and he couldn't make it. That is a wonderful start for Karachi. We saw Peshawar faltered with their bowling lengths and lines, so this is a good track. If you bowl well, you'll be rewarded, otherwise you can go for runs. Again, this is a wild swing, another boundary. This was more of a slog. He didn't quite get it to the meat of the bat, but he's got a boundary, so it's just really not 100% wow kind of shot, but 4. Well, one thing is for sure, Khurram Manzoor is really determined to tell Kashif Ali who the boss is. Yep, it's an ugly hoik, and that inward movement nowhere near the middle of the bat, but races away. Now Kashif will have to be vigilant what he wants to do. He could really lose it here. Oh, wow. That is from right from the middle of the bat. What a shot of authority. Bang the gloves between the two. Absolute beauty from Khurram Manzoor. I think he knows that inward angle is coming from Kashif Ali. He sets himself up deep in the crease and bang, that went miles. Yeah, what he's trying to do is to deal with that swing in that way. Go very, very deep. His back foot is inches away from the stumps. He's allowing himself that extra bit of time to get underneath the ball. And since he's going deep in the crease, the ball is missing the length, so to speak. Again, now they've got protection there. Oh, gone through. It's gone right through that fielder there. This is absolute carnage. 27 in the run rate phase. 18 already on the board. Zishan Malik. The crowd is absolutely on their feet. Rawalpindi have been rattled. So is Kashif Ali. He bowled length. He got carted away. He bowled full. He went for runs. Doesn't know where he want to bowl. What is happening with the field? He got a short third in, a backward point, cover, extra cover. Well, mid-on is up as well. Mid-off is up. Mid-wicket and square leg are back. If Khurram strikes it, it's not going to stay in the park. Short ball, top edge. This is a chance. You gotta take it. Gotta take it. And yes, Mehran Mumtaz it is, isn't it? And one shot too many from Khurram Manzoor. Wasn't in control of it because of the shorter delivery. And he went spank at it, more height. That has silenced the crowd. Mehran celebrated. And Kashif had the last laugh. Khurram Manzoor went berserk. Is that close? Hold on, say some drama. What drama we're having here at the National Bank Stadium. Probably umpire would want to see the first point of contact with the ground, which is okay. Kashif Ali will breathe a sigh of relief, so will Rawalpindi, and Khurram will continue his walk. That's important. You take those high catches. Karachi missed 2. Pindi gets 1 opportunity and they take it. Or maybe this was the gamble, the decision from the team that one will go crazy and try to hit as many as possible. If it works, you're sorted in the power play. If you lose a wicket, then you go to plan B.
He goes for a quick fire. 18. And it's 18 for 1. Umair bin Yusuf walks in. Another very, very talented and very, very explosive batter. We've seen his prowess in the middle order in this tournament. Most of his career, he's opened the innings. Coming ahead of Asad Shafiq at number 3. And that's the moment when Khurram Manzoor lost his wicket. You can always argue that he'd got the runs for the over. Did he really need to go after every delivery? He's the experienced man. He knew what he was doing. Just get a feeling, we'll have a look at the replay again, that he took his eyes off while playing the shot. Ooh, that's some zip and bounce. See where the keeper catches that ball. Well, get back to the wicket. Look at the shot from Khurram Manzoor. Just got a feeling his face was to a square leg when he had the impact. Yeah, he's just put everything in it, but got the top part. An excellent take from Mehran as well. Pressure catch. Rawalpindi was rattled by that assault from Khurram Manzoor. And Mehran did really well. Such a funny game, cricket. The last ball from Kashif zipped through. And when Khurram Manzoor was batting, he was looking ordinary the way Khurram attacked him. Khurram is 6'2" or 3". Umair bin Yusuf is a different height, so I think he had a better reach to that bowling, and it was a different ball. Very good ball, the last one. Otherwise, he was bowling in the stumps and in the slot, really. Some of them were good horizontal bat pulls, but I think that Khurram Manzoor just got carried away. He did. Just the adrenaline rush. He just couldn't control that, even for such an experienced man. And that last delivery from Kashif was also an adrenaline rush, riding on the high of dismissing Khurram. Bilawal Bhatti. That was a lazy shot. No foot movement, just swinging far out. Keep an eye on this man. Well, I better not say anything good about him, because twice I've done that and I've jinxed him when he was looking $1 million. So let's just watch this unfold. Bilawal Bhatti, we know that he'll keep the ball within the stumps. He'll have to manufacture a shot. Some of the dignitaries were enjoying the match. One of them had an interview with Mehak a while ago. Decent crowd in. Saturday evening, weekend, beautiful weather, exhilarating cricket. Sanity prevails. Proper defensive shot, just to get an idea, gauge what's happening out there as a batter. You know it that he will rely on proper cricketing shots. This one didn't bounce as much. One hand off the handle. Good crowd in today. And they've come in big numbers. It's the semi-final to begin with, yes, of course. And it's the weekend. That's number 2. And it's the home team. That's the third thing. That's the only stands that have been open for them, so they're quite well populated today. And they make a lot of noise. Sure, they're small in numbers, but they do make a lot of noise. And if Azam Khan came into the bat, you would see he'll get the largest cheer. Yeah, you think and you get a feeling Ahmad has missed out on that. It was wide and was short.
That's a good comeback from Rawalpindi. It was short, wide. Ahmad up on his tiptoes. Couldn't really time it. Was looking to hit it too hard. We've seen throughout the day the batters weren't trying to bludgeon it. They were the ones who got more consistent success. Talk of Umar Amin. That's a shot. Straight over the bowler and go fetch it. Take that, Bilawal Bhatti. 2 steps out and bang. Ahmad Alam, you can't keep this man tied for too long. Have a look. 1, 2, bang. Straight over his head. The safest place in the ground to hit. Look at it, soar. Almost into the side screen. This man is not a big man, but he does pack a punch. Kashif Bhatti back into the attack. 1 for 18 in his first over. He's got Umair on strike. Good to see a slip in there for Kashif Ali. That's the first over. Khurram Manzoor on a mission. It was a bit of a slog after the first boundary, but this was the best of the lot. He wasn't going to stop until he did this. Nice take. And this was some comeback. Look at that ball fly. Kashif Ali's really responded well to the assault that he was under from Khurram Manzoor. Takes a lot of character. There's a lot of skill about Kashif Ali and a lot of character. Good to see. Hasn't got hold, but it'll be safe. Only because he didn't get hold of it. It didn't reach that fielder deep backward square leg. Mubassir Khan. We've seen Umair get out in similar fashion quite a few times. Look at that planted front foot. Wasn't able to drag it back and transfer the weight back. And when that ball gets big from someone like Kashif, who's taller, he's not happy with the fielder. He thought he should have been running in with him. But yeah, Umair has shown a weakness in that area. No ball and fetch it again. Maximum. Now that's something you don't want to do in the power play. Ball on the leg stump and a no ball, you never want to do that. Wow. Ahmad Alam is some player. You may feel that the angle was working for him, but his initial movement was right across his stumps. Double check on the foot fault. It is well over. But the beauty was in Ahmad Alam. Look, the way he just walked right in front of his stumps. Just helped it on its way. Beautiful pickup. So he's got 7 runs off that ball and the ball still is valid and remains. He's got to bowl it again. This is a free hit. He can go anywhere he likes with this. And he goes over cover. Might get a boundary, yes. He's got enough on it. So that's 1 ball and 11 runs. I was about to say this is his favorite area, but then I realized there's quite a few of his areas where we see him strike regularly. This time, just opens his body up a little bit, looking to open that offside for him. The front leg was cleared, and he's got beautiful, uncomplicated swing. Probably this not hitting the middle, but look, the intention was there to open up that offside, up and over. .12 already from the over. 3 balls to go. Deep mid wicket is positioned now and third comes in.
Kashif Ali once again. Oh, that's a good ball. Just got into a very tangled position there, Ahmad Alam. Kashif has that ability to bring the ball in, and it came in with the seam. There you go, it kept coming at Ahmad, and he got himself in a tangle. That bounce as well. This has been a very, very good cricketing pitch. You have to admire the ground staff here, the curators. We've had so much cricket, but they've come up with this beauty for semi-final day. I mean, it's incredible. We've seen some wonderful cricket. Spin bowling, pace bowling, stroke play, you name it. Oh. Good ball. Don't know how he played. That was in the air for a while. But since they're hitting the ball hard, the circle fielders are coming in from the 30-yard marker. It's a bit of a distance there. This is what Ahmad has shown as well. He's kind of a laid-back character, or that's the feeling we get from here. You see, that was a nothing shot. What was he trying to do? Both his feet parallel to the stumps. He's trying to beat third. He's just come in, Rawalpindi. Nevertheless, it's been a good over for Karachi Whites. 12 off it, but good comeback with 3 dots. 36 for 1. Probably the best crowd of the tournament. Like I said, it's a gorgeous Saturday evening weekend, and the entertainment is at a premium here. Good to see all those people, especially the kids. You look at the run rate, it's 12 at the moment, and the required is 8.35. So that 18-run over, the first one where they lost Khurram Manzoor, helped them to stay ahead. Can they maintain that? They still have a cushion of 4. Spin in the power play. Just the 4th over, Mohammad Nawaz. This could be a tricky one. How does Umair and Ahmad deal with the experience of Nawaz? Also want to see where does he go with the 2 fielders in the deep. One is a long off, the captain himself, and he's got a deep mid-wicket for the 2 right-handers. I want to see if they keep the same field for Ahmad as well, because Ahmad likes to go inside out over extra cover. But for now, it's Umair on strike. Oh, this is going to be 2. At least 2. Easy 2. Mehran has to come across all the way from deep mid and cuts it off. Yeah, that was outside the off stump. Umair was looking to fetch it. There are huge gaps in the outfield on the onside. 2 fielders in the ring are behind square. So just the mid-on. They see just the mid-on. But 2 fielders in the ring are behind square. So huge gaps on the onside. Slog. Just get 1. Now that will be interesting. Long off his back. Same field for Ahmad Alam. Nawaz is a very, very canny operator. But I don't think Ahmad is going to hold back. That's a long off. No protection on the offside other than that in the deep. There's 4 fielders coming from the edge of the rings. All the fielders inside the ring, they are starting from the edge. Wow, that was good. Quick. Rushed onto him. Ahmad really got surprised. That was quicker through the air, gripped a little in the pitch. That may cause some seeds of doubt in his mind.
High in the air, fielder may not get there, and no one will. Just goes over for a maximum. It's like the mood Ahmad is in at the moment, taking on the senior pro, Nawaz. He took the option of that slightly straighter hit with the slog sweep. He still had to fetch it from outside the off stump, but he wasn't looking to go square. Mid-on is up, a calculated risk, a percentage shot, because he didn't drag it to where the sweeper was. Oh, that's well done by Ahmad. He knew he missed it. He's cut that at the last moment. He was watching it all right because he was nowhere near that ball, and that ball turned and gripped. He just had quick hands, just saved him. Single there, 10 of the over already. Just the one. All right, 4 overs gone. It's 47 for 1. Just a quick look at what the conditions are outside. There is dampness. Yes, you can see those shiny fingers and a bit of palm. Not extreme, but let's try again. Yes, it is getting wet. Will that slide the ball on the bat? Time will tell. उमैर बिन यूसुफ को हाथ खोलने का मौका मिला है और नतीजा 4 रन्स बिलावल के पिछले महंगे ओवर के बाद, जहां पर अहमद आलम ने आड़े हाथों लिया था। उमैर बिन यूसुफ भी कामयाब। खूबसूरत शॉट। जो गलती की थी कराची ने लेंथ में और लाइंस में, वो नहीं दोहरानी रावलपिंडी को। इस तरह की लाइन लेंथ अगर यहाँ पे देंगे उमैर बिन यूसुफ, जल्दी पिक किया, बहुत टाइम मिल गया था, दूसरी बार आसानी इसको खेलने में कामयाब हुए। थोड़ा इन एंड आउट मोमेंटम मिल रहा है कराची को। 50 भी मुकम्मल हो गई है कराची की। चेस कर रहे थे बैटर को, लेकिन वाइड कर दिया इस प्रोसेस में। रूम बनाकर खेलने के लिए जाना चाहते थे। ये बड़ा फैसला किया है बिलावल भट्टी को अगले ओवर के लिए लाने का। पिछले ओवर में उनको आड़े हाथों लिया था, लेकिन एक बाउंड्री कंसीड की थी ओवर की इब्तिदा में। यहाँ पर बैकफुट पे चले गए। थोड़ा सा प्लानिंग बेहतर यहाँ पे करनी पड़ेगी उमर अमीन को, और हमें नजर आ रहे हैं इंटरैक्ट कर रहे हैं बिलावल भट्टी से। पिछला मैच भी बहुत एक्सपेंसिव रहा इनका। यहाँ पे इक्वेशन डिफरेंट है, लंबी बैटिंग लाइनअप है कराची की, इसलिए आप मोमेंटम ऑल थ्रू शुरू से कराची को नहीं दे सकते। अच्छी फॉर्म में भी है उमैर बिन यूसुफ। वंस अगेन रूम बनाया और शानदार छक्का। यादगार शाम बना दी उमैर बिन यूसुफ ने। रिस्क पूरा लिया, लेकिन पावर प्ले का फायदा और गेंद फ्लाई करती गई। 6 रन्स। महंगा ओवर, पहले चौका फिर वाइड और 6 रन्स। जब भी बैकफुट पे शॉट लगेगी आपको जिम्मेदार बॉलर को ही ठहराना पड़ेगा। बिलावल की पेस भी अच्छी है, थोड़ा सा बैक नी को कोलैप्स करके अप एंड ओवर खेलने में कामयाब हुए। बहुत फाइन था थर्ड का प्लेयर, इसलिए इसको खैर कट डाउन भी नहीं होता था ये, लेकिन जिस तरीके की लाइन रखी हुई है, अब थर्ड को अंदर बुलाया, अब शायद चेंज नजर आएगा बॉलिंग में। रूम अगर आप दे देंगे और हाथ खोलने का मौका अगर आप दे देंगे T20 में, तो भारी नुकसान होगा। और एक और मरतबा खतरनाक अंदाज से खेलने के लिए गए थे, लेकिन दूसरी जानिब काशिफ लपकते हुए आए हैं गेंद को फील्ड करने के लिए, लेकिन ऑकवर्ड पोजीशन में थे, ज़मीन बोस हो गए हैं। इस गेंद को फील्ड करने के बाद रावलपिंडी और इनफरादी तौर पर काशिफ के लिए उम्मीद करनी होगी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अपने बाएं घुटने पर लैंड किए थे। काशिफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उम्मीद करते हैं कि कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा। फील्डिंग बहुत अच्छी थी और अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड भी था उमैर का, क्योंकि जानते थे थर्ड का फील्डर अंदर आ गया, उसको गैप में निकालना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से एफर्ट नज़र आई, देखिए मैनेज करने में बॉल जो है वो डायरेक्ट जाके घुटने को लगा है। उम्मीद करते हैं कि कुछ ज़्यादा
नुकसान नहीं हुआ होगा। रावलपिंडी को ज़रूरत है काशिफ अली की, अच्छी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की है इन्होंने अच्छी पेस के साथ। काशिफ ने 2 ओवर मुकम्मल कर लिए हैं, उनको पावर प्ले के बाद के लिए शायद बचा के रखना चाहते होंगे, वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं लेकिन बेहतर पोजीशन में नहीं लग रहे हैं। बैंग जाके हिट किया था अपने लेफ्ट सिम्त में गिरते हुए और इसी घुटने के बल पे वो गए। और साथ साथ अब बॉलिंग ऑप्शंस की जानिब भी एक निगाह रखनी होगी जो रावलपिंडी के पास मौजूद हैं। ऑलरेडी नवाज ने अपने ओवर की शुरुआत कर दी है, जिनको 1 ओवर में 11 रन पड़ चुके हैं। मुबस्सिर का ऑप्शन है अगर वो ऑफ स्पिनर को आजमाना चाहते हैं, लेकिन दोनों राइट हैंडर्स के होते हुए शायद वो गेंद करने के लिए जल्द ना आए। कराची में अब तक का सबसे बेहतर क्राउड है, लेकिन कल की शाम फाइनल और तवक्को है कि खूब रंग जमेगा और हर खिलाड़ी के भरपूर अंदाज से फैंस यहाँ पर हैं, चाहे वो आजम हो या फ़खर जमान। लेकिन इस वक्त कराची के 2 यंग टैलेंटेड नौजवान बैट्समैन ने चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखा है। 22 गेंदों पर 41 की पार्टनरशिप। स्पिनर्स का बहुत अहम रोल रहेगा। जब कराची बॉलिंग कर रहा था हमने देखा था कि परचेज है, टर्न है इस विकेट में। आरिफ को भी मिला था, दानिश को मिला था, लेकिन असद ने खुद आए वहाँ पे शायद गलती की, मिस कैलकुलेट किया इक्वेशंस को और सिचुएशन को भी। लेकिन जब रावलपिंडी पे नज़र डालते हैं तो मेहरान इनके पास है, नवाज ऑलरेडी आगाज़ कर चुके, मुबस्सिर हैं, तो ये 3 ऑप्शंस बहुत ही समझदारी से रोटेट करनी पड़ेंगी उमर अमीन को और एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे ओवर्स और विकेट्स भी, क्योंकि अगर ये टर्न हासिल करने में कामयाब होते हैं विकेटें मिलेंगी इन्हें। कमाल सोच का मुजाहरा किया है दोनों नौजवान बैट्समैन ने अब तक, वो कि ये वो मौका है कि जहां पर हीरोइक्स के पीछे जाते हुए खासतौर पर अम्माद आलम जो कि कई मौके पर इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान अपने टैलेंट के ज़रिए से होने का सबूत दे चुके हैं। पाकिस्तान की अंडर 19 टीम को रिप्रेजेंट किया और वहां से लेकर आज तक इनका टैलेंट जा बजा दिखा है। लेकिन अगर इस सीज़न को, जिसकी कहने को ये आखिरी शाम हो सकती है अगर रावलपिंडी जीतता है, या कल की शाम आखिरी होगी, लेकिन मज़ीद दवाम देना चाहते हैं तो वो अपने आप को इस बात का समझेंगे कि टारगेट को चेस करने के लिए विनिंग स्ट्रोक भी लगाएं, उसके लिए इनके पास टैलेंट मौजूद है। स्लो वन, अच्छा चकमा दिया, लेकिन ये गेंद भी चौके के लिए चली जाएगी। शोमई किस्मत बिलावल भट्टी अपने इस ओवर में एक और चौके के साथ 13 के बाद चौका लगा, 17 दे गए 5 ओवर के बाद 64 पे। अच्छी बॉलिंग थी, स्लोअर वन यहाँ पे हमने देखा इफेक्टिव रहे हैं, लेकिन कीपर चौक गए। रजा इस मरतबा पिक नहीं कर पाए बाउंस, ज़्यादा मुतमईन है नहीं, लेकिन एक अच्छी डिलीवरी, इनकी जो गलतियां रही हैं उसको कवर नहीं कर सकता। थोड़ा सा क्लीन अप होना पड़ेगा ओवरऑल फील्ड में भी, बॉलिंग प्लान में भी रावलपिंडी को। आप अमाद की बात कर रहे थे, डेफिनेटली टैलेंट नज़र आया, लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब हम बात करते हैं टैलेंट की और मैच्योरिटी हमें चाहिए होती है यंग प्लेयर्स में। अगर सेमीफाइनल में आप अच्छी मैच्योर इनिंग्स खेल जाते हैं तो डेफिनेटली नजरें आप पे होती है और आप फॉरन पिक होते हैं, और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है दोनों उमैर और अमाद के पास कि यहाँ पे मैच्योर इनिंग्स खेलें, डीप लेके जाएं, और बाकी का काम जो है वो दानिश और आजम खान स्पेशली जो पावर हाउस है उनके लिए रखें। लेकिन यहाँ अभी अच्छा आगाज़ है, पावर प्ले अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं, वेल सेटल्ड है। इस दौरान मेहरान मुमताज़ आगे गेंद करने के लिए, इससे पहले नवाज ने ओवर किया। मेहरान मुमताज़ को विकेट की ज़रूरत। पार्कले में 2 स्पिनर्स अपनी बॉलिंग की शुरुआत कर चुके हैं। मेहरान ने इस टूर्नामेंट में कई मौके पर अच्छी बॉलिंग की है और वो जो लगता था कि टर्न इनकी बॉलिंग से जुदा हो चुका है वो दोबारा मिलता हुआ दिखा है। T20 क्रिकेट में 18 विकेट्स हासिल कर पाए हैं और एक यादगार डिस्प्ले चाहिए 2 नौजवान बैटर्स के खिलाफ। चल 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 चल, ओके ओके ओके। अच्छी फील्डिंग मेहरान ने खुद फील्ड की अपनी बॉल पे। तो T20 के ऑब्वियसली प्रोस्पेक्ट से आप देखें तो ये अमूमी तौर पे तेज गेंद के लिए जाने जाते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जो हैं, लेकिन अगर दस्तयाब है टर्न तो उसको यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपको अडेप्ट करना है, ना सिर्फ एज अ बैटर बट आपको एज अ बॉलर रीड करना है कि कहाँ पे किन चीज़ों से आप बैटर्स को तंग कर सकते हैं, और मेहरान के पास ये काबिलियत है टर्न करने की और परचेज भी अवेलेबल है। जोरदार अपील है, एंड स्टंप्स के सामने मौजूद पाए थे, अब तक अपील कर रहे हो और उंगली फिजा में बुलंद। मेहरान मुमताज को पावर प्ले में लाने का फैसला एंड दुरुस्त साबित हुआ।
सेट बैट्समैन को वापस भेजा है और एक मरतबा फिर रावलपिंडी सेमीफाइनल में वापस। बारहा मैंने ये बात की थी कि नवाज और मेहरान बहुत इंपॉर्टेंट की रहेंगे और मेहरान के पास ये है सलाहियत कि वो वेरी करते हैं पेस को। यहाँ पे कोई मुश्किलात नहीं है। जिस चीज़ की उम्मीद की जा रही थी उमर अमीन ने जो जिम्मेदारी इन्हें दी थी डिलीवर करने में कामयाब हुए। बिल्कुल बैक एंड क्रॉस चले गए थे, नज़र हटा ली थी, गेंद को करीब आने दिया, इसलिए कनेक्शन हासिल नहीं हुआ और थोड़ी सी सोच के बाद अंपायर ने फैसला जो है वो मेहरान के हक में दिया। माद आलम अच्छा खेल रहे थे लेकिन इनिंग्स का खात्मा हो गया इनकी। 24 रन बना के वापस 64 for 2। तजर्बेकार कप्तान है रावलपिंडी के उमर अमीन। ना सिर्फ ये कि उन्होंने आज टॉप स्कोर किया, अपनी टीम को गेम में वापस लाए, बल्कि इसके साथ साथ कई मौके पे, चाहे वो नॉर्दर्न की टीम हो, क्लब क्रिकेट, या फिर एक मौके पर तो पाकिस्तान के लिए वो क्रिकेट का मुस्तकबिल कप्तानी के हवाले से करार दिए जा रहे थे। तो ये तमाम तजर्बा उनके पास मौजूद है, किस अंदाज से बैट्समैन के खिलाफ उनको रीड करना है। अमाद आलम जो कि पेस पसंद करते हैं, वो पावर प्ले का फ़ायदा लगता है कि स्पिनर्स के खिलाफ उठाना चाहते हैं। तो अब असद शफीक आए हैं जो कप्तान रावलपिंडी के करके गए थे, उससे आधा भी कर दें तो असद शफीक कराची को पार लगा सकते हैं। 127 मैचेस का तजर्बा है, मुख्तलिफ तरह की क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं। उमर बिन यूसुफ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी में चार्ज कर सकते हैं। बड़ी इनिंग्स की ज़रूरत है, एक यादगार खेल खेलना होगा असद शफीक को। जिसी इनिंग्स उमर अमीन ने खेली थी, आके टाइम लिया था, स्ट्राइक रोटेट करते रहे और जो उनके साथी थे उनको यूटिलाइज कराया। उमर के पास पूरी सलाहियत है अटैकिंग क्रिकेट खेलने की। असद शफीक के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटेड होकर चलना ज़रूरी है। उमर को साथ लेके चलें, अभी बहुत ओवर्स बाकी हैं। अच्छा स्टार्ट मिल चुका है। खतरनाक अंदाज से खेले थे, लीडिंग एज जो कि नो मैन्स एरिया में लैंड कर गया, दिल हलक में आया होगा असद शफीक एंड कंपनी का। दिल खोल के बॉलिंग की अब तक मेहरान मुमताज़ ने 5 गेंदों में हुनर दिखा दिया, लेकिन हर गेंद के बाद उनको टावल को यूज़ करना पड़ा है स्लाइटली, जो कि इब्तिदा में इस मैच की पहले इनिंग्स में ड्यू का हिंट था, वो बढ़ता जा रहा है। मरीना अकील भाई, आपका दिल तो नहीं हलक में आया? मेरा तो कई बातों पे आ जाता है, इस वजह से मुझे आदत हो चुकी है, लेकिन कराची की बड़ी तादाद में शाखीन है। चलो एक है एक्शन पैक पावर प्ले मुकम्मल, लेकिन ये गेम यहां से किसी भी जानिब जा सकता है। 6 के बाद 66 पे 2। जिस तरह की डोमिनेशन कराची चाह रहा था, शायद अभी थोड़ा फील करें कि वैसी हासिल नहीं हुई है, क्योंकि बिट्स एंड पीसेस में रावलपिंडी ने अच्छी बॉलिंग की है, काशिफ अली बहुत ही महारत के साथ बॉलिंग की, नवाज ने भी और अच्छा आगाज़ किया, मेहरान ने। डिफरेंस ज़्यादा है, विकेट्स दोनों की बराबर थी, लेकिन रन स्कोरिंग में बहुत खामोश रखा था रावलपिंडी को कराची वाइट्स के बॉलर्स ने। और आप एक्सपेक्ट भी करते हैं, सुहेल खान धानी और अनवर अली के होते हुए आफ्ताब ने अच्छी बॉलिंग की। थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है रावलपिंडी के लिए। नवाज 11 रन दिए थे इन्होंने अपने पहले ओवर में, कंटिन्यू करेंगे। उमर बिन यूसुफ ने अब तक अच्छी इनिंग्स खेली है, उन्होंने गियर को चेंज भी किया है, एक चौका और एक छक्का लगा चुके हैं पेस के खिलाफ। उन्होंने अपने एंकर्स को ड्रॉप किए रखा है स्पिनर्स के अगेंस्ट। असद शफीक ने अभी ज्वाइन किया है। आने वाले बैट्समैन में हिटर आज़म, दानिश अजीज़, अनवर अली का आना बाकी है। आज़म इन फॉर्म है, उन्होंने हर तरह की बॉलिंग मुकाबला किया। यादगार ओवर वो सियालकोट के खिलाफ ऑलरेडी खेल के जा चुके हैं। हौसले बुलंद होने चाहिए, लेकिन रावलपिंडी को मजीद विकेट चाहिए। नवाज इस बात के अहल हैं, विकेट टू विकेट बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं। और असद शफीक अब कितनी बात करेंगे उमर बिन यूसुफ से, ये देखना पड़ेगा उनको ताज़ा दम और तैयार रखने के लिए। बहुत एक्सपीरियंस है नवाज, हर तरह की कंडीशंस में बॉलिंग कर चुके हैं, ब्रेक थ्रूज दिलवा चुके हैं। यहाँ पे आज का दिन है डिलीवर करने का। ज़्यादा शानदार सीज़न नहीं रहा इनका, ना बैट के साथ ना बॉल के साथ, लेकिन अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस दे जाते हैं अपने कप्तान के हिसाब से, रावलपिंडी को फाइनल्स में ले जाते हैं,
तो ऑब्वियसली जो सारा एक्सपीरियंस इनके पास है वो जस्टिफाई होगा। स्लिप आ गई है, टर्न मौजूद है, लाइन और लेंथ परफेक्ट होनी पड़ेगी। मरीना, यहाँ पे पहला डे नाइट मैच खेला गया था इंटरनेशनल पाकिस्तान का इंग्लैंड से मुकाबला था, जो कि उस फेमस सीरीज जो कि पाकिस्तान ने पहली मरतबा यहाँ पर मुइन खान की क़यादत में टेस्ट मैच हारा, उससे कल पहला ओडीआई था और उसमें एंडी फ्लिंटॉफ ने 300 से ज़्यादा रन चेस करने के लिए डाउन एंड आउट थी इंग्लैंड की टीम, लेकिन वो पहली मरतबा लगा था कि ड्यू क्या चीज़ होती है और अक्टूबर के महीने में जब मौसम चेंज हो रहा होता है उस वक्त उसका क्लियर एक हिंट नज़र आया था। आज देखना है कैसे काउंटर करते हैं। गेंद के बाद टॉवल्स आउट हैं जो कि आमतौर पर स्पिनर्स को ग्रिप देने के लिए और टर्न ख़त्म करने के लिए डेट्रीमेंटल साबित होती है। बिल्कुल बॉलर्स के लिए आसान नहीं है, स्पेशली स्पिनर्स और फास्ट बॉलर दोनों हो चाहे, लेकिन फील्डर्स के लिए भी ये मुश्किल है क्योंकि बॉल को गैदर करना, थ्रो करना। कैचेस में हमने देखा है अक्सर यहाँ पे जो हाई कैचेस हैं वो ड्रॉप होते नजर आए हैं। आउटफील्ड में हाई कैचिंग का स्टैंडर्ड अच्छा नहीं रहा। खुद लेना। असद शफीक का जितना टेम्परामेंट है वो बात कर सकते हैं कुछ ओवर्स को दरमियान में सुकून से गुजारने के लिए, क्योंकि अगर आप आजम या इवन दानिश और अनवर अली भी आते हैं और उनको एक ऐसा टारगेट देते हैं जिसमें 20 पे 40 भी बनाने हों तो उनके लिए ज़्यादा मसाइल नहीं होंगे, लेकिन जितना लंबा ये सफ़र होगा उतने क्वेश्चन मार्क सेमीफाइनल के इस प्रेशर वाले गेम के लिए बढ़ते चले जाएंगे। और इन ओवर्स को अगर वो सिर्फ 6 या 7 और इवन एक बाउंड्री के साथ 8 रन पर ओवर के औसत के साथ गुजारते हैं तो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये ड्यू का फैक्टर भी मज़ीद आ सकता है कराची को सपोर्ट करने के लिए। तो तमाम चीज़ें, क्योंकि क्रिकेट का गेम है, आप बेसबॉल की तरह बगैर पिच किए गेंद को डिलीवर नहीं करते हैं। इसमें इस पिच होने के बाद से हर तरह की कंडीशन, बाउंड्री की डायमेंशन, ये सब अमल में आती हैं और आज लगता है कि सब कुछ कहीं ना कहीं डिस्कस होगा। अच्छा ओवर सो फार जा रहा है, 4 रन आए हैं। अच्छा फिनिश करना पड़ेगा यहाँ पे नवाज को। उमर सामने आ चुके हैं स्ट्राइक पे। अगर सिंगल्स में डील करें और डॉट बॉल्स पे ज़्यादा फोकस करें रावलपिंडी तो प्रेशर क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जो रन रेट है वो अब रिक्वायर्ड 8.20 है। स्टार्ट जब किया था कराची ने 11 की औसत से स्कोर कर रहे थे, अब 10.2 पे आ चुका है। तो डॉट बॉल्स जो हैं वो बिट्स एंड पीसेस में एंड में जाके प्रेशर ज़रूर क्रिएट करते हैं बैटिंग साइड के लिए। अच्छी गहमा गहमी और कशाकश इस ओवर में 5 रन दिए नवाज ने। कराची 71 पे 2। टोटल ऐसा है जो फाइटिंग है और रिसोर्सेज हम पहले भी बात कर रहे थे रावलपिंडी के पास है, चाहे वो बैटिंग हो या बॉलिंग हो। अब बॉलिंग किस तरह स्टैंड अप करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, ये ज़रूरी है रावलपिंडी के लिए। मेहरान ने अच्छा आगाज़ किया, नवाज अभी तक अच्छे जा रहे हैं। मुबस्सिर को देखना होगा, उमर अमीन कब इंट्रोड्यूस करते हैं। काशिफ अली ने अच्छी बॉलिंग की और इस तरीके से आगाज़ किया। खुर्रम मंजूर आए थे और आते ही उन्होंने हल्ला बोल दिया था। काशिफ को बिल्कुल भी सेटल होने का मौका नहीं दिया, टारगेट किया था ऑन साइड को और बाउंड्रीज हासिल करते चले गए। शायद ज़्यादा लालची हो गए, थोड़ा लंबा लेके जाना चाहिए था। इस बार अपनी विकेट गवा बैठे और काशिफ अली ने फाइनली विकेट हासिल की थी। अहमद आलम बहुत ही सुपर्ब टच में लगे, अच्छा टेम्परामेंट शो करते आए, आड़े हाथों लिया था स्पिनर्स को भी, फास्ट बॉलर्स को भी और विकेट के दोनों जानिब रन बटोरते रहे। और उसके बाद मेहरान जिनकी बात हो रही थी, ये फाइनली अपना विकेट हासिल करने में कामयाब हुई है। दोनों एंड से मिलते जुलते बॉलर एक दूसरे के साथ एक्शन में हैं, इन टेंडम गेंद कर रहे हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स। नवाज जो कि बेहतरीन ओवर फेंकने में कामयाब रहे। मेहरान ने पहले ओवर में 2 रन दिए, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एक विकेट के लिए। और ये कितना प्रेशर, डॉट बॉल्स या फिर सिंगल्स उमर बिन यूसुफ के आड़े आएंगे। और साथ साथ असद शफीक जो कि अपने टेम्परामेंट के लिहाज से स्ट्रॉन्ग तो हैं, लेकिन उनको अगेंस्ट इस नेचर हर 2 ओवर में एक बाउंड्री के लिए, एक बड़े स्ट्रोक के लिए जाना पड़ेगा, जो कि इस वक्त उन्होंने अकॉर्डिंग टू द फील्ड बॉलिंग करने के साथ मुयसर नहीं रखा। सुपर कवर भी मौजूद हैं, लॉन्ग ऑफ भी, बड़ा कैप नहीं है कवर्स में। इसके साथ साथ बांध के रखने के लिए दायरे के अंदर खुद उमर अमीन है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पर, लेकिन ड्राइव लगानी पड़ेगी। सरप्राइज किया इस बाउंस ने असद शफीक को, लग रहा था कि रूम बनाकर ड्राइव करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अच्छी तेज गेंद।
फास्ट बॉल से वाला बाउंस आ गया यहाँ पे, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, शायद मेहरान खुद भी नहीं। आई थिंक सीम पे और पैच पे बॉल गिरी है, इस साइड से हमें बाउंस अक्सर देखने में नजर आया। बॉलिंग मेहरान मुमताज का गोल्ड इनाम रावलपिंडी के लिए कीमती विकेट। पिछली गेंद को लेंथ चेंज करके सरप्राइज किया असद शफीक के तजर्बे को और रावलपिंडी को टॉप पे पहुंचा दिया कराची के खिलाफ। बहुत ही नपीतुली बॉलिंग, अच्छा रीड कर रहे हैं सिचुएशन को भी, बैटर के माइंड से भी खेल रहे हैं और ये डिजर्व करते हैं। शानदार बॉल, पिछला बाउंस किया था, शायद उस चीज का इफेक्ट असद के माइंड में कहीं ना कहीं रहा होगा। रूम बना के खेलना जरूर चाह रहे थे, लेकिन देखें ये शॉट यहाँ पे इस लाइन पे नहीं खेली जा सकती थी, विद इन स्टंप, बहुत बड़ा रिस्क था और वही हुआ, मिस किया, विकेट्स को हिट किया। असद शफीक कप्तान 3 रन बना के वापस 72 for 3। लग ये रहा है कि नौजवान मेहरान मुमताज तजर्बाकार नवाज को कुछ सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 विकेट्स आप हासिल कर चुके हो तो ऐसा कर भी सकते हैं, और विकेट्स करेंसी होती है किसी भी बॉलर की। बड़े होनहार, कोहना मश्क और पूरे तमाद खिलाड़ी हैं मेहरान मुमताज, जो कि देखने से ताल्लुक रखता है। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग यूनिट बन गया है रावलपिंडी इन विकेट्स के साथ, जिसके कैंप में मौजूद हैं शादाब, जो कि इस गेम के लिए भी फिट नहीं हो सके खेलने की खातिर। इस जाल को बुना है और मुश्किल में धकेल दिया कराची को। शानदार कॉन्फिडेंस है मेहरान मुमताज का। बिल्कुल, शादाब का आपने जिक्र किया, वो चाहे मैच नहीं खेल रहे लेकिन उनकी डग आउट प्रेजेंस बहुत अहम है। दानिश अजीज, अच्छा मैच इन्होंने कल फिनिश किया था, विकेट्स भी हासिल की थी, स्कोर भी किया था, बड़े राइट टाइम पे मोमेंटम हासिल किया है, फॉर्म में वापस आए और अब डिलीवर करने का टाइम है। दिस इज द गेम। बैटिंग ऑर्डर के मुताबिक आजम आते हैं खेलने के लिए, लेकिन लगता ही है कि दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स को देखते हुए राइट और लेफ्ट के कॉम्बिनेशन को लॉन्च करने का फैसला किया है कराची की यूनिट ने। थोड़ा सा मजीद कुशन देना चाह रहे हैं आजम को, क्योंकि अभी अहेड है जो रिक्वायर्ड रन रेट है उससे कराची। स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं मेहरान, जैसे एक्सपेक्टेड था। आज पेस वेरिएशन नजर आई है इनकी बॉलिंग में, अमूमन तेज गेंद करते हैं T20 में, लेकिन आज सरफेस के हिसाब से अच्छा अडेप्ट किया हुआ है। स्लिप अभी भी मौजूद है, प्रेशर डाला हुआ है उमैर पे। एक और बेहतरीन ओवर नौजवान मेहरान मुमताज का, सिर्फ 3 रन दिए और एक और विकेट हासिल कर ली। कराची वाइट्स मुश्किलात के भंवर में 74 पे 3। अच्छी बॉलिंग सो फार, और ये एक फायदा होता है जब सीनियर मेंबर आपके साथ हों। इनका जो ट्रांसफर हो रहा है नॉलेज, आई थिंक वही आज रिफ्लेक्ट कर रहा है इन गेम में। बहुत ही अच्छी आई थिंक ये चीज़ होती है कि आपके पास एक ऐसा प्लेयर जो कि इंटरनेशनल में बहुत सतहों पे खेल चुका है, ही विल बी हैप्पी देयर। मेहरान मुमताज ऑब्वियसली उसी नॉलेज को अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मैच में। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मिट्टी पे, मिट्टी पे। In terms of the run rate, they are ahead, and they have been throughout when the innings started. 9.1 at the moment, with compared to the required 8.7. Started off with 12. Is the wickets that need to stop. Somewhere I dare, with all due respects,
That Asad Shafiq wicket at this stage is looking to be in a bit of a struggle. Might just be a blessing in disguise because Danish has been doing well with the bat, and so is Azam Khan to come. So if they need a platform, Umair needs to fire. He's been doing well. Come on, boys, come on, boys, come on, boys. This has to be a very calculated chase if Karachi wants to go anywhere with this match. The dew, Salman alongside me, will have its role. Yes, it's there. And we have seen the towels and the players trying to dry the ball, especially from where they want to grip it. But at the same time, it's also turning. And I think probably the moisture that the dew brings has also fallen on the pitch. And it has put some grip into the pitch. Oh yes, Nawaz bhai. This one has been driven down. They need not to panic. They have a great start. It's just a partnership. In the next 4 and 5 overs, get to 30-35 runs without losing a wicket, and they'll be in a much better shape than allowing Azam Khan to come in if he is required. Otherwise, Danish is also somebody who can go big. And there it is, Azam Khan. His chewing-gum never finishes. I wonder what brand it is. I don't know. Maybe it's not. It's not a chewing-gum. It's going down. A couple of runs at it. What else it could be? Danish on 4, Umair on 24. Umair has utilized 20 deliveries so far. He should carry on from here. That's a reasonable amount to get set in a T20 game. Last boundary since 25 balls, so that's a lot of balls, keeping in mind the kind of start they had. And there goes Danish, a straight 6, flat and hard. And Nawaz trying to bowl it quick. Danish dances down the track and puts it over the long on boundary for a beautiful 6. Yeah, boundary every over will keep him ahead, and they do know that. In the power play, they were almost 30 runs ahead of the opposition. So between 7 and 15, they want to keep that trend going on, and this surely will help. 5 boundaries, 5 sixes in this innings. He's got to re-bowl that one. Bowling, shabash. Very nice, boys. Nawaz needs to get through his overs without much damage. He's already conceded 28. Another wide. So I wonder what he's trying to do. One down the leg side, one way outside the off stump, and a wide in both directions. Karachi need 91. More than 11 overs to go. Chalo, no run. Oh, misfield, could be 2. Could be 2, yes. This will hurt Rawalpindi if they keep doing that. It's not the first time we've seen misfields. Overshooting the target, end of the over. 15 of it, 89 for 3. Mid-innings and Tapal tea to enjoy in the pleasant weather of Karachi. A great game going on, which will decide the finalist to play Aptabad tomorrow night. More people here today, Sikandar, and families, kids. Good to see that. Yeah, we were saying that earlier. One, it is the weekend, Saturday night. 2, the semi-final. 3, the home team. Mubassir now brought into the attack, off spin. He'll be bowling from our side, pavilion end. 89 of 66, the equation. Something tells me that they'll surely try to go after him. Spread out field on the onside.
चल चल आप ही जा ठीक है ले आओ Interesting field. If you watch, 5 men to the right-hander on the offside when an off-spinner is bowling. And this you don't see much when an off-spinner operates in a game. He usually has 5 men on the leg side bowling to a right-hander. So that meant that he will be bowling outside the off-stump. And there's very little margin for error when you adopt this fielding. Yeah, leading edge this time. Still a single on. They'll be surely searching for a boundary in the over. Somewhere in the over. Well, this fielding setup suggests that he will be bowling outside off stump. So a bit short, and it can be cut for runs because the cover fielder is a lot towards the extra cover region. And he goes for a big stroke. This one is in the air and fielder is under it and he takes it very neatly. Nasir Nawaz, the substitute, as the catcher, and Mubassir delivers on the 3rd ball of his first over. Yeah, I told you they'll be looking for a boundary somewhere in the over, and it's got to give. It can go either way. Longest part of the boundary, cow corner, and he gets out over there. In comes the big man. We'll check the front foot before he enters. And it's fine. So it's number 77 shirt, Azam Khan, the man in form in the previous 2 games, finishing the games for Karachi, and now he has this responsibility on him, being the man in form, to take Karachi home, who are at the halfway stage but have lost a couple of wickets unnecessarily when they were not required. 9 runs in the over on a field where the pitch is good and the ball is wet with dew is not a serious task. It's just that the pressure that they have to deal with. Azam Khan, 137 games, 2,700 runs, averages 24, and there is the most destructive stat, 145 the strike rate. It was a 10th over in operation, and Umair bin Yusuf taking a bad option. They just needed to score the next 30 runs among themselves without taking much risk, and things would have been much easier. See the amount of dew that there is. Every second ball, the fielders need the towel. Despaired of Danish and Azam have done it before in the past 2 games on this ground in the tournament. They had important partnerships between them, and one of them looked to finish the game off, which is why on 1 occasion Azam and 2 occasions Danish have got Player of the Match awards. Shot, timing. Well stopped there in the deep by Kashif. That was played well. It was a wonderful shot, but poor running. Should have been 2. The fast bowler ran all the way across towards extra cover, and he stopped that boundary and restricted them to only 1 run. So 94 it is for Karachi for 4 after 10. Absolutely criminal to take 1 on that. There's 1 on the run for the fielder and the other one on the throw. I think he thought that it was a boundary all the way. Well, he keeps strike. 94 for 4 halfway through. So this is the wicket. Umair bin Yusuf going for a 6 over mid-wicket. And an easy take by Nasir Nawaz.
very stable under the ball. Now it's going to be Jahdad to open his account with the ball in hand, and he in the middle will have to deliver, because this is the pair from Karachi who are in form and who've been finishing games. Azam has taken some time, and then he goes in top gear. All the innings, he just makes sure that he's got it right, gauging what's happening out there. And once his bat starts swinging and gets it in his arc, then it stays hit. He just then starts backing himself up with the kind of power he has, and then puts everything else out of the equation, the conditions, the pitch, whatever. Earlier today when we spoke with him close to the boundary and he was showing us his bat, 2 pounds 14 ounce. That is some weight to carry. Obviously the man has the power to play with it, the one in his hand now. And this is timed nicely, and in the gap will be a certain boundary, a good cricketing stroke. And Azam Khan hits his first boundary without much use of his brutal force, just timing it. Now just they need to rotate strike, 1 boundary and over. They don't require much. Yeah, just backing away a touch and guiding it past that fielder. That's a very good placement. Between the two also beats third, who was a little across. And this one will take some stopping, but the problem is that the batters are content with just running 1 wherever the ball is going. So maybe they are confident that they'll hit boundaries, but they shouldn't be doing that. They should look to run the first one quickly. But with this pair, I think we're asking for too much. It's better that they don't try anything on a misfield, because Danish is not known to be very quick running between the wickets. And then you don't want you to be out in that fashion. 1 short of 100, Karachi Whites in the 11th over. $79 more to get off 57. $100 up for Karachi Whites in the chase of 178 to win. So 78 more. Yes, they've maintained a wonderful run rate. It's just that on the other column, the 4 wickets, they are the disturbing part. And they shouldn't be losing any more from here, at least for the next 4 overs. We know that they have Anwar Ali, who can hit the long ball and is also known for playing some top knocks. But when 2 men in form are in the center, they should think that it's their job to finish. He hit it hard to backward point. Slight misfield allows them to scamper through for a single. Good first over from Jahdad, a single to end it. 11 gone, 102 for 4. Khurram Manzoor in the picture. He really started today at a rate of knots. 3 fours and a 6, all at mid-wicket, and then getting out at the same position at mid-wicket. So it's Karachi Whites in the first power play. 66 they were for 2, and then from 7, and then Rawalpindi were 31 for 2 in the first 6 overs. So it's half and half the difference of runs in the first power play, and that is where Karachi Whites
have the advantage of a good start. Now they just need to be sensible. Very crucial part of the game. Just a little more than halfway gone. And it can go either way. If they can break this partnership here, Rawalpindi, they'll feel that they've got a complete foot inside the door. Yes, it can go either way. That's the beauty of the game. And the pressure is there, obviously, being a knockout. Both sides will be conscious of the fact what strategy they follow from here on. For Karachi, it seems easier. Just create a good partnership and keep carrying along. One boundary and an over and a few singles will do the job for them. Whereas Pindi will need wickets. They cannot afford this partnership to go on for long. Flip side of it is that if these two can manage to stay up to the 15th over, surely they'll add some serious score. Because then they'll have a proper platform for the last 5, the third phase of the innings. And then rely on Anwar Ali, if required, later on to come and do what he does best. This one was a quick one fired by Mehran. And he knows Azam, the kind of player Azam is. If anything is in his zone and up, he'll go after it. Good start from Jahatad in that over. It just kept things tired, because if you, as a new bowler, give away a lot of runs, then pressure is on the next bowler. Mehran is in the middle of a top spell in a semi-final. 2.3 overs he's bowled, given away only 7 runs and taken 2 wickets so far. The young man has been impressive. One. It was a wide, but he's got a boundary, so he'll take it. He's outstretched himself to put bat on it. Well, no consistency can match the commentator's curse in this tournament. We just said that Mehran has been wonderful, and here comes a boundary. The very next ball. This one was wide and well timed by Danish. No chance for the fielder at deep point. The positive part for Karachi would be they haven't let that run rate come down below 9 at any stage. Though they've been losing wickets, but they want to stay in the chase. One. This over with 1 ball to go and now has 7. What can they get on the last ball? Azam will be on strike. Oh. Well, it's the towel time, since the balls are getting wet. Once it goes into the outfield, the dampness just wets the ball up. Last ball of the over. One. That's well bowled and well played. Good stop there once again, throwing himself around Nasir Nawaz. They just take 1. That might hurt later on. 12 gone, 1-1-0 for 4. रोशनियों के शहर में रात बाकी और सेमीफाइनल की अभी बहुत बात बाकी है। 48 गेंदों पर 68 रन दरकार हैं, लेकिन 6 विकेट्स हैं और ये बात अब क्लियर होते जा रही है कि रावलपिंडी डिफेंड शायद ना कर पाए, उसको ऑल आउट करना पड़ेगा इन 6 विकेट्स के साथ, जिसको परचेज करने के लिए उमर अमीन की कप्तानी का कड़ा इम्तहान है। आजम अभी भी आए हैं, वो अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं और एक खूबसूरत कट शॉट के जरिए से उन्होंने पहला चौका हासिल किया है।
दानिश इस बात की जिम्मेदारी निभा सकते हैं कि वो थ्रू एंड थ्रू बैटिंग के लिए जाएं, लेकिन अगर कराची कर गया तो एक यादगार चेज होगा और एक क्लोज फिनिश वाला सेमीफाइनल फैंस को मिल सकता है, जो कि अच्छी तादाद में मौजूद है नेशनल बैंक स्टेडियम में। जहां खान दूसरे ओवर के लिए आ रहे हैं, सेट हुए, खेलने के लिए गए, ऊंचा और अच्छी फील्डिंग के जरिए से नासिर नवाज कभी इधर कभी उधर, गेंद उनका पीछा कर रही है और वो भी खूब अपने आप को थ्रो कर रहे हैं पूरी एफर्ट के साथ। यकीनी चौका रोका नासिर ने। बहुत अच्छी फील्डिंग अभी पिछले ही ओवर में, कवर बाउंड्री पे उन्होंने बहुत अच्छा सेव किया, डाइव मार के और 1 रन पे रिस्ट्रिक्ट किया इस बार ये आउटसाइड एज, और कैच करने गए थे लेकिन बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करके 4 नहीं होने दिया। नासिर नवाज का होना रावलपिंडी के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गया है। गो के आज वो मौजूद नहीं है प्लेइंग 11 में, लेकिन उन्होंने अपने आप को थ्रो किया फील्ड में। दानिश अजीज का रोल मुख्तलिफ है। आजम से राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन आड़े आ रहा है रावलपिंडी के, जिसको हर बैट्समैन के साथ अपनी फील्ड को नए सिरे से तरतीब देना पड़ता है। नौजवान जहांदाद का ये एक बड़ा इम्तहान है कि वो किस अंदाज से जाएंगे दानिश के खिलाफ। अब तक ऑफ स्टंप की लाइन के साथ बरकरार रखा है, बैक ऑफ लाइन डिलीवरीज की हैं, दानिश ने भी पूरी रिस्पेक्ट दी है। और जो इर्द गिर्द इनके खिलाड़ी मौजूद हैं, नवाज, उमर अमीन, ये तमाम बड़ा एक्सपीरियंस देते हैं ऐसी कंडीशंस में डिफेंड करने का। स्कोर अब नेल्सन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। इंग्लैंड में आमतौर पे ऐसे मौकों पर अपनी जगह से नहीं हिलते। रावलपिंडी के फैन से आप पूछें तो वो तो हिल हिल के धरती हिला देंगे इस वक्त, लेकिन कराची वाले वाकई एक सख्ते के आलम में है। लाइन पे गेंद कर दी, लेकिन इस शानदार कैच को हासिल कर लिया नासिर नवाज ने। नासिर नवाज ने तमाम कैमरे और लाइट्स अपनी तरफ कर दिए। ये लाइट, कैमरा और एक्शन रावलपिंडी को एक मरतबा फिर जगा गया और सकता तारी मेजबान कराची पे। बहुत ही अच्छा कैच, बहुत ही शानदार कैच, और ये बेहतरीन मिसाल है इसकी कि किस तरह से आप फील्डिंग से अपनी टीम को जो है मैच में अंदर रख सकते हैं और जितवा भी सकते हैं। बैड बॉल थी ये, देखिए लेग स्टंप के बाहर गिरा हुआ, ठीक है, नो बॉल, फेयर डिलीवरी है, लेग स्टंप के बाहर गिरा हुआ, इजी शॉट था ये, लेकिन सीधा नासिर नवाज के हाथ में, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। बहुत ही शार्प कैच, बहुत अहम विकेट इस मरहले पे। आउट हुए हैं दानिश अजीज, नेल्सन विकेट ले आया, 111 पे पहुंच। ये ज्यूरी ओपन रहेगी कि क्या ये प्लान का हिस्सा तो नहीं थी, क्योंकि दानिश अजीज स्ट्रगल कर रहे थे बड़े शॉट के लिए। हो सकता है कि उनको ट्रैप में फंसाने के लिए ये बॉल ऑफर की गई हो, लेकिन अनवर अली जो उन्होंने काम अधूरा छोड़ा था कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कजाफी स्टेडियम में, या आर प्रेमदासा स्टेडियम में एक फेमस विक्ट्री दिलाई थी पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ, वही दोबारा दिखाना पड़ेगा। अपने रनअप पे तो ये मुख्तसर हुए हैं, लेकिन शॉट्स वैसे ही लगाने की अहलियत रखते हैं। और इनके साथ मौजूद हैं आजम, जो कि अपने कदम जमाने की कोशिश करें, एक चौका लगा रखें। और अब अगर कराची जीता तो गैर मामूली कमबैक के साथ ही मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि इक्वेशन अब स्टीप होती जा रही है। 45 पर 67 रन दरकार हैं फाइनल तक रसाई हासिल करने के लिए मेजबान कराची को। बड़ी लेगेसी है इस टीम की। अनवर अली खान उस कराची डॉल्फिन्स की टीम का ऐसा रह चुके हैं जिसने बड़ी फतुआत हासिल की थी। 200 से सिर्फ 8 मैचेस उन्होंने कम खेल रखे हैं। 50 कहने को एक है, लेकिन स्ट्राइक रेट 144 का, और कई मौके पर इन्होंने T20 क्रिकेट में चाहे कराची हो, कोयटा ग्लैडिएटर या फिर अपनी डिपार्टमेंट्स की टीम, गेम्स को फिनिश किया। आज एक मरतबा फिर ज़रूरत आन पड़ी है अनवर अली के बड़े शॉट्स की। अब टारगेट करना पड़ेगा बाउंड्रीज को। सिंगल है, आजम को भागना पड़ेगा, लेकिन अनवर अली डेंजर एंड पे भाग रहे थे। मेहरान मुमताज गेंद पर लपके रन हासिल किया। दानिश के आउट होने से और अनवर अली के आने से एक ये फ़र्क ज़रूर पड़ेगा जो अभी हमने देखा है इस बॉल पे, वो है रनिंग का फ़र्क। बहुत ही तेज़ रनर है अनवर अली, देखिए, और बहुत ही बदकिस्मती लेग स्टंप पे गिरा हुआ बॉल फ्लिक किया। काफ़ी तेज़ शॉट था, लेकिन बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्स कैच। अहम इनिंग खेल रहे थे मुसलसल, दूसरी रात में वो गेम फिनिश कर सकते थे कराची के लिए।
क्या तलाश करने की कोशिश की आजम ने, एक मरतबा फिर स्क्वायर पर कवर की जाने, खतरनाक अंदाज से गेंद गई, अंपायर को देखना पड़ेगा, लेकिन ये क्या कर दिया वहां पर फील्ड करते करते। किसी सूरत ये चौका नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो घड़ों पानी पड़ेगा रावलपिंडी। दोबारा देखेंगे अंपायर, देखना पड़ेगा कि क्या उसको चेक करने के लिए जाएंगे। यासिर ने अपने आप को मुश्किल में डाला था, और लगता है कि गेंद चौके के लिए चली गई है। बॉडी स्कर्टिंग डिस्टर्ब हो गई है, गो के चौका एक है, लेकिन मोमेंटम को दोबारा धकेल सकता है कराची की जानिब। यासिर अमूमन अच्छे फील्डर माने जाते हैं, लेकिन प्रेशर सिचुएशंस में और थोड़ी सी ड्यू के साथ गलती कर ही गए, और बहुत ही अहम मरहला है ये इस वक्त। कोई भी टीम जरा सी जहां चूकेगी तो दूसरी टीम को एडवांटेज मिल जाएगा और मुश्किलात बढ़ जाएंगी। बैक एंड क्रॉस गए थे खेलने के लिए, लेकिन उसी एंगल के साथ गेंद निकली, शानदार बाउंस, कामयाब ओवर जहांदाद का मुकम्मल। 116 पे 5 कराची। लाइव वायर बने हुए हैं फील्ड में नासिर नवाज, गए के आए हैं एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे, लेकिन गेंद उनका पीछा कर रही है और वो भी खूब अंदाज से यस कह रहे हैं। ये हाई कैच था, इससे पहले ऐसे कैचेस छूटे हैं कराची से, लेकिन उन्होंने फिंगर्स अप रखे, ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में कैच किया, और उसके बाद उन्होंने इंश्योर किया कि मुश्किल चौकों को रोकें, अपने आप को थ्रो किया, और उसके बाद एक और कैच जो सब्स्टिट्यूट बने हैं नासिर, उसका हक अदा कर दिया, अपने होने का सबूत दिया है अपनी टीम रावलपिंडी के लिए। वेल डन सो फार। लेकिन अब देखना यह है कि 42 पे 62 कराची डॉल्फिन की टीम थी, जो वो शानदार लेगेसी, कभी शाहिद आफरीदी और कभी दीगर खिलाड़ी जिसके लिए अमर आप भी इब्तदाई दिनों में खेल पाए हैं, अब किस अंदाज से लिव अप कर पाएगी इन एक्सपेक्टेशंस पे, क्योंकि दबाव उन पे है। रावलपिंडी मैसिव कमबैक कर चुकी है इस टूर्नामेंट में भी और इस गेम में भी, तो वो जो प्रेशर का सामना करना पड़ता है एक्सपेक्टेशंस का, वो भी इन पर लग देगा, और होम ग्राउंड का भी एक दबाव। एक है आओ जरा करने दे दो, जरा इधर मारो। यस, बहुत तेजी से पहला रन मुकम्मल किया था ये अनवर अली ने, लेकिन आजम खान ने उनको इशारा किया कि एक ही रन बनेगा, और आजम खान जब तक विकेट पे मौजूद हैं कुछ भी हो सकता है। बहुत ही इम्पैक्ट करने वाले प्लेयर हैं और कुछ भी तवक्को इनसे की जा सकती है। किसी भी रन रेट को अचीव ये कर सकते हैं, कोई भी टारगेट अचीव करने की सलाहियत रखते हैं। अनवर अली को देखना होगा कि उनका रोल क्या होगा, किस वक्त वो अटैक पे जाएंगे। खूबसूरत गेंद, लेकिन खराब किस्मत मेहरान मुमताज के लिए। एक और मरतबा ऐसा हुआ कि गेंद ना सिर्फ ये कि विकेट कीपर कलेक्ट ना कर पाए, बल्कि आम चौके के लिए भी रवाना। मुस्कुराहट लौट आई आजम के चेहरे पे। बदकिस्मती मेहरान मुमताज के आखिरी ओवर में। आउट करना है मेरी, आउट करना है, शाबाश। पिच्ड अप बॉल था, लेकिन कीपर की गलती। 4 रन हासिल किए, बिल्कुल खुश नहीं है बॉलर, और जाहिर है होना भी नहीं चाहिए। एक अच्छी बॉल उन्होंने की और उस पर भी 4 रन हासिल कर लिए कराची ने। एफोर्ड कर सकते हैं इन 4 रन के मिलने के बाद कि वो बड़े शॉट को अभी अवॉइड करें, गेम को डीप लेकर जाएंगे तो ड्यू का फैक्टर बढ़ता जा रहा है। और क्रिकेट को कहते हैं कि ग्रेट लेवलर है, और आज हमने ये देखा कि एक ख़राब गेंद थी, उस पर विकेट हासिल कर ली। दूसरे एंड से जब गेंद कर रहे थे जहांदाद खान, और इस एंड से एक अच्छी गेंद पर चौका कंसीड हो गया। जीशान की जगह फील्डिंग करने के लिए आए नासिर। इससे पहले जीशान से एक मरतबा चूक हुई थी और उसको अच्छे अंदाज से कवर किया सब्स्टिट्यूट नासिर नवाज ने। आखिरी ओवर है कामयाब बॉलर मेहरान का, और रिस्पेक्ट दे सकते हैं। उसके बाद अपने मोमेंट्स को पिक करेंगे। बिलावल भट्टी महंगे रहे हैं, काशिफ अली अच्छी गेंद करते करते वो भी महंगे हो गए हैं। 2 में 30 दिए हैं काशिफ ने। मेहरान ने बहुत अच्छा स्पेल किया है, काफी परेशान करके रखा है। स्पिन भी थोड़ी सी शुरू में बॉल इन्होंने की थी, से डबल माइंड में आ जाता है बैट्समैन। और अब इनके ओवर खत्म होने के बाद देखना होगा कि पिंडी है किस तरह की हिकमत अमली
तैयार करेगा। और नवाज के ओवर मेरे ख्याल से बाकी हैं अभी, बहुत अहम ओवर होंगे नवाज के इस मरहले पे। जी हाँ, 6 गेंदें बाकी हैं, लेकिन मेहरान मुमताज़ की उस दौरान ये आखिरी गेंद है जो कि कराची को सोच समझ के गुजारनी पड़ेगी। इसके बाद उनके पास अपने ऑप्शंस मौजूद होंगे। नौजवान मेहरान का एक यादगार स्पेल मुकम्मल, लेकिन गेम अब तक अलाइव है कराची में। कराची वाइट्स 124 पे 5। तो हमर ये सवाल मैंने पिछली इनिंग्स में पूछा था शाह फैसल से, लेकिन अगर अब आप कप्तान होते तो बड़ा क्रूशल मौका है जहां पर गेम दाएं या बाएं किसी भी जानिब जा सकता है, तो कौन सा बॉलर बेहतरीन हो सकता है? नासिर के फील्डिंग तो हमने देखी है, मोहम्मद नवाज का एक ओवर बाकी है, इसके साथ साथ काशिफ बिलावल दोनों के 2-2। काशिफ ने पहला स्पेल कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया अपना, बिलावल के पास तजुर्बा मौजूद है, लेकिन फिर भी नवाज का एक ओवर बाकी है, बहुत अहम ओवर है। और मेरा ख्याल से कराची जो है उस ओवर के बाद ही कुछ सोचेगा कि किसको अटैक करना है किसको नहीं। ये मीटिंग तलब कर ली है उमर अमीन ने, एक्सपीरियंस कैंपेनर हैं नवाज, वो उनके साथ मौजूद हैं। बज़ाहिर इस वक्त तक लगता है कि वो गेंद करने के लिए आएंगे, और उनके साथ साथ मेहरान इस बात का तजर्बा उनको बता सकते हैं कि अगर उनको रोक के रखा और ड्यू फैक्टर बढ़ता गया, क्योंकि क्लोज गेम एडिट 10-15 मिनट ले लेते हैं फिनिश होने के लिए, तो वो भी अपना इम्पैक्ट दिखा सकता है। दूसरी जानिब बेताब है लगता है जहांदाद गेंद करने के लिए वापस, लेकिन एक ओवर दोबारा लाइव कर सकता है। और लग ही रहा है कि नवाज ने गेंद करने का फैसला किया है या उमर अमीन ने उनको गेंद दी है। 3 ओवर में 31 रन, मेक और ब्रेक मोमेंट इस गेम में हो सकता है। जहांदाद इस एंड से गेंद कर रहे थे जहां पर उन्होंने 2 ओवर में 14 रन दिए थे। नवाज जो कि गेंद को स्पिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस वेट होती हुई गेंद के साथ जिसमें हर गुजरते हुए लम्हे में हर डिलीवरी के बाद अब टॉवल्स आउट हैं, वो क्या क्रिएट कर पाएंगे? जबकि लोकल बॉय हैं आजम, इस अंदाज की कंडीशंस में उन्होंने कई मैचेस खेल रखे हैं, चाहे क्लब क्रिकेट हो या फिर अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स, फ्रेंचाइज क्रिकेट हो या कराची। 36 बॉलों पे अब 54 रन रह गए हैं, हर बॉल अहम होती जा रही है और ड्यू का फैक्टर भी अब आ गया है, तो मेरा ख्याल से स्पिनर को भी थोड़ी सी ग्रिप करने में मुश्किल होगी बॉल, और बॉल स्किड भी करेगा। अब जो हमने शुरू में देखा था कि बॉल स्पिनर का थोड़ा सा फंस रहा था, लेकिन अब इस ड्यू के साथ मेरा ख्याल से बॉल स्किड करेगा, बैट्समैन को हेल्प करेगा। आजम ने स्पिनर के खिलाफ अपनी बैटिंग एबिलिटी का पूरा सबूत दिया था, बिलाल आसिफ के खिलाफ छक्के लॉन्च करके आज की रात अब तक खामोश हैं और डीप ले जाना चाहते हैं इस गेम को। 2 चौके लगाए आजम ने, अनवर अली अब तक खामोश हैं, वो अब तक सिर्फ सिंगल्स पर अलाइ करें, 4 पे 3 बना चुके हैं। बहुत सोच विचार के बाद नवाज को ये ओवर दिया गया है, ये सोच के कि इस वक्त विकेट ली जाए या रन्स रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन बहुत ही मेरा ख्याल से अहम और अच्छा फैसला है कि नवाज को विकेट लेने के लिए ही जाहिर है ये लाए हैं। इस वक्त स्पिनर को हिट लगाना थोड़ा सा मुश्किल है फास्ट बॉलर के मुकाबले में। अनवर अली भी पेस को पसंद करते हैं अपने बैट पे। और दूसरी जानिब एक्सपीरियंस अनवर अली भी हैं और आजम भी अब स्प्रिंग चिकन नहीं है, वो भी इस दश की स्याही में 5 साल से ज़्यादा का वक्त गुजार चुके हैं, और उससे अलावा जो क्लब क्रिकेट आपको स्ट्रीट स्मार्टनेस सिखाती है वो भी इसके अंदाज और एतबार से अपने आप को हमंग कर चुके हैं। तो वो भी यही चाहेंगे कि कम से कम नवाज के इस ओवर को खामोशी से गुजारें और उसके बाद अपने चांसेस को ग्रैब करें। ऑफ स्पिनर मुबस्सिर के ओवर हो सकता है कि अगर स्पिनर से करवाना चाहते हैं तो उसके बाद बाकी आगे आएँ। 4 बॉल ओवर्स मजमूई तौर पर काशिफ और बिलावल भट्टी कर सकते हैं। जहांदाद ने भी अच्छी बॉलिंग की है, अच्छा बाउंस जनरेट किया है। टॉप क्वालिटी क्रिकेट इस सेमीफाइनल में तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। आखिरी लम्हा तक लाइव रहने के लिए आपको याद कराते चलेंगे कल यहीं पे इस नेशनल T20 का फिनाले खेला जाएगा, जिसके साथ ये रीजन्स के दरमियान का डोमेस्टिक सीजन अपने अख्तिताम को पहुंचेगा। एबटाबाद की टीम ने ख्वाब जी लिया है, आधा ख्वाब उनका कल बाकी होगा, देखना है कि कौन मुकाबला करेगा। नवाज बहुत अच्छी समझदारी से बॉल कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, पेस उन्होंने कम कर दी है बॉल की ताकि आजम को खुद हिट लगानी पड़े।
में खेले थे कुछ लम्हात के लिए। एक मरतबा फिर दिल हलक में आया होगा कराची के फैंस और शायद आजम का भी, लेकिन बॉलर से वाइड खेलने में कामयाब रहे। अब तक 4 गेंदें नवाज के इस आखिरी इंपॉर्टेंट ओवर की और 3 रन। मेरे ख्याल से बेहतर हिकमत अमली यही होगी कि नवाज का ओवर जो है वो खामोशी से गुजार दिया जाए, अनलेस वो कोई बहुत ही ऐसी बॉल ना कर दे जिसपे हिट लगानी आसान हो, शॉट बनाने की कोशिश ना की जाए अभी। पूरी रिस्पेक्ट दी है नवाज को, इनके ही टीममेट रहे हैं, चाहे कोयटा ग्लैडिएटर हो या फिर इनका क्रिकेट क्लब, जहां पर आकर नवाज ने बहुत क्रिकेट खेली है कराची में। वो जो करने के लिए जाएंगे वो इससे अपने आप को आशिकार नजर आते थे और इसी वजह से लगता ही है कि उन्होंने इस बात का फैसला किया है कि जाने दिया जाए और उसके साथ दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर्स अपने ओवर्स को मुकम्मल कर लेंगे। नवाज की आखिरी गेंद, आखिरी ओवर 3 रन दिए, लेकिन कराची उनको विकेट दिए बगैर गुजारने में कामयाब रहा। ओवर मुकम्मल, कोटा भी खत्म, लेकिन गेम अभी ऑन। 127 पे 5 कराची। बहुत ही अच्छा ओवर नवाज का, न सिर्फ उन्होंने पेस जो है बॉल पे से कम की बल्कि विथ बिल्कुल भी नहीं दी। दोनों बैट्समैन जो हैं वो बड़ी हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनको विथ बिल्कुल भी नहीं दी है उन्होंने। बहुत टाइट बॉलिंग, बहुत टाइट लाइन, इसी की ज़रूरत थी रावलपिंडी को और मायूस नहीं किया उनको उनके सबसे तजुर्बेकार बॉलर ने। और अब ये फैसला करने का मोमेंट आन पहुंचा है कि दूसरे एंड पे भी वो देखने के लिए जाएं कि कौन आएगा, और बज़ाहिर लग रहा है कि बिलावल भट्टी गेंद करने के लिए आ रहे हैं, जिन्होंने 2 ओवर में 19 रन दिए। पहले ओवर में एक बड़ा हिट लगाया और उसके बाद भी उनको आड़े हाथों लेने की कोशिश की। ये बाउंस भी ऑफर करते हैं और पेस भी, जो कि वो अपने हक में मोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत जगह मौजूद है इस सैटरडे नाइट रोशनियों के शहर कराची, जहां पर एक तरफ इन फ्लड लाइट्स ने, दूसरी तरफ हम सबको जगा के रखा हुआ है टपाल टी ने। बिलावल भट्टी जो कि लंबे रनअप के साथ गेंद करने के लिए आएंगे, इंटरेस्टिंग होगा। सामने उनके मौजूद हैं आजम, जो कि अपने बैट पे पेस को पसंद करते हैं, शॉर्ट डिलीवरी उनके पसंद की हामिल है। और अब ऑन साइड पर फील्डर तो मौजूद हैं, लेकिन वो लाइन देखनी पड़ेगी कि जिसके साथ वो गेंद करने के लिए जाएंगे। 7 से 15 ओवर का फेज अब गुजार चुके हैं और इसमें पीछे रावलपिंडी इस वक्त अपने आप को गेम में वापस लेकर आया था। ये वो वक्त था जब उमर अमीन ने कदम जमा लिए थे और अपने अटैक को अनलीश कर रहे थे। कराची वाइट्स ने इस प्रोसेस में विकेट्स भी गंवाई हैं और उस प्रोसेस में वो 61 रन बना पाए हैं, लेकिन इनको अब 49 रन दरकार हैं, जो कि ऑलमोस्ट इवन स्टीवंस हैं जितने रावलपिंडी ने इन आखिरी ओवर्स में बनाए थे। गेम ऑन, रात बाकी और कराची के लिए बात भी बाकी, लेकिन 5 विकेट्स हासिल करनी जरूरी। शॉर्ट थर्ड मैन इन प्लेस पॉइंट के साथ, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पे गैप ऑफर किया है। हवा में खेल दिया है, फील्डर अपने बाएं जानिब जा रहे हैं आजम की शॉट को कैच करने की खातिर, लेकिन गेंद रवाना। तलातुम बर्पा कर दिया आजम ने अपने पहले छक्के के साथ और जाग गया क्राउड कराची में। ये वो चीज है जो आजम कर सकते हैं बॉलर्स के साथ। पेस उनको पसंद है, बॉल पे थोड़ी सी पेस हुई, देखिए एंगल, सिर्फ जरा सा बैट को एंगल किया और पॉइंट के ऊपर से विथ मिल जाए उनको तो छोड़ते नहीं है बॉल को। हिटमैन आजम जो कि क्राउड के फेवरेट भी हैं, चेक जरूर कीजिए, लेकिन गेंद क्लियरली फ्लाई करती करती बाउंड्री के पार जाकर गिरी है, लेकिन अंपायर सेफ्टी फर्स्ट के तकाजों के तहत हर चीज़ को चेक करना चाहते हैं, एक नहीं 2 दफ़ा, और ये दूसरी मरतबा जख्मों पे नमकपाशी करेगा रावलपिंडी के। लेकिन बिलावल का ये अहम ओवर है जिसकी इब्तिदा छक्के के साथ हो चुकी है। बिलावल जिस अंदाज से गेंद करेंगे उस पर आजम के टेम्परामेंट का अच्छा इम्तिहान। फिर ऊंचा खेलने के लिए गए और बैकेंड एरिया का भी इंतखाब किया है। फुल पावर पूरा मौजूद है, गेंद जाती चली गई, बैक टू बैक छक्के, 5 सा पलट दिया 2 छक्कों ने कराची की खातिर। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट। शॉर्ट बॉल उसको ऊपर से खेला पॉइंट के और इस बार तैयार थे कि बॉल आगे आएगी, क्योंकि जाहिर है पिछली बॉल पे 6 हासिल कर चुके थे, ये पिच्ड अप बॉल थी और सिर्फ उसको टाइम किया। शेप देखिए आप बॉडी की और हेड पोजीशन बहुत ही जबरदस्त।
ज़्यादा ज़ोर से खेलने की कोशिश नहीं की क्योंकि मिड ऑफ ऊपर था, टाइम किया और 6 रन मजीद। कराची के सबसे पुरदमाद शख्स लग रहे हैं इस वक्त 2.5 करोड़ की आबादी में हिटमैन आजम। 2 गेंदों पर 2 छक्के हासिल कर लिए हैं। मैसिव कमबैक करना है पिंडी को, लेकिन एक मरतबा फिर उठाकर खेलने के लिए गए हैं। वहां पर मौजूद हैं फील्डर जिन्होंने अपने दान जानिब जाकर काशिफ अली ने हासिल किया। 1 रन का इजाफा हुआ। अनवर अली अब सुकून सांस ले सकते हैं इस एक्शन पैक ओवर की इब्तिदा के बाद। 13 रन बना लिए ऑलरेडी आजम ने। अमूमन ऐसे मरहले पे जो है वो चेंज ऑफ पेस और मुख्तलिफ लेंथ ट्राई करता है बॉलर। ऐसा ही बिलावल ने भी करने की कोशिश की, लेकिन उनकी लाइन दुरुस्त नहीं थी। पहली बॉल पे जब आपको 6 रन पड़ जाएं तो खुद ब खुद प्रेशर बॉलर के ऊपर आ जाता है। एक मरतबा फिर स्लो बाउंसर किया है, लेकिन फील्डर इम्प्रेस हैं। कप्तान की सूरत में खुद उनको अबूर करने में कामयाब नहीं हो सके। अगर घी सीधी उंगली से निकल रहा है तो टेढ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। अनवर अली जो कि इस तरह की कई कंडीशंस में इस ग्राउंड पे या फिर कहीं भी वो बड़ी इनिंग्स खेल चुके हैं, लेकिन अब दूसरे एंड पे उनको सहूलत मौजूद है आज़म की, और वो जो ये काम अब से 5 साल पहले खुद किया करते थे, आज़म उस काम को कर सकते हैं और वो थ्रू आउट द इनिंग्स खेलने की कोशिश कर सकते हैं। फिर स्मार्ट वर्क किया है दोनों ने, अच्छी कोशिश है और सिंगल हासिल करेंगे, बल्कि दूसरे के लिए भी पलटना चाहते थे, वहां पर तैयार थे हासिल करने के लिए। मेहरान कोई चांस नहीं दिया। थर्ड मैन और पॉइंट, थर्ड मैन खास तौर पे जो है सर्कल के अंदर है। थोड़ी सी स्लो जरूर कर रहे हैं ये ऑस्टम के बाद, लेकिन काफी विद दे रहे हैं। खतरनाक है ये बात। पिछली 2 बॉलों पे मेरा ख्याल से अनवर जो है वो डिसअपॉइंटेड हो गए कि मिस आउट किया उन्होंने इस गैप को। आजम ने एक मरतबा फिर उठा दिया है। गेंद के पीछे पड़े हैं फील्डर, लेकिन उनके सर के ऊपर से जाते चली गई। हिटमैन आजम सबसे पुरदमाद कराची में, और 5 पलट दिया इस ओवर में। 20 रन दे दिए बिलावल ने। कराची वापस, रावलपिंडी डाउन 147 पे 5। एक बार फिर आखिरी बॉल पे फिर आगे करने की कोशिश की बॉल, लेकिन उसके लिए तैयार थे आजम, और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खूबसूरत शॉट। 6 रन मजीद। Azam Khan, he's making some impact. This is what he can do. He can take his time early on, but he will make you suffer. 38 of 22 deliveries, took Bilawal Bhatti literally apart and has put Karachi right on track. Bad line, bad length. I don't know where Bilawal has been playing cricket, but if you know Azam Khan, you wouldn't be bowling on those lines. Pace up, easy pickings for him. But that is some innings of impact. Jandad, he'll has to do some damage control. Things were looking decent for Pindi, and I've got Pindi boy with me. Shah Faisal, where is this match going? Down the track, Anwar Ali this time lifts it, effortless, sailing over for another 6. 2 of the best finishers around that you could have, and Karachi's lucky to have them both. Anwar Ali gets a piece of action now. 150 has been brought up and brought the crowd to their feet. This is absolutely thrilling cricket. First it was Azam, and now Anwar Ali. This is absolutely magnificent. The footwork, the follow through, the connection, and the result. Don't forget the catch. Shorter, dragging it down. They've got protection there. Well, if you're someone who's watching this match in front of your TV screens, you've missed the opportunity. 2 big games. Peshawar was unsettled by Abbottabad, and now Karachi is enjoying its time in the middle. The game is on. 24 required of 22. How well has Azam played? How well has he calculated this innings? Khurram Manzoor
Probably having a Tapalti moment. He had his moment earlier when he started the innings and blasted 18 of the first over. Oh, swing and a miss. They're asking for it. Maybe an ambitious appeal. He was trying to go inside out. The gap was definitely there. Yeah, that was a Rizwan-like appeal from Razaul Hassan. Nobody appealed. He just threw the ball up in the air, as Rizwan does so often. He was actually there to be hit. It's a rare occasion that Azam misses a shot. There's a huge gap. That third and backward point are behind square. So Azam, if he had just enough bat on it, he could have found that boundary coming into the picture. Those two fielders, he had them all, both for the taking. Chance of Azam. Oh, another swing and a miss. Jahandad, that was expected of him. He got hit for a maximum, the first delivery by Anwar Ali, but he's done brilliantly. Just trying to do something different for Rawalpindi, trying to keep Azam quiet. Just across the line, that's again is a rare sighting, because normally he hits so well through the line. Looking at the options that Rawalpindi has, spin has really been difficult to get away. The only spinning option they have is Mubassir, but they would not want to bowl off spinner to Azam. He took Bilal Asif apart the other night. Oh, taken! That's a big wicket, huge wicket. Rewards for Jahandad for bowling the right length, and it's a big wicket. Azam Khan is the man you want back in the dugout if you're a Rawalpindi fan. And look at the Rawalpindi players. They're running from all corners. They know the importance of this wicket. And crowds have really was looking forward to Azam masterclass. He batted beautifully, but he won't be able to see his team through, because now he's been dismissed by Azam. That Jahandad could not afford to make a foot fault on that one. It was huge. Excellent take from Razaul Hassan. Jahandad celebrates. Azam walks back. Another impactful innings from the big man. 35 of just 25. Played beautifully. 154 for 6 Karachi. That was a pragmatic innings, but couldn't really finish things off. Now the things get trickier. They need 24 of 19. Rawalpindi fighting their spirit out in the middle. Sohail Khan, he can use a long handle with Anwar Ali. Early on, you could hear the crowd chanting Azam's name, and the moment he got out, some of them left, and there's pin drop silence now. The magic that the man creates, Azam Khan, but Sohail Khan is a character. He's an artist with the ball in hand, but he likes to have fun with the bat in hand. Never a dull moment when this man is in action, whether with bat or ball. Jahandad, he did well. Needs to finish well as oh, almost got Sohail Khan. Well, the drama is not finished yet. What a game we're having. What a day of T20 cricket we saw today here at the National Bank Stadium. And this is the moment that gave Pindi the hope. But that's not that one. That was the one after Sohail Khan, almost giving Pindi another success. And that is the moment that really gave Pindi the hope that I was talking about. Look at Razaul Hassan. He was moving to his left, recovered quickly. Azam Khan's catch is a pressure catch, and he did it well. Kashif Ali has got 2 more to go. I don't think Bilal will be returning. Nawaz all done. Mubassir just bowled 1. Jahandad has got 1 as well. Kashif Ali was decent with the newer ball.
They need to have clarity in plans. You have to be right on money. You cannot afford any mix-ups here. Third man and find both up in the ring. Hitting the hard length. It's never easy. Need to keep an eye on Anwar Ali because he is the man who loves to finish the game. Yeah, after Azam's dismissal, definitely Anwar Ali is a key man. And like I said, Karachi is fortunate to have him in the middle. Because, like Marina said, he's done it many times wherever he's played. He would need some support there from Sohail and the rest of the batters. Yeah, I think that's the discussion between Anwar and Sohail, probably asking him to just rotate strike. But we all know Sohail Khan, if it's in his zone, he will go after him. All right, protection towards the leg side mostly. He picked it up. He's got some wood on it. And it will travel all the way. Sohail Khan, he wants some fun of it. Really deflating result for Rawalpindi off the top edge. One leg was up in the ring, and Kashif, if you were going to try that length, you didn't need mid-on and mid-off back on the fence. Probably trying to surprise Sohail, but that big swing of his was enough to take that top edge. Kashif is paced, has done the rest. You need to understand the situation. Sohail Khan tailenders, they always will go for that flashy blade. This is not the length to bowl. Yorkers, slow ones. This time picked up nicely, but it will be safe. Just single taken. That's a good decision. Brings Anwar back on strike. I don't think there will be much of a problem. 16 now required of 15 deliveries. Jahandad, rather Kashif, has to come up with something special. Wickets is what Pindi need. 2.5 overs. A boundary really was not required. Umar Amin, the skipper, Mehran, who bowled beautifully. Pindi looking down the barrel once again, looking for some inspiration. Can Kashif be that man? Deep in the crease. Good delivery. They're pushing hard. Oh, brilliant effort. Once again, Nasir Nawaz. He's been on top of his mark as far as the fielding is concerned. Saved many runs for Rawalpindi tonight. Wow, this is superb. This is sensational effort in the field from Nasir Nawaz. Anwar probably didn't quite middle it, but that outfield is very fast. It went to that pocket towards cow corner, and look at that. 10 out of 10, young man. Brilliant cricket all round. That's what you want from your fielders. Umar Amin will be happy. They need to put the extra yards in. This time, it's clean. It's high and it's sailing away. That's what Anwar Ali can do. You miss and he's going after you. That is Anwar Ali's area. In the slot and over the cow corner. Anwar Ali has deposited Kashif. This is a magnificent strike, but you'd have to say that it was right in the slot, and bang, Anwar Ali. The sound of the bat was a clear signal that it was landing way over. Yeah, missed Yorker on this occasion. You have to be very accurate against this guy. Slow one this time. Drags it, but it doesn't matter. It's going, it's run away for another boundary. Things are looking very slim for Rawalpindi. Well, Anwar Ali has sealed the deal with 2 telling blows. This one was a slow delivery, but he once again went for that favorite cow corner. Absolutely raised across the outfield. No chance for the sweeper. And 174 for 6 after 18. Game done. Yeah, he prefers that area in front of square.
Umar Amin should have known better. You need to cut those angles. The field placement could have been a little better. But you can't blame, because Anwar Ali has got immense talent when it comes to absorbing the pressure and delivering at the very right time. Just a hit away now, and Sohail Khan is on strike. Jahandad, can he keep him quiet for few deliveries or not? Rawalpindi need a hat-trick. That's very ambitious, Shafis. Nothing else will save him. Oh no, he's not going to hang back. He's done the job in style. Pitched up, and he went after it in winning the game for Karachi Whites. They have qualified for the finals, and this guy, he started brilliantly with the new ball, and he ended things with the bat as well. How fitting is that? He's an absolute character. He loves the big moments, and here he is hitting the winning runs in front of a very good home crowd. Cheered loudly for their Karachi side, and Sohail Khan, arms aloft, was all in celebration. This camp and dugout is really happy because they pulled off a wonderful win. Spare a thought for Rawalpindi, who put up a good total but were not able to defend it on the night. The bowling came short again. Yeah, phenomenal effort by Rawalpindi. First in the batting, but have a look at that. Again, it was in the slot for Sohail. Wasn't much of an effort to be put. Went through the line, and he is loving it out in the middle, finishing things off. Smiles all over Karachi Whites. Congratulations, you're just one ticket away from that trophy. Anwar Ali, a really good hand. Good all-round performance from Rawalpindi as well. They did their best in terms of batting. Umar Amin took the responsibility. Bowlers, yes, you might question that at times the momentum did went off. Pakistan's domestic cricket at its very best tonight. We saw two thrilling semi-finals, big run chases, and some entertainment for crowds here and our viewers at home. Anwar Ali also played a very, very good knock towards the end. The experience and calm head was needed at the time when Azam got dismissed. But he saw his team over the line with some help from Sohail Khan. Mohammad Nawaz and the Rawalpindi team, they will think long and hard what they can come up with next season. But this team, the bunch in blue, they will be gearing up for that big final tomorrow. Yeah, everything falling, all the pieces falling in the right places for Karachi Whites, and they're up against Abbottabad in the finals. But they have a clinical will tonight. They've got the bowling lineup that is very lethal. It's never easy to score off them. They can celebrate, they can have their selfie moment, and the guy in front, Sohail Khan, he loves to have the You attention. cannot keep him out. He jumped in front of everyone. He loves those big moments, and they deserve all the success and the smiles on their faces. Deservingly, Karachi are the winners. Congratulations. The job is not done though. One big push to come tomorrow. Here's the batting card. Khurram Manzoor started off with a blitz. 24 from Ahmad and 25 from Umair. They couldn't kick on. Danish played a handy knock, kept Azam Khan company, but Azam Khan was immense once again in the middle. Anwar Ali's finishing touches, and Sohail Khan with the winning hit saw Karachi home with 11 deliveries to spare. Rawalpindi, not much went bad for them. Kashif and Nawaz. Mehran, I think that was a very clinical spell. Picked up 2 wickets, 2 for Jandad as well. 1 each for Kashif and Mubassar. Probably the missing link, the weak link was Bilawal Bhatti, and that 1 over that turned the games. We've got the man of the moment, Anwar Ali with Mehak. Let's go down. What a thriller of a match we experienced here. We really didn't know who was going to take the win until the very end, but it is Karachi who has come out on top and made it to the finals. And right now with me, I've got the man that made his team cross the finishing line, Anwar Ali. इतने roller coaster match के बाद और इस तरह जीतने के बाद obviously बहुत ही emotions जो आप और आपकी team के वो बहुत high होंगे इस वक्त.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि इतनी अच्छी इनिंग हुई और इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि मैंने मैच को फिनिश किया और हमारी टीम को विक्ट्री मिली और अगेन हम कल इंशाल्लाह फाइनल खेलेंगे। तो उस वक्त काफ़ी प्रेशर मोमेंट में थे आप, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया और उस वक्त आपकी क्या सोच थी? सोच बिल्कुल सिंपल था क्योंकि अपने ऊपर बिलीव था। पास में भी इस तरह की मैच मैंने फिनिश किए हैं, तो अपने आप पे ट्रस्ट था और मैं टिल अपने आप से यही बात कर रहा था कि मैं अगर आखिरी ओवर तक जाऊंगा तो मैं मैच को इंशाल्लाह 1 ओवर पहले फिनिश कर लूँगा। वो ऑब्वियसली कल फाइनल है, लेकिन इतनी अच्छी जीत के बाद आप लोग किस तरह सेलिब्रेट करेंगे टीम के साथ? नहीं, बिल्कुल एक अच्छे नोट पे मैच फिनिश हुआ और कल फाइनल डे है और फाइनल मैच तो है ज़रूर, लेकिन एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर हम उसको नॉर्मल मैच खेलेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि गलतियां कम से कम करें। Well, thank you so much for speaking to us. Congratulations one more time and very well batted today. Thank you so much. All the best. Thank you. Yeah, it was all just muscle memory for Anwar Ali, but that's how the chase started on. Khurram Manzoor attacking from the first delivery. He got some boundaries, kept on attacking and pushing Rawalpindi back on the back foot, but this time he mistimed it and an easy catch in the deep was taken. Runs kept coming when Ahmad Alam took the challenge on. He went aerial, he slogged it, everything in his zone went over the boundaries. He definitely set the momentum right, but Mehran had other ideas. He was trapped in front of the stumps. Some brain freeze for Asad Shafiq, I think, but again, Danish, that was very important innings from him. Umair bin Yusuf had a start, couldn't capitalize, but this man, Azam Khan, when he came in company of Danish, they had a little partnership. Danish went, but look at how controlled aggression Azam showed. This is probably one of the best shots that he's played. He was taken down by Jahandad. But at that time, Sohail Khan entered, the action man, just hit a couple of lusty blows, and that was the winning moment that sealed the deal for Karachi. They'll have to do it in less than 24 hours against Abbottabad when they come back for the final, but at the moment, they can celebrate. Karachi Whites, they have qualified for the final, and this is how the things unraveled. Rawalpindi posted a decent total 177. Umar Amin, phenomenal innings of 82. Nawaz at 35 handy and 32 for Zishan, but Sohail and Dhani picked up 2 each, 1 for Danish. In reply, Azam Khan 38, Anwar Ali's finishing 25 was the difference. Mehran and Jandar with 2, Mubassir with 1, and Karachi Whites won with 4 wickets to reach the final. We'll take a break here, but don't go anywhere because post-match presentation is on the other side.
Hello and welcome to the post-match presentation of the second semi-final, and what a game it was. Karachi Whites, the home team, winning this one by 4 wickets, leaving Rawalpindi behind, and a great game. It went up and down, it wasn't one-sided, and it was an exciting match to watch with so much support here at the National Bank Stadium. Now, before we give away awards, I'd like to welcome our presentation party, starting with, to my left, former Pakistan international Raw Iftikhar Anjum, and he's here. He's also Consultant Selection Committee, Pakistan Cricket Board. Next to him, Mr. Tariq Afridi, Director Overseas AH Group. Thank you for joining us, gentlemen. I'll request Mr. Tariq Afridi to please present the AH Group Outstanding Performance of the Match. Cash award of 25,000 to Rawalpindi's captain Umar Amin for his great knock of 82 of 47 balls. With his knock, his side scored 97 for the loss of 1 in the mid-over 7 to 15. 9 boundaries, and he had 3 sixes. Helped the side to get to 177. Now I'll request Mr. Rao Iftikhar Anjum to please present the Jazz Player of the Match trophy and cash award of 25,000. And that goes to the winning side's batter Azam Khan for 38 of 25. 2 boundaries and 3 sixes. Had a slowish start and then he really exploded. 38-25 गेंदों पे 2 चौके 3 छक्के, making him the Jazz Player of the Match and winning this award. We'll have a quick word with Azam. Azam 2 in 2, शानदार performance रही. थोड़ा सा बताएं किस situation पे जब अंदर गए थे, you took your time first. I think सिकंदर भाई मैं पहले भी ऐसी situations में खेल चुका हूँ. Even if you see in the PSL ऐसी situations वहाँ पे भी आई थी. तो I think जितना मैं काम रह रहा था अंदर, unfortunately couldn't finish the game, but कोशिश कर रहा था कि finishing की तरफ जाऊँ. Do you disregard the occasion? Semi-final hai. You know that if you get out early, पीछे से power hitting में थोड़ा सा miss out होगा. Does that add as a pressure or you disregard it? I think हमारी टीम काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ कि मैंने हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में कहा है, I believe that I have that key factor that I can change the game at any moment. तो मैं हमेशा उस चीज़ पे believe करता हूँ. और आज भी जो जाहिर सी बात है, जिस ओवर में मैंने चार्ज किया तो उसमें 3 छक्के आए, वो एक तरफ से एक साइड पे ही हो गया गेम. वो पूछने ही वाला था मैं कि you were holding yourself back against the spin because कहा जाता है you're good against spin, but you waited for the fast bowler to come. I think fast bowlers पे लोग कहते हैं कि मेरा गेम अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको और बेहतरी की तरफ लेके जाऊँ. और स्पिनर्स पे आपको पता है मैं दुनिया भर में खेल रहा हूँ और मेरा स्ट्राइक रेट भी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से टॉप 3 में आता है दुनिया के. तो कोशिश यही की थी कि सिंगल डबल लेता रहूँ, जितना गेम को चलाएंगे उतना फ़ायदा होगा, उतनी एंड में सिचुएशन का पता चल जाएगा कि क्या एवरेज है, किस हिसाब से आपको खेलना है. चलिए, one more game to hold a bigger trophy tomorrow. Inshallah, thank you so much. Okay, enjoy yourself. That was a good knock from Azam Khan, player of the match. I'll request Umar Amin to please come and talk to us, the captain of Rawalpindi. He thought that was also part of the trophy. Umar, 177 is a good score over here. आपने पहले बैटिंग करने का सोचा और होल्ड बैक भी किया आप लोगों ने. पहले मैं इस पे आता हूँ, पहले तो आप अपने खुद की बैटिंग की परफॉर्मेंस और टीम की 36 पावर प्ले में 97 ओवर नंबर 7 to 15 में. That was a great pick. Well, I think बिल्कुल उनके बॉलर्स को क्रेडिट के पावर प्ले में उन्होंने बॉलिंग काफ़ी अच्छी की. उसके बाद फिर हमारा कमबैक बहुत अच्छा था और हाफ वे पे जब 177 हम लोगों ने किया, 178 का टारगेट दिया, तो हम लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि हम लोग डिफेंड कर सकते हैं. बट अगेन आज़म ने जिस तरह आके 5 ओवर्स में 52 चाहिए था, जो एक ओवर उसने बहुत अच्छी बैटिंग की और मैच को वन साइडेड कर दिया. Do you believe कि वो टर्निंग पॉइंट था गेम का and you were holding them on 15 ओवर के लिए? बिल्कुल. आई थिंक उस वक्त तक गेम काफ़ी हमारे कंट्रोल में थी. थोड़ा सा ड्यू का फैक्टर था जो इससे पहले हमारे मैचेस में इतनी ज़्यादा ड्यू मैंने नहीं देखी थी, लेकिन आज कुछ ड्यू बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो बॉलर्स को उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी. लेकिन फिर भी आई थिंक 15 ओवर्स तक हमने बहुत अच्छा उनको होल्ड बैक किया हुआ था. ओवरऑल एज कप्तान आपने टेक ओवर की रेंज कैसा देखा इस टूर्नामेंट को अपने लिए एज अ टीम एंड इंडिविजुअली? आई थिंक थोड़ा सा स्केजुअल में थोड़ी सी बेहतरी हो सकती थी, क्योंकि बैक टू बैक बहुत ज़्यादा मैचेस. अब हम लोगों ने 8 मैचेस खेले हैं इन 9 डेज़, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है फॉर अ प्लेयर. और उसके अलावा आई थिंक स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट सुपर 8 में आके बहुत अच्छा था. और ओवरऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट PCB और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स थे, ज़बरदस्त टूर्नामेंट करवाया.
Finally, as a captain, do you see, because a fair mix of youngsters in the side, कोई ऐसे आपको नजर आए हैं in terms of talent you feel will go? आई थिंक जानदाद खान ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमारी टीम में स्पेशली, और उसके साथ साथ मेहरान मुमताज़ ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है, तो आई थिंक दीज टू आर द वंस टू लुक आउट फॉर. Well, Shandar performance रही Rawalpindi की throughout the tournament. Thank you for entertaining us. Hard luck today, but lots of cricket ahead of you. Thank you very much. All right, that was Umar Amin, the captain of Rawalpindi. Now, the winning captain, Asad Shafiq from Karachi Whites, will walk here and have a word with us. Asad, शानदार परफॉर्मेंस रही. इंपॉर्टेंट पार्ट शायद ये रहा कि ये गेम वन साइडेड नहीं था और आपकी टीम ने नर्व होल्ड करा. जी बिल्कुल, देखें जिस तरह से विकेट खेल रहा था फर्स्ट इनिंग में ड्यू पड़ना शुरू हो गई थी, तो हमें ये आइडिया था कि बॉलिंग करना इतना आसान नहीं होगा. ऑल्दो हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी हमने उससे 15-20 रन ऊपर करा दिए थे, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया ड्यू पड़ रहा था, बॉलिंग करना आसान नहीं था, तो हम काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कि अगर इस गेम को डीप लेके जाते हैं थोड़ा, तो हमारे पास ऐसे प्लेयर हैं जो अच्छा फिनिश कर सकते हैं. हाफ वे थ्रू जब इनिंग खत्म हुई है, आपने खुद ही बोला थोड़े ज्यादा शायद रन दे दिए. 178 का टारगेट. एज अ कैप्टन आप क्या सोच रहे थे, ये कितना परसेंटेज चांस दे रहे थे अपने आप को एज अ टीम? देखें जिस तरह से मैंने आपको बोला ड्यू का फैक्टर था, तो स्पिनर्स का बॉल करना इतना आसान नहीं था, लेकिन जब 170 का टारगेट मिला और फिर जिस तरह खुरम भाई ने स्टार्ट किया पहला ओवर, तो वो एक पॉजिटिविटी जो है वो टीम ने कैरी की कि यार हमने मैच के पीछे जाना है, ठीक है अगर आउट हो भी जाते हैं लेकिन हमने पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है. खुरम तो लग रहा था 178 पावर प्ले में ही बनाना चाह रहे हैं. ये स्ट्रेटजी थी कि जाके इतना अटैक कर दें कि रन रेट जो है वो आगे निकल जाए. जी जी बिल्कुल, ये माइंड में था. खुरम भाई ने बात भी की थी कि यार मैं जो है वो चांस लूँगा, ऑल आउट जाऊँगा, अगर एक अच्छा ओवर लगता है तो बैकफुट पे वो लोग जाएंगे, उससे एज अ टीम फ़ायदा होगा. कल ही फाइनल है, क्या की फैक्टर्स आप देख रहे हैं अब? क्या आप कहते हैं कि हमारी टीम अब बैलेंस्ड हो गई है, बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी, बैटिंग डिपार्टमेंट में, किस चीज़ को ज़्यादा आप रिलाई कर रहे हैं? देखें थ्रू आउट हमारे स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की. आज जो है वो ड्यू की वजह से इस तरह से बॉल नहीं कर पाए, लेकिन अगर एज अ बैटिंग ग्रुप देखें, बॉलिंग ग्रुप देखें, फील्डिंग में हमसे लैप्सेस हो रहे हैं, तो फील्डिंग पे कोशिश करेंगे कि कल आके जो है थोड़ा और जो है वो जान से फील्डिंग की जाए, और बैटिंग ऑर्डर और बैटिंग बॉलिंग दोनों में बड़ा अच्छा चल रहा है. चलिए, शानदार परफॉर्मेंस सेमीफाइनल में, आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं. एक और मैच है, and let's see what happens. Thank you. Asad Shafiq, the captain of Karachi Whites, winning this match by 4 runs and taking the team into the final, and they will meet Abbottabad tomorrow.
Well, what a night of entertainment we've had here today. Two cracking semi-finals. This one, Karachi pipping out Rawalpindi. That magnificent run chase that was led by Azam Khan. Pindi posted a formidable total thanks to Umar Amin's brilliant knock. But Karachi, after that blitz from Khurram Manzoor, Ahmad Alam, Azam Khan, Anwar Ali, they all contributed. And in the end, got there quite comfortably. Well, this is how it will shape up for tomorrow's final. Earlier, we saw Peshawar getting knocked out by Abbottabad and Karachi Whites taking care of Rawalpindi. And the big final is coming your way tomorrow. बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट आज हमें देखने को मिली. दोनों सेमीफाइनल बड़े रन हुए और बड़े रन चेजेस हुए. और जिस तरह के T20 क्रिकेट का मज़ा आता है उस तरह आया. अच्छी विकेट थी, अच्छी क्रिकेटिंग विकेट थी जिस पर अच्छा पेस और बाउंस देखने को मिला. और कराची की टीम ने ये मैच जीता और वो फाइनल में पहुंचे. आपको इंट्रोड्यूस कराते चलें. खुशकिस्मती से हमारे साथ मौजूद हैं अहमद आलम. और अहमद, आपने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की. सबसे पहले तो आपको मुबारक हो आज का सेमीफाइनल जीतने पर. खैर मुबारक. और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं. और जिस तरह का हमारा एक मोमेंटम बना हुआ है, जिस तरह से टीम जेल हुई हुई है, बहुत मज़ा आ रहा है खेलने में, अच्छा लग रहा है. और आप एज एन ओपनर इस टूर्नामेंट में आपने एक्सेल किया है. आपने जो आपका स्ट्रोक प्ले है, जो फ्री फ्लोइंग अंदाज है खेलने का, हमने आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी देखा है खेलते हुए. मैंने तो खैर आपको 2 बड़ी सेंचुरियां बनाते देखा है. लेकिन T20 में क्या चेंज लेकर आया अपने गेम में इस फॉर्मेट के लिए? मेरे ख्याल से इस चीज़ का मैं जो क्रेडिट दूंगा मैनेजमेंट और सीनियर प्लेयर्स को दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत बैक किया है, बहुत सपोर्ट किया है. और उन्होंने मुझे हमेशा यही बोला है कि अपना गेम खेलो और उसको एग्जीक्यूट करो. और अगर आपकी जर्नी के बारे में पूछा जाए, ज़ाहिर है आप थ्रू द रैंक्स आए हैं, कुछ अपनी इनिशियल जर्नी के बारे में बताइए. मेरी जर्नी थोड़ी सी अप एंड डाउन रही है, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये मुझे पूरा सीज़न मिला है थ्रू आउट खेलने के लिए. तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है और बहुत अच्छा मैंने परफॉर्म करने की कोशिश की है. इसको मैं और कोशिश करूँगा कि और बेहतर करूँ. और आपको चांसेस हमने देखा है फर्स्ट क्लास में भी इन पैचेस मिले हैं. आप अराउंड हैं काफ़ी अरसे से, लेकिन आपके मैचेस उतने ज़्यादा नहीं हैं. उसकी क्या वजह हुई? मेरे ख्याल से कि जब आप थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, सीनियर प्लेयर्स जब आते हैं तो आपको बैठना पड़ता है या टीम से ड्रॉप होना पड़ता है, तो यही वजह हो सकती है और कोई वजह नहीं हो सकती. और अब यहाँ से जिस तरह आपका एक्सपोजर हुआ है इस टूर्नामेंट में, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा T20 टूर्नामेंट है, आगे अपने करियर को कैसे फ्लरिश होता हुआ देख रहे हैं? मेरे ख्याल से जिस तरह से मैंने ये टूर्नामेंट खेला है, मुझे और थोड़ा सा बेहतर करना चाहिए था. लेकिन यही है कि मैं और बेहतरी की तरफ जाऊँगा और अच्छा करने की कोशिश करूँगा. और कुछ बताइए अपने आइडियल्स के बारे में. बैटिंग किसको देखकर शुरू की, किससे इंस्पायर हुए, किसको पसंद करते हैं? मैं सचिन तेंदुलकर को देखता था तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे. अब विराट कोहली मेरे आइडियल है. मैं उनको बहुत एंजॉय करता हूँ बैटिंग करते हुए. और पसंदीदा शॉट बताइए. आप, हमने हर तरफ आपको खेलते हुए देखा है. फेवरेट शॉट? फेवरेट शॉट मेरा सामने फ्लिक शॉट है. फ्लिक शॉट. आप एक्स्ट्रा कवर भी अच्छा मारते हैं, सामने जो लिफ्ट करते हैं वो भी अच्छा खेलते हैं. तो यहाँ अब कल बड़ा फाइनल है और इस फाइनल को कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि मैचेस बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, ज़्यादा सोचने समझने का वक्त नहीं. मैच के बाद मैच है, तो कल की क्या तैयारी है? मेरे ख्याल से इसी तरह हम खेलेंगे. और जिस तरह हमारी टीम जेल हुई हुई है, जिस तरह सीनियर प्लेयर्स लेके चल रहे हैं सबको, तो ये बहुत अच्छा साइन है हमारे लिए. इतनी अच्छी सराउंडिंग में हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम लोग सीख भी बहुत अच्छा रहे और इम्प्रूव भी कर रहे हैं. और आपने अपने जिन फेवरेट प्लेयर्स का नाम लिया वो बहुत कंसिस्टेंट हैं और गेम के बारे में उनकी जो एक फिलॉसफी है वो भी बड़ी ज़बरदस्त है. तो क्या आप उसको भी फॉलो करते हैं या सिर्फ उनकी बैटिंग को ही फॉलो करते हैं? फिलहाल तो अभी सिर्फ बैटिंग को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि उनकी मैं बैटिंग देखूँ, उनका लाइफस्टाइल देखूँ, तो मैं बहुत सीखता हूँ उस चीज़ से. चले अहमद, आप बहुत अच्छा खेलें और शुक्रिया आप हमारे साथ रहे इतनी देर तक. ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो. थैंक यू सर. थैंक यू. There you have it, ladies and gentlemen. This was Ahmad Alam, and just the one big final clash coming tomorrow. We all looking forward to it. It should be an absolute cracker. Home side Karachi will be taking on the underdogs Abbottabad. Both the teams have terrific match winners, and the action will be very, very good tomorrow, and that is for sure. Just about time to wrap up things from National Bank Stadium for tonight. We had a fabulous day. I hope you had as well, and we look forward to your company tomorrow. Have a good night. Oh, wow. That is right from the middle of the bat. Short ball, top edge. This is a chance. You got to take it.
got to take it, and yes. That's a shot. Straight over the bowler, and go fetch it. अपील है, ऐसे अब तक अपील कर रहे हो और उंगली फिजा में बुलंद. Once again, रूम बनाया और शानदार छक्का. बोले. And he goes for a big stroke. This one is in the air and fielder is under it and he takes it very neatly. आजम ने एक मरतबा फिर उठा दिया है. गेंद के पीछे पड़े हैं फील्डर, लेकिन उनके सर के ऊपर से जाते चले गए. Oh no, he's not going to hang back. He's done the job in style. Pitched up and he went after it in winning the game for Karachi White.